सकते हैं वो पॉइंट्स उन्हें मिले हैं। लेफ्ट कॉर्नर से सोलो टैकल और उसके बाद वो 7 की मांग कर रहे थे, मुझे लगा थोड़ा जल्दी टैकल के लिए चले गए राधिका। Very defeated attack that was from the defense. You know, not very calculative at all. Chola Veerans in the defense. और राधिका जो नॉन स्टॉप युवा है, मुझे लगता है कि चोला वीरंस का डिफेंस लगातार अटैक करने जा रहा है, तो वो उनका नॉन स्टॉप डिफेंस यहाँ पर है, बट हम चाहेंगे उसे अपने पक्ष में समाप्त करे। यहाँ पर 4-7 का स्कोर है, बहुत कम हमें एम्प्टी रेड्स नजर आ रहे हैं, लगातार दोनों टीमों का डिफेंस अटैक करने जा रहा है। मधु कवीरप्पा ने आज पहली रेड में 2 पॉइंट अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए थे। फिर से एज लेफ्ट रेडर तैयार हैं प्रवीण आयना, वहां पर राइट कॉर्नर पर होंगे, वंजीनाथन जो है लेफ्ट कॉर्नर पर होंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों डिफेंस का और बहुत बढ़िया टर्न किया, शार्प टर्न, पॉज लिया, प्रवीण पर टच किया, मांग कर रहे हैं मधु कवीरप्पा 1 पॉइंट की राधिका। This is a proper reading of the game and the opponent defense. Brilliant execution of turn and touch here from the captain Madhu Kavirappa. Look at that, how does he go, and yeah, look at the swift turn and the touch on the right corner. Very smart. या उनके राइट हैंड पर जाकर टच हुआ था और मधु कवीरप्पा बहुत ही स्लाइटली उन्होंने वो टच किया, अच्छी स्विफ्टनेस वहां पर दिखाई। अब अरुण कुमार एक बार पुनः लगातार रेड की यहाँ पर जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। अब क्या सुकेश इस बार तैयार रहेंगे उनके विरुद्ध एंकल होल्ड करने के लिए? कैसे यहाँ पर राइट कॉर्नर वहां पर तेजी के साथ उन पर टूटना चाहेगा सुकेश और नरसिम्हा की जोड़ी, क्या कमाल कर पाएगी? अरुण कुमार राधिका ये ऐसे डिसेप्टिव रेडर हैं जो ज्यादा बॉकलाइन के आगे नहीं जाते हैं, सिर्फ बॉकलाइन के आसपास अपना फुटवर्क दिखाते हैं, डिफेंडर्स को कोशिश कराते हैं। But that's true. If the defense is smart enough, they would not even come forward. Yes, sir. You know, that's what the Hampi heroes have done. बट ये क्या है राधिका, क्या इस बार डिफेंस पूरी तरह से विम्ड हो गया था या फिर ये डैश कार्य आया है? जी नहीं, शशांक सेफ क्या घोषित हो रहे हैं, अभी भी लॉबी की कंटेंशन में उन्हें रुकने के लिए रोका गया है। बट यहाँ देखते हैं क्या एक सुपर रेड हो सकती है या फिर मधु कवीरप्पा को यहाँ से डैश कर दिया गया था। माफ कीजिएगा शशांक। In the first instance, it looked like a dash. Yeah, he completely went out of the court. But then I think 2 other defenders went along with him. Harshit, 2 of them. तो ये चोला वीरंस के अतिरिक्त पॉइंट जब विपक्षियों को देते हैं, बहुत ज्यादा नंबर है उसमें, और यहाँ पर भी लगता है राधिका 2-1 हो सकता है। हम्पी के पक्ष में 2 पॉइंट जा सकते हैं और चोला वीरंस के पक्ष में 1 पॉइंट जा सकता है। नहीं, बिल्कुल यही निर्णय है, अक्षय देसाई का यही कहना है राधिका। हम्पी हीरोज Exactly, that's the verdict, a clear one. And they just take 1 point, but then look at the dash coming in. They could not hold their feet onto the lobbies. तो मोहनदास और वंजीनाथन दोनों ही यहाँ पर बाहर चले जाएंगे और हम्पी को मिले 2 अंक, चोला को मिला महज 1 अंक, वो भी डिफेंस का। शशांक भी पिछली बार रेड पर थे, इस बार वहां पर आपको सुजीत नजर आएंगे। सुजीत एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्हें अपनी टीम में सुधाकर कहा जाता है राधिका, यानी कि अगर आप जब वहां पर कंपैरिजन की तरफ देखती हैं तो जरूर इन्हें बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। और ऐसे हैंड टचेस, एक और बार बहुत अच्छा हैंड टच किया लेफ्ट कॉर्नर पर और शिकार बनाया इस बार सुकेश को। Yeah, I mean he has lovely extension of the leap between the legs is too good. That's where the reach is happening on the left corner for him. And Gagan Gowda, the second best raider and the first one to reach the 100 raid points for this summer edition. And I'm sure Navin might be enjoying it. या बिल्कुल, और आज राधिका उनकी तरफ से शाम को पार्टी भी है। गगन गौड़ा ने सबसे पहले 100 रेड पॉइंट प्राप्त किए इसी खुशी में। आप भी ज्यादा दूर नहीं तो आप भी छुड़िएगा। I wanted Navin to have a picture with Gagan Gowda because Navin says he is 6'3". So if Gagan is 6'3", I just wanted to have a picture. जी यहाँ देखते हैं उनकी पिक्चर से पहले यहाँ पिक्चर परफेक्ट डिफेंस जरूर आया है। किसने शुरुआत की, आइए उस पर निगाहें डालते हैं। चोला वीरंस को डिफेंस में अंक मुश्किल मिल रहे हैं और हम्पी हीरोज का डिफेंस मुश्किलात चोला वीरंस के रेडर के लिए यहाँ पर बना रहा है। ये देखिए अच्छा अटैक था, अरुण ने बचाया अपने आप को, बट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का बहुत अच्छा साथ। Lovely coordination and the follow through action as well. நல்லா லாங் அட்டன் வரதா லைட்டா ஒதுங்கி பாரு. நீ உனக்கும் சொல்ல. நல்லா நான் சொல்றதுல நீ வந்து பவரா அடிப்பா. உனக்கு சொல்ற லெஃப்ட்ல திரும்ப லாங் அட்டம்டா அதிகமா போவாத. ஆனா அன்பொசிஷன்ல இருப்பான். நான் சொல்றேன் பாரு, நீ அடிக்க கூடாது. ஏய் நீ எடுத்தாதான் வேற அவன் லேசியா ஒரு அடி பண்ணி காட்டும், அதை பாத்துக்க. சொல்றது உனக்கு ये जरूर समझ आया राधिका की कोच
मुरुगन गौतम को लगातार बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर गौतम शायद अपने साथी खिलाड़ी के साथ थोड़ा ज्यादा बिजी थे। यहाँ अटैक आया है, देखते हैं कि क्या बात है। राधिका जस्ट रिटेंशियस परफॉर्मेंस, 5 पॉइंटर रेड, ये नाम है गगन जो मचा देता है विपक्षी के डिफेंस में कोहराम। अद्भुत रेड। He swept out the entire team. Look at that. You know, he finds the brilliant gap, just confuses the defense and escapes with a 5-pointer raid. क्या बात है, अतुलनीय, अद्वितीय, अनमैचेबल रेड यहाँ पर नजर आई थी गगन की। अक्सर जब कोई खिलाड़ी ऐसे गैप निकालने की कोशिश करती है, किसी न किसी खिलाड़ी के आसपास वहां पर पहुंच जाते हैं, बट ऑल आउट होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत रही है सुजीत के लिए। 2 पॉइंट और अर्जित करेंगे वहां पर। रेड में फिर भी पॉइंट्स मिल रहे हैं चोला वीरंस को। राधिका डिफेंस पूरी तरह से परेशान है। The block came in right on time, but then, you know, the place where it happened, that wasn't right. So that gave an angle and space for the raider to escape by a lobby. अच्छा टर्न था और अच्छा वहां पर लॉबी का इस्तेमाल किया उन्होंने। और राधिका बहुत सारे साथियों के लिए, आइए हम एक और बार, मैंने हालांकि बहुत बार आपसे वो प्रश्न पूछा है, शशांक ने इस बार क्या रेड पॉइंट क्लेम किया है, वंजीनाथन को शिकार बनाएंगे। जैसे नंबर 99 आउट। रेडर, लेफ्ट रेडर का जो टर्न होता है वो किस तरफ होना चाहिए? For the escape route, it's generally, you know, if a left raider turn left, right raider turn right. That is where you would not have any other second layer of defense behind you. Oh, but इस बार यहाँ एडवांस टैकल, सुकेश उस तरह से प्रदर्शन अपना नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रदर्शन की आप उनसे उम्मीद करते हैं। पैक होल्ड करने गए चोला वीरंस के 2 खिलाड़ी, सुकेश और साथ में मधु वीरप्पा भी सपोर्ट के लिए आए थे और राइट कॉर्नर पर थे वहां पर मधु वीरप्पा। तो जो राइट कॉर्नर की पोजीशन है राधिका, उसी के चलते सुजीत जो है उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राइट कॉर्नर की जो पोजीशन है तेजा नायक ने शुरुआत की थी, नरसिम्हा वहां पर लगातार खेले हैं, कृष्ण कुमार वहां पर थे, तेजा नायक वहां पर थे, तो कोई भी सेटल नहीं हो पाया है राइट कॉर्नर पर। Yeah, Gagan Gowda, he's normally known for his bonus skills as well, but then this time around he goes for a kick executed on the left in position. You know, where does he execute the kick? From the back line, so that's the reach. क्या अद्भुत किक थी और बहुत अंदर थे इस हिसाब से वो, जिस तरह से उन्होंने जो अपने लंबे पैरों को स्ट्रेच करके आसानी से वहां पर लेफ्ट एंड की पोजीशन पर किक लगा दी। तारीफ करना पड़ेगा यहाँ पर। पहले ये स्टार्टल करते हैं, डरा देते हैं राइट फ्लैंक को कि आप उन पे अटैक करने न जाएं, और उसके बाद लेफ्ट फ्लैंक से भी पॉइंट लाते हैं, राइट फ्लैंक से भी पॉइंट लाते हैं। तो राधिका बहुत ही यहाँ पर उनका अनकैनी परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि लगातार उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को अच्छा किया है। शुरुआत में अगर आप इनके 1-2 मैच देखें और उसके बाद से ये मैच देखें, तो इन्होंने दिमाग से बहुत अच्छा खेला है, स्मार्ट खेला है, कैलकुलेटिव खेला है, और इसीलिए इनकी स्ट्राइक रेट में हल्की सी गिरावट भी आई है। Absolutely, and this is 1 point. Hampi, these number mistakes 99 are out. unacceptable from Chola Veerans. You know, the day they started for this edition, you know, we thought they are defensive strong team. They have been defensively strong, but then the coordination failed. You know, nothing was going right against the Chola Veerans, and it's almost 7 losses in a row. Is it the highest so far, Harshit? राधिका चोला वीरंस के लिए सबसे ज्यादा बिल्कुल है वहां पर, क्योंकि चोला वीरंस कभी इतनी हार लगातार एक साथ देखी नहीं है, और हाईएस्ट अभी लातूर पिछले केएमपी वाईकेएस में सबसे ज्यादा हार के साथ वहां नजर आए थे। काजीरंगा राइनोज उस पर हैं, पर यहाँ पर एक अच्छा हैंड टच आया रेडर्स। अभी भी हम कह रहे हैं कि कोई भी चिंताजनक विषय चोला वीरंस के रेडर्स के लिए नहीं है। मुरुगन गौतम राधिका डिफेंस में पहले ही मैच में उन्होंने 8 अंक प्राप्त किए थे। लगा था कि क्या ये डिफेंस में एम गौतम का सीजन होने वाला है। Exactly, you know, it looked like the same. You know, Gautam is going to rule the defensive match. But then, you know, what went wrong, I don't know. That's a second super raid for Hampi Heroes, and is it a Gagan Gowda? And what a brilliant escape that was. Unimaginable errors यहाँ पर हो रहे हैं डिफेंस। ಹೊಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವರೇ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ। ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈಚೆ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈಚೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೋಡೋಣ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಚು। ಯಾಕೇಳು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಖತ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು।
They want to win with more than 30 points, is it? Yeah, exactly. You know, he says just give away the bonus if required, but do not go for advanced tackles. And he also mentions it's a one-sided game. 1 point Chola Veerans. जी बिल्कुल, वहाँ पर एक वन साइड गेम की उम्मीदें हम्पी हीरोज के कोच वहाँ पर लगाकर बैठे हैं, बट इसीलिए थोड़ी सी चिंता है कि लकीरें वहाँ पर उनके चेहरे पर नजर आई। एक अच्छा टो टच करने का पहले प्रयास किया, उसके पास बोनस करने गए, डाइव के लिए जाएं न जाएं नरसिम्हा मूर्ति इसमें थोड़े से कंफ्यूजन में थे, और जब गए तब तक ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चले थे सुजीत अपने होम कोर्ट में। 12-22 पॉइंट की लीड है मुर्गन गौतम और चोला वीरन से। आप डिफेंस की अच्छी उम्मीदें करते हैं, बट उनका डिफेंस राधिका 1 point Hampi Heroes, जर्सी नंबर 99 लग out. रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये डिफेंस हमने कभी पहले देखा ही नहीं चोला वीरन्स के लिए। You know, the team is not playing as a unit. You know, there is some disturbance in the team. That's what we felt throughout. और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो अभी ये सबसे अच्छा मौका है कि आप समय पर अपने डिफेंस को एज अ यूनिट कर लें। और अब जो 16 टैकल्स है ना राधिका, चोला वीरन्स को 16 टैकल्स की नहीं जाना होगा, और ये बात मैं बता सकता हूँ राधिका कि अगर 1-2 टैकल पॉइंट अच्छे आ जाएं, कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो उसके बाद चोला वीरन्स का डिफेंस वापसी करा सकता है इस मैच में उनकी टीम को। Yeah, especially no solo tackles because you have the tallest raiders on the mat. So such a tall raiders and a solo tackle, and who has initiated? सुजीत इनकी पोजीशन पर मौजूद थे और उन्हें रेडर के तौर पर इतने अंक मिल रहे थे, तो उन्हें और किसी की आवश्यकता नहीं थी। राधिका, इसलिए एक बड़ा फेमस वहां पर प्रोवर्ब है ना कि ट्रेड ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन अक्सर कभी हो जाता है। तो आप पहले रेड में जिसमें अच्छा कर रहे हैं उसमें अच्छा कीजिए सुजीत। उस ड्राइव की आपको आवश्यकता नहीं थी। उससे क्या हुआ है, अरुण पर अब प्रेशर आ जाएगा, और अरुण सिर्फ बॉकलाइन के आसपास खेलते हैं, वो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। राइट कवर पर अटैक करनी चाहिए सुहास पर, अरुण एम्प्टी रेड के साथ वापस। Yeah, this is again a super tackle opportunity for Chola Veerans. You know, we have seen a lot of super tackles for Chola Veerans before this season, but then this time around, I think the raider has escaped, or one of the defenders has anti-crossed. रेडर ने जरूर यहाँ पर लॉबी का साथ लेते हुए शायद मिडलाइन को पार किया था, इसका निर्णय अभी भी आना शेष है। चोला वीरन्स कह रहे थे कि हम रिव्यू की मांग करेंगे अगर आप इस तरह हमारे क्रम से विरुद्ध जाएंगे, बट राधिका क्या ये डैश था, हवा में थे पूरी तरह से, क्या ये डैश उतना इफेक्टिव हो पाया है? 2 points Hampi Heroes, जर्सी नंबर 16 and 19 out. रिव्यू चाहेगा चोला वीरन्स। नंबर 19 इंटरेस्टिंग हो सकता है। इन दी एयर अगर उन्होंने वो डैश किया, और चलिए एक और चीज, Chola Veerans challenge is raider out. Our decision 2 point. Please review. चलिए, और मैच रेफरी ने आके इस बार रिव्यू लिया है, यानी कि जो U2 होंगे राधिका वो अब आपको रिव्यू लेते हुए नहीं नजर आएंगे उनके लोड को कम करने के लिए। बट यहाँ देखते हैं कि क्या वो डैश अपना लेफ्ट हैंड उन्होंने लगभग कोशिश की थी कि लॉबी के कांटेक्ट में रखें। इंटेलिजेंट वर्क था यहाँ पर शशांक की तरफ से। डैश मिड रिफ पर नहीं था, चेस्ट शोल्डर के आसपास था। पर देखते हैं राधिका, आप क्या कहेंगी? I think the raider is safe because the left palm was still resting in the lobbies. Harshit. पर क्या उन्होंने मिडलाइन जो ब्लैक पार्ट है उसमें तो उनकी कोई हाथ या उंगली गई थी, क्योंकि जो व्हाइट टेप है जिसे आप लाइन कहते हैं उस पर तो जरूर हाथ पड़ा है। 2 point Hampi Heroes. Chola Veerans. रिव्यू अनसक्सेसफुल गया है। हम्पी हीरोज राधिका जिसकी हम बात कर रहे थे वही हुआ है, एक और बार 2 अंक। Absolutely, they did not make use of the super tackle opportunity as well. तो हम पिछले 7 मुकाबलों से लगातार हैशटैग आगे का रास्ता की बात कर रहे हैं चोला वीरन्स के लिए। नॉन स्टॉप युवा यहाँ पर है, 5, 6, 7, 8, यानी कि वो आने वाले 4 घंटे बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं। नॉन स्टॉप कबड्डी का एक्शन आपसे के लिए होने वाला है। राइट कॉर्नर से अटैक, मधु वीरप्पा ने कहा कि चलिए बोनस पॉइंट चोला वीरन्स, रेडर आउट 1+2 3 बॉडी पर जाएंगे हम दोनों मिलकर, ऑल आउट चोला वीरन्स और मैं मिलके शिकार बना लेंगे। ऑल आउट बड़ी जल्दी चोला वीरन्स। ऑल इन। Yeah, is the second all out in the first half itself for Hampi Heroes. First time around, that was a 5-pointer raid that Gagan Gowda has initiated. या पहले वो 5 पॉइंटर रेड के चलते ऑल आउट हुए थे चोला वीरन्स। स्टिल द कंसर्न इज ओनली अ सिंगल टैकल पॉइंट फॉर चोला वीरन्स। जो डिफेंस ओरिएंटेड टीम है
और हर बार वो डिफेंस में टैकल करने जा रहे हैं, बट एडवांस टैकल, सिर्फ एक टैकल पॉइंट, हालांकि हम्पी के पास भी सिर्फ 2 ही हैं, बट रेड पॉइंट देखिए 21 हैं, और ये रेड पॉइंट हम्पी हीरोज के जो 21 हैं उसमें से 10 चोला वीरेंस के डिफेंस ने गिव अवे दिए हैं राधिका। Yeah, more than that we could say. बिल्कुल, तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मैच नंबर 54 में, जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ, बने रहिए हमारे साथ फैन कोर्ट पर। तो चलिए मैच नंबर 54 सेकंड हाफ में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल। ना चाहते हुए भी जो हार का कैंपेन यहाँ पर चोला वीरेंस के लिए जारी है, उससे अब थोड़ा सा उभर कर आना चाहेगी ये टीम। डिफेंस में सिर्फ 1 अंक पहले हाफ में। अक्सर आप गलतियां देखेंगे दोनों ही टीम के डिफेंस से, यानी कि हम्पी हीरोज का डिफेंस भी जो चिंता का विषय रहा है पिछले मुकाबलों से, इस बार सॉल्व आउट नहीं हुआ है वो प्रश्न। उनका भी डिफेंस बहुत सारी गलतियां करते हुए नजर आया है, और पहले हाफ में सिर्फ हमें 3 ही टैकल पॉइंट देखने को मिले हैं। ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है, बट यहाँ रेड पॉइंट बहुत ज्यादा है। दोनों ही टीम के रेडर्स ने अच्छा भी किया है, जहां गगन ग्लोरियस गौड़ा ने 2 बड़ी सुपर रेड्स लगाई हैं, सुजीत ने अच्छा कर दिखलाया है। बट ये जो गगन की रेड थी ना, ये एक्सेप्शनल थी, ये वंस इन अ मिलियन सक्सेसफुल होते हुए नजर आती है, और गगन जैसा स्ट्रेंथन और लंबे चौड़े कद का रेडर ही इसे सक्सेसफुल बना सकता है। राधिका, आपका स्वागत करते हैं कॉम्बॉक्स में। Yeah, thank you so much. Yes, this has been led by the Raiders of Hampi Heroes. Gagan Gowda, this is the 9th Super 10 in the first half itself. And he's been evenly supported by Shashank, is it? So they have been rotating raids, so no pressure on the Raiders. जी, रेडर्स पर ज्यादा वहां पर प्रेशर है नहीं, बट अरुण कुमार एक और बार रेट्स इन्होंने ज्यादा लगाई हैं, पॉइंट्स इनके खाते में कम आते हैं, इसी के चलते आप रेट स्ट्राइक रेट इनकी थोड़ी सी कम देखते हैं। और वहीं रेट स्ट्राइक रेट की अगर आप गगन गौड़ा की बात करें, तो ऑलरेडी राधिका इन्होंने अपने पहले हाफ में सुपर 10 बना लिया। क्या शानदार कार्य करता है गगन गौड़ा। पहले हाफ में सुपर 10 बनाना, शशांक के 8 पॉइंट, यानी कि 2 रेडर्स ने मिलके 18 पॉइंट प्राप्त किए, मधु कवीरप्पा ने 3। तो आज तीनों रेडर्स ने अच्छा काम किया है। अरुण कुमार को भी वैसे ही साथ देना पड़ेगा यहाँ पर सुजीत का। And unfortunate, Chola Veerans unsuccessful tackles are close to 18 or 19. So that's where they're faltering there. बिग नंबर्स राधिका, पूरे मैच में भी इतने नंबर्स शोभा नहीं देते हैं, और ये तो पहले हाफ की कहानी थी। बट दूसरे हाफ की कहानी हम्पी हीरोज के डिफेंस में सुकेश ने अच्छी तरह से शुरू की है। लेफ्ट कॉर्नर से एक अच्छा एंकल होल्ड आया, और जो हम अरुण की बात कर रहे थे, कभी कभी इनका डिटरमिन्ड हो जाता है, यानी कि कभी कभी सभी खिलाड़ी समझ जाते हैं कि यहीं पर फुटवर्क दर्शाने वाले हैं, इसीलिए शायद सुकेश तैयार थे एंकल होल्ड के लिए। Yeah, but now Chola Veerans have all the lead possible. So they will only want to take it easy. And Chola Veerans, their raiders have been doing good today. Sujit was with 5 and Arun Kumar with 6. But the defense is failing big time with the big names in their ring. और राधिका, मैं चोला वीरेंस की बात कर रहा हूँ, एम गौतम की हम बात करें तो एम गौतम में वो डेडिकेशन है, वो स्पार्क है। और इनकी कहानी की अगर मैं बात करूँ राधिका, तो आइए वो हमारे सभी साथियों और आप सभी के साथ मैं साझा करता हूँ कि चोला वीरेंस अभी पिछड़ रही है, उनका जो डेडिकेशन रहा है कबड्डी के प्रति, उसके बारे में आप सभी बताता हूँ। तो जैसे हमारे साथी यानी कि अश्विन भाई ने हमें बताया कि कुडलूर यानी कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, पर पुडुचेरी में जाकर अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए, ज्यादा मौके प्राप्त करने के लिए मुरुगन गौतम वहां से खेलते हैं चोला वीरेंस से। और राधिका, जब लॉकडाउन का समय था ना, मुरुगन गौतम की एक और खासियत है कि वो इलेक्ट्रीशियन का जॉब भी करते थे। लॉकडाउन में बहुत ही मोटिवेशन भरी उनकी कहानी रही है। जैसे यहाँ पर गगन गौड़ा ने पॉइंट प्राप्त किया है, तो उन्होंने पर डे
जब उनके पास काम आता था, उनके जो साथी थे वो उन्हें 500 रुपए दिन के दिया करते थे लॉकडाउन के दौरान, और वो इलेक्ट्रिसिटी से खेलते थे, एज इलेक्ट्रिशियन काम करते थे, बट उन्हें वो पैसा इकट्ठा करके कबड्डी में डालना था और अपने आप को कबड्डी में अच्छा बनाना था। I'm sure he has all the abilities to be a strong right cover defender, Harshad, but I think he somehow lost his confidence on this match. When he has a good team, bonus the point, captainship Chola Veerans. responsibility also added more responsibility over him. Chola Veerans, but then when that's been taken off also, I think there is some coordination missing in the team, Harshad. कोऑर्डिनेशन और लगातार खिलाड़ियों में बदलाव, राधिका, एक वो भी वजह हो सकती है, क्योंकि हमने चोला वीरेंस के बहुत सारे बदलाव देखे हैं। पहले टीम थोड़ी सी और अलग थी, and the coach has been changed. जी, जय कुमार जो गौतम को बहुत अच्छे से समझते थे, राधिका, वो जय कुमार जो थे मोटिवेट लगातार करते थे। हम जरूर बी राजा की खासियत को बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहेंगे। राइट कॉर्नर से अटैक आया मुरुगन गौतम की तरफ से, फिर से वंजीनाथन को अगर जाना था तो पहले जाना चाहिए था। किसका इंतजार उन्होंने किया, और इंतजार नहीं किया तो यहां पर उन्हें बाहर जाना पड़ा है गौतम के साथ। Yeah, Gautam is normally good at the right corner as well for those dive tackles. But then, when you don't have a proper coordination in the defense, you'll only get to see, defensive errors coming in, because it's all about supporting the defense. राधिका, वंजीनाथन कितना दूर से भागते हुए आए, तो सी फॉर्मेशन जो होनी चाहिए ना, वो वैसी थी भी नहीं कि वहां पर वार्तालाप करते ही यहां पर अटैक के लिए आ जाए। जैसे में लोकेश अनुज सैनी की नजर आती है, एक तरफ अटैक करने जाता है तो दूसरा तुरंत भाग के आ जाता है, यानी कि पलकों में इशारा हो जाता है। ग्रीन कार्ड मिला है, डिस्टर्बिंग द गेम, ज्यादा वार्तालाप नहीं कर सकते हैं एज ए डिफेंडर और एज ए रेडर। पर शशांक, राधिका, गगन गौड़ा को एक अच्छा साथ मिला है शशांक के रूप में। Exactly, I'm sure he'll also get that super 10 today, and it's a super tackle opportunity for Chola Veerans. They haven't done a great job in the first half. They just had one tackle point, and that continues for Chola Veerans. Look at how daringly he's going deep in, pushes the whole defense to one flank. 1 point, Hampi Rose, jersey number 14 out. क्या कर रहे थे वहां पर विघ्नेश बाबू? किसका था तुम्हें इंतजार? विघ्नेश देखिए कहां तक वो आ गए थे। एटलीस्ट उन्हें डराइए मधु कबीरप्पा को, प्रवीण को मौका दीजिए कि वापस अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएं। बट डिफेंस वो लग रहा है कि बादलों में जिस प्रकार से सूरज कहीं गुम सा जाता है ना, चांद कहीं गुम सा जाता है, वैसे ही चांद और सूर्य की तेजी और ललक है चोला वीरंस में। बट वो बादलों, यानी कि जो कॉन्फिडेंस गिर गया है, उस बादलों के बीच में उनकी जो ताकत है वो कहीं गुम सी गई है, राधिका। इसीलिए कॉम्बिनेशन में चाहिए। देखिए पॉइंट अभी भी दे रही है हम्पी हीरोज को, बट एक बार ट्राई कीजिए कि कॉम्बिनेशन में जाकर पॉइंट दे आप। बोनस पॉइंट चोला वीरंस। Yeah, bonus has been awarded for Sujit Sagar, and look at that. They just do not want to participate as a jersey team. number 15 out. आई थिंक राधिका ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें खुद को पता है कि जो मैं डिफेंस करने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट यही आएगा कि रेडर कैसे ना कैसे बचकर चले जाएंगे। तो वो स्ट्रगल, वो फाइटिंग स्पिरिट, वो थोड़ी सी अब हम मिस कर रहे हैं इस टीम में, और इसी के चलते लगातार 8वीं हार की तरफ टीम बढ़ चुकी है। और हम हीरो से कोच राधिका, उन्होंने कहा था कि बड़े मार्जिन से हमें जीत प्राप्त करनी है। 20 पॉइंट की तो मार्जिन हो चुकी है। Exactly, 20-point edge, and you still have 9 minutes in the game. Sujit Sagar, 7 or 8 points. He has good skills, and look at that. What a skillful Chola Veerans, jersey number 7 out. Brilliant kick executed on the right cover. सुजीत, वंडरफुल परफॉर्मेंस, अच्छा ब्रिलियंट खेल ये दिखा रहे हैं। देखिए Substitution, Chola Veerans, फ्लैंक जो था, और उसके बाद जो किक, Number 4 in, बहुत ही 5 out. तगड़ी किक थी राधिका। तारीफ करने होगी जिस रफ्तार से गए, अपनी किक को वहां पे स्ट्रेच करके लगाया इनके खिलाड़ी पर, मजा आया उस किक को देखकर। बट क्या शशांक के विरुद्ध ये सुपर टैकल हो सकता है राधिका? नंबर 13 सुजीत ने कहा कि चलिए रेड की जिम्मेदारी भी मैं संभालता हूं और डिफेंस की जिम्मेदारी भी मैं संभालता हूं। जान करके जाना चाहते हैं शशांक, बट अच्छी दोनों थाइस पर गए सुजीत और अच्छा साथ आया। कॉम्बिनेशन राधिका, यही मतलब होता है कॉम्बिनेशन का। Jersey number 4, Absolutely. Chola Veerans, Double thigh holding, neck breaks the no neck momentum holding. of. Yeah, there was a neck holding, so Substitution, any Chola hold Veerans. above the shoulders is considered, Number 5 in, 16 not out. fair. So that's the reason, a small warning there. And first super tackle for Chola Veerans, one revival, and somehow they miss it to give away the all out this time. बट क्या अगर ऑल आउट से अपने आप को बचाएंगे तो ये भी कॉन्फिडेंस वाली बात रहेगी। मोहनदास बाहर गए हैं
Wow! Just Rhinos set. jump 1 point Chola Veerans. Jersey number 4 out. इस्तेमाल किया, डिफेंडर्स का जंप किया. सुजीत अपनी टीम के लिए मोमेंटम धीरे धीरे अपने पक्ष में ला रहे हैं. राधिका, just look at this colossal jump. Yeah, because the defense was very predictable that he was going for a double thigh hold. So that's a nice anticipation from the Raider. Uses his shoulders to jump over. और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाना होगा. एक्सट्रीमली टैलेंटेड रेडर गगन गौड़ा अब यहाँ पर आए हैं. 4 का हाउस है. 2-2 की चेन में रहिए ना एटलीस्ट, या फिर अगर आप, क्योंकि जो मिडल के खिलाड़ी है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप कैसे उनका बढ़ाना चाहते हैं. सुजीत वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं साथी खिलाड़ी. पर गगन इस बार जानबूझकर अंदर नहीं गए. डिफेंस ने भी अच्छा किया कि सिर्फ वहाँ पर डीप मौजूद थे. Yeah, Sujit Sagar is and 10 rate points to this Raider as well, where the defense was not Raider supporting at all. 1 point Hampi Heroes. पर वही है ना कि इनकी भी एनर्जी है, ये भी इंसान है. जरूर डाउन इन एनर्जी नजर आए और जिसके चलते राइट कॉर्नर तुरंत आते ही एंकल पर चले गए. ये देखिए हल्का सा स्लाइड पॉज आ गया था. राइट कॉर्नर को टच करके एक बार हल्का सा वहां रुक से गए थे. और शिवा को अगर इतना सा सेकंड में मिल जाता है ना डिफेंस लिए तो वो टूट कर पड़ते हैं. मधु कबीरप्पा ने भी अच्छा कार्य किया. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶ ಗಗನ ಐಚಬ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲ ಲೋನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿತಾಕೋ ಲೋನ. ಇಲ್ಲ ಆಡೋ ಕಿತಾಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ. இவரை ஒன்றும் 6 நிமிஷம் இருக்குது, ஈஸியாக மாற்றலாம். டென்ஷனாக ஆடு, உள்ளே எல்லாரும் வந்துட்டாங்கன்னா மேட்சே மாறி போகும். ஒருத்தர் பரவாயில்ல விடு, நீ கிடைக்கத்த பண்ணு, எது மேலே கூலாக ஆடு, கிடைக்கத்த பண்ணு, மேட்ச் ஈஸியாக இருக்குதுன்னு நினச்சி ஒருத்தர் இப்படி ஈஸியாக ஆடு, ஃப்ரீயாக ஆடு. ओके तो आप सभी इन मुकाबलों में नॉन स्टॉप युवा में मत भूल जाइएगा कि आपको युवा कबड्डी सीरीज का ऐप डाउनलोड करना है. क्विज़ेस वहां पर रहती है, जाइए खेलिए. कैश प्राइज जीतने का मौका है, 5000 तक का आप जीत सकते हैं. मर्केंडाइजिंग जीत सकते हैं. दोनों ही टीम के कोचेस ने कहा गया है बहुत कुछ. मुझे लगता है राधिका 7 मिनट में 15 पॉइंट की लीड तो कवर करना मुश्किल है, बट अगर 8-10 पॉइंट और चोला वीरंस प्राप्त करती है खासकर डिफेंस में तो उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऊपर जा सकता है. Chola Veerans coach mentioned, play fearless here. But then will they go fearless? And this should be a super tackle, provided they did not hold on to the jersey. Fearless, Raider out. बेबाक, Super tackle. Raider 2 out. points, Chola सुपर Veerans. टैकल यहाँ पर दिया जाता है चोला वीरंस को. कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम सुपर टैकल यहाँ पर नजर आया. गगन गौड़ा को इस बार शिकार बनाया है. गगन को कहा था कोच ने जाइए अटैक कीजिए. गौतम का सबसे पहले टैकल यहाँ पर आया था. गलत डायरेक्शन इस बार चूज की थी क्योंकि गैप वहां पर कम था. और उसके बाद अरुण कुमार नंबर 4 नंबर 11 इन तीनों ने मिलाकर अच्छा कार्य किया. जर्सी पुल का कंटेंशन था राधिका, बट वो बहुत ही स्लाइड था. इसलिए लक्ष्य देसाई अमर वर्मा साहब का कहना कि 2 पॉइंट चोला वीरंस को मिलेंगे. But jersey pull was there, Harshit. So let's see if they want to change the verdict here. हाँ ये निर्णय But then, जारी है. there was a wrong route of escape again. Gagan being a right trader, he went towards the left side of it. So where he got into the clutches of the defense. Provided he would have turned right, there was an ample gap in the lobbies to escape. या परफेक्ट तकनीकी तौर पर सक्षम. वो रिप्ले अगर एक और बार हमें देखने को मिल जाए, मैं निवेदन करूंगा हमारे ईवीएस ऑपरेटर राम से कि अगर एक बार क्या ये पुणे हमें रिप्ले देखने को मिल सकता है. Raider save. 1 point Hampi Heroes. Jersey number 11 out. Jersey pulling number 11. Jersey number 11. मुर्गन Jersey गौतम number 11. गरीबी में आटा गीला. यहाँ पर Jersey number सुपर 11. टैकल लग रहा था, क्या मिलेंगे. Number 11, गौतम please को come. बुला रहे हैं. गौतम कम है. Jersey number He's 11. completely lost it. Green card. Chola Harshit. Veerans. Jersey pulling. No jersey pulling. Yeah. गौतम It was very clear. It was very clear of a jersey pull in the live action itself. Look at that. Being a right raider, you should have turned to your right. The lobby was available for you. ओके तो क्या यहाँ पर गलत खिलाड़ी को दिया गया है वो जर्सी का कार्ड, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से नंबर 4 जो खिलाड़ी थे उन्होंने वहां पर जर्सी पुल किया. कितना इम्पैक्टफुल था. जरूर मुझे लगा कि शायद राधिका ये सुपर टैकल हो सकता था चोला वीरंस के पक्ष में. Yeah, provided the raider went into the wrong route, that was a clear clutch for the defense. But then in the confusion or in the nervousness, they just went in to pull the jersey.
या वो गगन जैसा रेडर हो तो आप जरूर नर्वसनेस आ जाती है, आप पूरी तरह से श्योर होना चाहते हैं कि आपके क्लचेस में फंस जाएं, बट अरुण कुमार पर केक गाय फिर से सुपर टैकल की डिमांड। नंबर 4 आयरन का शानदार प्रदर्शन यहां पर नजर आया है और अब यहां पर हो सकता है ये बड़ा सुपर टैकल। स्ट्रगल इज स्टिल ऑन, गगन इज ट्राइंग हार्ड बट हियर्स अ व्हिसल ब्लोन, दैट मींस Chola Veerans will get a super tackle definitely this time. Yeah, the second successful super tackle for Chola Veerans. The frontal block, the back hold. The raider did not give up, but so as the defense, we could see quite a few wrestling moves on the mat here. But then finally, it's a super tackle for Chola Veerans, one revival as well. Wherein Hampi Heroes in the strategic timeout, he wanted one more all out from Chola Veerans. जी आप 2 बनाम 1 था, वहां पर बहुत सारे रेसलिंग मूव्स नजर आए। ये अच्छी बात है, Chola Veerans लगातार जो है वो ऑल आउट को यहां पर धकेल रहे हैं। टालें तो मजा आ जाएगा, पर यहां पर अरुण कुमार बहुत स्फूर्ति से गए, राइट एंड पर जाकर यहां पर किक लगाकर मधु कबीरप्पा को बाहर किया। टाइम आउट Chola Veerans। ಏನಕ್ಕ टाइम आउट ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದಂತೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇವಾಗ ನಮ್ದೇ ಅಲ್ವೇ ನಾ ರೈಡು, ಆರಾಮಾಗಿಡು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಡ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕೀಳು ಸಾಕು. ಈಗ ಅವನೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ இது பண்ணி நீ பாரு தம்பி ஸ்கோர் பண்ணோம், ஸ்ட்ரகிள் உருவாக்கி 3-4 வாரம் ஆகணும். या राधिका कुछ आप डिकोड करना चाहें? Maybe Chola Veerans coach says what kind of a play are you displaying here. Control the pace of the game. When you go for the raid, kill the time. That's what he says. और थोड़ा सा फिर से डिफेंस जो था वहां पर नजर आया। आसान से गए शशांक इंडियन को वहां पर टच किया। वंजी और मुर्गन गौतम इन दोनों का फॉर्म देखिए। राधिका किस डायरेक्शन में वहां पर वंजीनाथन थे। अगर वहां पर कोई कंटेंशन होता भी तो भी जब तक वहां पर वंजीनाथन पहुंचते तब तक तो शायद शशांक आसानी के साथ लॉबी का इस्तेमाल करते हुए मिडलाइन की तरफ बढ़ चलते। तो वंजीनाथन को भूलना होगा, गौतम को भूलना होगा जो उनके साथ पिछले कुछ दिनों में घटित हुआ है, और फिर से अपनी सेम परफॉर्मेंस को लेकर मैट पर आना पड़ेगा। अरुण कुमार कोशिश करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से डाइव आई है, 2 और पॉइंट राइट, 2 पॉइंट्स Chola Veerans और लेफ्ट कॉर्नर दोनों जर्सी नंबर 18 and 27 out. Is a 9th raid point for Arun Kumar as well. If he gets one more, I think in this match we'll get to see 4 super 10s. Harshit, what a clear execution of an escape that was from the radar. जी अच्छा एस्केप वहां पर नजर आया अरुण कुमार की तरफ से। शशांक भी यहां पर है। 38-25-13 पॉइंट की लीड अभी भी हम्पी हीरोज के पक्ष में। 3.25 मिनट का समय शेष है। क्या हम्पी हीरोज को ऑल आउट की तरफ धकेल सकता है Chola Veerans? नहीं, शशांक के होते हुए और वंजीनाथन के होते हुए ये कार्य हम्पी हीरोज नहीं होने देगा। अच्छा टच किया वंजीनाथन, अपने आप को पीछे खींचने में, बैकड्रिल करने में ना समर्थ राधिका। Exactly. I mean, their body posture is as if it's not their position that they need to get back. There's not enough practice. There is no coordination. The in player is not even supporting the defense to pull the defender back. तो अब देखते हैं कि क्या सुजीत यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आज दिखाया है। इन्होंने अपनी टीम के लिए 25 कहीं पॉइंट्स है Chola Veerans के, तो उसमें यहाँ पर सुजीत के 10 रेड पॉइंट्स हैं, 3 टैकल पॉइंट्स हैं जिसमें एक सुपर टैकल शुमार है। अरुण कुमार के पास भी यहाँ पर अब पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 9 रेड पॉइंट्स उनके पास ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। 39-25 शशांक भी बहुत अच्छा खेले हैं राधिका, बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड खिलाड़ी नजर आए हैं। और इन्होंने गगन गौड़ा के साथ, गगन गौड़ा का आपने टैलेंट देखा है, बट गगन के साथ साथ शशांक का प्रदर्शन करना, लाइटनिंग और स्पार्किंग परफॉर्मेंस नजर देता है हम्पी हीरोज की तरफ से। प्लीज कम। Exactly, when you have a top player like Gagan who's almost leading, in his shadow, if somebody had to shine, he had to outplay Gagan as well. So that's kind of his skills we have seen from Shashank today, and he had 13 raid points. Let us say still the right corner. Chola Veerans हीरोज की तरफ से अभी भी राइट out. कॉर्नर जो है अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। कृष्णा को अभी थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया था, अच्छा टर्न किया, और राधिका इस बार टर्न बिल्कुल सही था राइट रेडर की तरफ से। वो राइट टर्न, लॉबी का अच्छा इस्तेमाल, जब आपकी तरफ राइट कॉर्नर से अटैक आए, टर्न करके
लॉबी को पार किया, मिड लाइन को पार किया और अब यहाँ पर सुपर 10 अरुण ने भी पार किया है। और राधिका बिल्कुल आपने सही गेस किया कि पहली बार शायद समर एडिशन में एक मुकाबले में आपको 4 सुपर 10 नजर आए हैं। तेजा नायक भी तेजी के साथ आ चुके हैं मैट पर। Yeah, that's because of Chola Veerans defensive errors that Hampi Heroes, both the Raiders have got easy super 10s, but then for I think the Chola Veerans Raiders, it should be credit given to the Raiders because the defense was not supporting, but the Raiders took charge of their skills and they've got up those points for the team. राधिका क्या ये पहली या दूसरी डू और डाई रेड है? और इस आपके तो जरूर शायद पहली है। Exactly. We hardly heard the do or die raid siren blowing on the mat today. जी आप तेजा नायक की परीक्षा होने वाली क्योंकि 5 का हाउस है, एक साथ जाएगा गगन, यहाँ पर नहीं है। तेजा नायक है, बाहों में चले गए, रॉन्ग डायरेक्शन, लॉबी की तरफ भागते हुए चले गए थे, पैरेलल चले गए थे, एल शेप में कट करके मिड लाइन की तरफ जाने की आवश्यकता थी, पर सीधा इनके खिलाड़ी उनका इंतजार कर रहे थे। राधिका देखिए सीधा भागते हुए चले गए। Exactly, he is not even closer to the corner, he went in closer to the in player. So that was a very, very blind raid. At least they should go for an all-out here. Chola Veerans, they might not win the game, but at least go for this all-out. क्या राधिका एक अंक आ सकता है? चोला वीरेंस के लिए इस मुकाबले से एक अंक आ सकता है अगर कहीं ऑल आउट करे। 6 क्या 7 पॉइंट के मार्जिन से कम वहां पर हार मिल पाएगी। अभी 8 कितने अंक की यहाँ पर आपको नजर आ रही है? अभी थोड़ी सी लीड ज्यादा है, 11। They should not give the bonus and just tackle this defender. Yeah, they gave away the bonus. So that means it's on 40 now, Hampi Heroes. So not possible. और राधिका हम बात कर रहे थे वहां पर सिर्फ बोनस की, यहाँ पर शशांक की चाहत थी और सारे अंक लाने की, बट कॉम्बिनेशन में गए चोला वीरेंस का डिफेंस। तो देखिए राधिका, चाहे एडवांस टैकल हो, उतना अच्छा पोजीशन में नहीं थे डिफेंडर पकड़ने के, उसके बावजूद ये टैकल सक्सेसफुल हुआ। दिस इज द पावर ऑफ बंच। हमें अक्सर सिखाया जाता है वो जो कहानी है कि एक अकेली लकड़ी कभी भी टूट सकती है, जब आप लकड़ियों का बंडल दे देंगे तो वो नहीं टूट पाता है आसानी से। ये कहानी फिर से समझाइए चोला वीरेंस के डिफेंस को। Exactly, Arun Kumar Anjupuli. 10 raid points for this captain today. But then a back hold, weak one coming in. 1 point, Chola Veerans, jersey number 18 out. अरुण कुमार, एक और बोनस की आपको चाहत दिखा देनी चाहिए थी, बट यहाँ पर देवनाथन आए थे कोशिश दिखाने अपनी कुछ, पर हम्पी हीरोज चलिए दूसरी बड़ी जीत सर्वाइवल 2 की। नरसिम्हा साहब खुश होंगे, 8 पॉइंट की मार्जिन से विक्ट्री प्राप्त की है, यानी कि हर एक पॉइंट इस मुकाबले का अपने पास वो अर्जित करेंगे। राधिका लगातार ये 8वीं हार चोला वीरेंस के लिए। Exactly, 8th consecutive loss for Chola Veerans. The way they started, it didn't look like a team of which is right now. So a very, very big blow for Chola Veerans. I think it's an unforgettable season for Chola Veerans this season. सिर्फ 1 पॉइंट अभी तक सर्वाइवल 2 में अपने नाम जोड़ पाई है टीम। इस मुकाबले में से भी कोई भी पॉइंट मिलेगा नहीं। मुझे लगता है कि आपने ओरिजिनल कोच जय कुमार साहब को भी मिस कर रही है ये टीम, पर कोचेस के साथ साथ खिलाड़ियों की मेंटलिटी। राधिका 2 दिन का ब्रेक था वो पूरा, यहाँ हाइलाइट्स में आप बहुत कुछ देखेंगे, पर चोला वीरेंस का डिफेंस यहाँ पर शुरुआत में सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ में बहुत गलती की। सेकंड हाफ में आते आते आपको कुछ अच्छे सुपर टैकल्स नजर आएंगे। ये पहला सुपर टैकल सुजीत ने इनिशिएट किया था राधिका। Exactly. In the first half, we have seen 18 failed tackles. By the end of the second half, we have seen in the total 25 failed tackles. So that means, they have covered in the defense as well. This was one super tackle, but then went in favor of Gagan Gowda for a jersey pull. जी यहाँ पर वो गगन गौड़ा के विरुद्ध किस प्रकार से सुपर टैकल वहां पर किया। जरूर आज से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पर डिफेंस में, कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन में गए थे यहाँ पर। ये भी तेजा नायक का एक अच्छा डिफेंस किया था, बट मुरुगन गौतम की फॉर्म सबसे बड़ा चिंताजनक विषय वो है। सुजीत ने कोशिश की कि ऑल आउट करें और अंत में जाकर वहां पर शशांक को आउट करने के बाद ऑल आउट भी किया हम्पी हीरोज को, बट वही एम गौतम की फॉर्म चिंताजनक है, मंजुनाथन की फॉर्म चिंताजनक है, पर चिंताजनक यहाँ पर हम्पी हीरोज के लिए राइट कॉर्नर का क्रम रहेगा। 4 सुपर 10 मुकाबले से नजर आए, शशांक के 15 पॉइंट, गगन गौड़ा के 11 रेड पॉइंट्स, सुजीत और अरुण कुमार के 11 रेड पॉइंट्स। राधिका, क्या आपको याद है कि इस समर एडिशन में कभी एक साथ आपको 4 सुपर 10 नजर आए हो? And nothing for the matches I have done, and I think this is the first match where our defense is strong. Like Chola Veerans also had 2 super 10s. It's understood that Hampi Heroes could get it, but not from Chola Veerans.
सिर्फ 4 टैकल पॉइंट्स हम्पी हीरोज के लिए। कुल मिलाकर रेड्स शशांक की यहाँ पर 15 थी, 15 ही रेड पॉइंट, और यही चाहिए इनसे। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही, 100% रही शशांक के लिए। अच्छी तरह से उन्होंने रेड लगाई, सुपर रेड जरूर गगन गौड़ा ने ज्यादा लगाई, बट इनके आने के साथ गगन गौड़ा का प्रेशर कम हुआ है राधिका। Absolutely. Sharing of the responsibility is required. And Narsimha Murthy, the best defender for Hampi Heroes. 5 tackle attempts, a tackle points at 3. No super tackles, but then tackle strike rate fair enough, in the team where you have a Raiders strong unit. अब चलते हैं अंक तालिका की तरफ, तो क्या यहाँ पर कोई बदलाव है? चोला वीरन्स बिल्कुल आपको 8th पोजीशन पर नजर आएगा, 0.33 का पॉइंट्स पर मैच है। कहाँ आपके इस टीम को ढूंढ रहे हैं? पलनी टस्कर्स टॉपर, नीलगिरी नाइट्स दूसरे पायदान पर, हम्पी पहुंच चुका है। हम्पी राधिका अच्छी जंप लगाई है, पहले शायद 5वें पायदान पर था, अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। पॉइंट्स पर मैच 4.4। मिलते हैं आप सभी के साथ, तब तक के लिए राधिका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं हर्षद शर्मा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं फ्रॉम द कॉम बॉक्स।
Welcome to match number 55, where the Palani Tuskers are trying to take a point against the Periyar Panthers and go up in that points table to point number 1 as well. And this is very, very important. We are in the hashtag non-stop Yuva, where we have 3 hours of scintillating kabaddi coming to you. And now this is a big, big announcement that's going to coming up from Harshit as well. As Harshit, we are all set for the Palani Tuskers and Periyar Panthers to be coming in on the mat, please. जी नवीन, अब समय है नॉन स्टॉप युवा के दूसरे पड़ाव की तरफ चलने का। ये क्लैश होगा पी वर्सेस पी। क्या टस्क काम आ पाएंगी या फिर पैंथर्स के चमले रहेगा? आइए सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं द इनविंसिबल, द अनबीटेबल पालनी Tuskers! और अनुज बेकरार, तो आइए बुलाते हैं पेरियर पैंथर्स। The Purple Brigade will be on their toes to stop the Green Brigade, because this is an unbeaten side. The green is always greener on the other side. Probably it is saying that is the mountain looks greener on the other side, but here in the Yuva Kabaddi series in the summer edition, it's all green all the way, because Palani Tuskers have been unbeaten still, and Periyar Panthers need to really play up a big fight against the Palani Tuskers to make this team actually taste their first loss. Will that happen today against Tamil Arasan Kalasamy in that left corner, and that right corner Purushothaman Palanivel? Both strong corners coming in, and Ram Kumar becomes the captain here because Sanjeevi is injured. Yes, he is not around, so Ram Kumar has been given the responsibility of the captainship, and also Jayasuriya Nagarajan and Mukesh Kannan will be raiding with him. Ajay Muthaya and Ayanathan Ranganathan will be in the covers as well, and in the substitute, Jet Pasupati, Vidudalai Viswanathan, Manikandan Subramani and Dinesh Kumar Ganapati will be in the substitution lines, along with the ever thinking coach is Divakaran, and ever talking friend of mine is Harshit. Hi Harshit. हेलो नवीन, गुड इवनिंग, और बहुत ही चीयरफुल इवनिंग यहाँ से जारी है नॉन स्टॉप युवा। आइए दूसरे पड़ाव की तरफ हम सभी पहुँच चले हैं। तो तमिला वर्सन वहाँ पर एक बड़ा नाम आपको पलनी टस्कर्स में लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आया, बट आइए अभी बात करते हैं यहाँ पर पेरियार पैंथर्स की। लक्ष्य दीप सिंह नजर आएंगे, क्या दीप की तरह चमक पाएंगे? राहुल चौधरी को आज राइट कवर पर मौका मिल रहा है, मनजीत मित्र लेफ्ट कवर पर। रेटिंग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं नवीन या डिफेंस, इसके बारे में हम लगातार बात करेंगे। राइट एंड पर सरदार चौधरी होंगे, गोपाल सिंह, यानी कि इन दोनों का रेटिंग कॉम्बिनेशन लगातार जारी रख रही है जी। बट अनुज सैनी एंड लोकेश गोसलिया सबसे बड़े एसेट्स हैं अपनी टीम के। नकुल सैनी, नितिन कुमार की एक बहुत अच्छी कहानी भी, जैसे आप पलनी के साथ वहां पर बात कर रहे थे, वैसे ही बात करेंगे आने वाले समय में भगत, दीपक और मुकेश के बारे में भी। बट नवीन, दोनों ही टीमों की बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है। Yeah, absolutely. Really well settled into that combination as well. But 2 wins for the Palani Tuskers against the Periyar Panthers, and this also might have been in this summer edition as well. 1 win against the Periyar Panthers, where they've already got it. So the Periyar Panthers won. They'll have to make the Palani Tuskers taste a little bit of a loss. How that loss is going on now. Will that happen? And look at that tattoo. Customs Department is the captain today. So let's see what is going to happen. Is the toss as well? No, Periyar Panthers won the toss. Ram Kumar thought he had won it. And Sagar Panchal says, no, it's Lokesh Gosalia who goes away with the coin. And for the men to watch out for, yeah, Jayasuriya Nagarajan. He is very good. He's come in as that raider who came in from the bench, and then he is now being looked upon as the premium raider for their team. Jayasuriya Nagarajan. क्या बात है। और बिल्कुल इस लोकेश गोसलिया की बात करें, पिछले 7 सालों से इन्होंने कबड्डी को खेला है, और लोकल गेम की बात करें तो 10 मुकाबलों में यहाँ पर 28 टैकल पॉइंट प्राप्त किए। लोकल टूर्नामेंट्स को देखकर इस खिलाड़ी ने कैसे कबड्डी की शुरुआत की थी नवीन, और अब कैसे युवा कबड्डी सीरीज का बेस्ट डिफेंडर साबित हुआ है, इसके बारे में भी बहुत सारी वार्तालाप आगे की जाएगी। बड़ी कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर फ्रंटल बॉक आ सकता है लोकेश गोसलिया का, बट पलनी टस्कर्स की जो अनबीटेबल स्ट्रीक है, क्या आज यहाँ पर चल पाएंगे अगेंस्ट पेरियार पैंथर्स? 2 ड्रॉ हैं, बट 11 मुकाबले में 9 जीत है। ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। And look at that win percentage, 81.82.
Have you ever seen that in any of the Yuva Kabaddi series editions? Of course, the previous Palani Tuskers had it, maybe. But apart from that, this Palani Tuskers with another coach as well. Apart from Ilavarasan, Divakaran also has been very, very good in that coaching duties. Of course, Divakaran, Ilavarasan, everybody are friends together in the Tamil Nadu Kabaddi Association. As we speak about Divakaran, he also has done a lot of sacrifices. I've been talking with them from yesterday, today and all that. So many stories to be actually told upon. Yeah, you had some nice time with the Periyar Panthers. I think the team also was there along with everybody. जी बिल्कुल सही कहा नवीन 12 मुकाबले हालांकि इस टीम ने खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं। राजेश गुजर साहब जो अभी भी कुछ समय पहले खुद एक नेशनल्स और वहां पर इंटरनेशनल प्रदर्शन कर आए, बहुत अच्छे स्वयं खिलाड़ी हैं, फ्रेंचाइजी लीग में खेलते हैं। बट पेरियार पैंथर्स का फॉर्म जो है वो लगातार ऊपर नीचे रहा है, जिस प्रकार की सागर की लहरें ऊपर नीचे रहती है वैसे ही। बट ये मैच आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे थोड़ी सी चिंता है क्या पेरियार पैंथर्स के रेडर्स अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे पलनी टस्कर्स के डिफेंस के आगे। Because there is no Sanjeevi, they have an outside chance is what I will say. Because if Jayasurya Nagarajan and Ram Kumar, if they get under a little bit of pressure, then they have an outside chance. Yes, Puran Shekhawat, he knows his game. He knows what he can bring to the Kabaddi mat as well. And we have set up this non-stop Yuva in a very, very nice fashion. Second match on a trot, it's going away, and just that first match, Hampi Heroes once again going ahead and giving themselves another victory. Chola Veerans once again going down, and that was, I think, their 7th consecutive loss. That's not right at all for them. But nevertheless, concentrating on this 6 p.m. match, it's all set now for the jib angle to go out there and focus into that trophy first, and then focus out for the countdown to begin. Can the Periyar Panthers stop the Palani Tuskers? That's a big question of this match. The toss was won by the Periyar Panthers, and the first trade might happen from Jayasurya Nagarajan if the captain goes ahead and allows him as well. So both of the Raiders standing out there at the midline. They've been very intense in what is going to happen. But speaking about Jayasurya Nagarajan, as I think he might come into raid first, and he's been looked upon as the premium raider as well. Harshit, his father, Mr. Nagarajan, he is a police officer. I mean, he started as a constable as well. 25 years he was the constable because of Kabaddi. In that very, very district of, Tirthak. And the 25 years of service now, what has happened is his father has got the SI promotion recently. Wow. Recently, his father has gone ahead, and it's very, very nice. And the very important factor of why Mr. Nagarajan is so very good with Jayasurya is, whatever Jayasurya asks for Kabaddi, say, Dad, I need this shoes for Kabaddi, I need this jersey for Kabaddi. His dad has said never no for anything. Wow. He's gone ahead. Very supportive. Very, very supportive, his dad, because he knows what Kabaddi can give to anybody's life. And he himself being a policeman, because of Kabaddi and because of few injuries, he did not start ahead and he did not continue with Kabaddi. But he's made sure that the others also practice out. As we speak with Jayasurya Nagarajan, the captain Ram Kumar comes in, a customs officer. And I was just asking him about the custom duties and all that. There's a very interesting movie of Surya who's actually been acted very nicely called Iron. Okay, it's a lovely movie called Iron. There Surya actually helps the customs officers. I was just asking and pulling his leg around as he got the bonus point to start off with. जी हाँ, पहला अंक यहाँ पर पलनी टस्कर्स के खाते में जुड़ता हुआ बोनस अंक के चलते, और गोपाल सिंह यहाँ पर है। और नवीन जो आप जयसूर्य नागराजन की कहानी की बात कर रहे थे, जिनके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, पर पेरियार पैंथर्स के एक खिलाड़ी जो आपको अमूमन राइट कवर पर नजर आते थे, नितिन कुमार, उनकी कहानी बिल्कुल उनकी अपोजिट रही है। नितिन कुमार
वो स्कूल अपने कबड्डी के कपड़े साथ लेकर जाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस का कहा करते थे अपने पिताश्री माताश्री को। जब उन्होंने बात की कि मैं कबड्डी खेलना चाहता हूं, उनके मॉम एंड डैड ने मना किया। जरूर यहाँ पर बोनस का प्रयास किया था गोपाल सिंह ने, जो मिलेगा नहीं, तो उनके माता पिता ने मना किया कि कबड्डी में स्कोप उतना ज्यादा नहीं है, और कई सारी वार्तालाप हुई। बट वहां पर मंजीत मित्रा का प्रयास, नितिन कुमार राइट कवर पर अभी नहीं है, पर जल्दी हो सकते हैं अगर ऐसा प्रदर्शन जारी रहा। राहुल चौधरी और मंजीत दोनों बाहर। Very weak and an advanced tackle. See how far away from the back line as Jayasurya Nagarajan was the policeman's son. He's got it away. 2 raid points for him in that first raid. Yeah, Sardar Chaudhary, he's with a little bit of an experience, and it shows, it very clearly shows Ajay Mutaya in that left cover. That was a very weak and a hasty attempt. जी, अजय मुतैया यहाँ पर आप ऐसे टैकल्स की अक्सर उनसे उम्मीद नहीं करते हैं, वन हैंडेडली गए थे। ये तो सरदार चौधरी को फॉर्म में आने का थोड़ा सा मौका दिया था। और नितिन की बात पर वापस चलूं नवीन, तो वो स्कूल में अपने कबड्डी के कपड़े साथ में लेकर जाते थे। स्कूल के पश्चात वो 3 घंटे प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद से उनके कोच ने उन्हें देखा अच्छा करते हुए, तो उन्होंने उनके मॉम एंड डैड से परमिशन ली। उसके बाद एक बार जब वो कबड्डी खेल रहे थे, प्रैक्टिस करने गए थे, मतलब कहते हुए बड़ा दुख होता है कि उनके पिताश्री का एक्सीडेंट हुआ। वो वहां से गए, अपने पिताश्री को उठाया और उन्हीं कपड़ों में उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, और जरूर रिकवरी उनके पिताजी की अब हो चुकी है। बट नितिन कुमार की भी वहां पर लगातार इंजरीज का कंसर्न था, और इन पर अब जिम्मेदारियां बड़ी है, और ये इनकी एम यही है कि जैसे सरदार चौधरी ने टच पॉइंट यहाँ पर प्राप्त किया है, उनका हाईएस्ट पॉइंट है मुझे जॉब लगना है और कबड्डी में भारत के लिए खेलना है। Lovely. Ayanathan Ranganathan does not go back in time in that left cover position there. The backtracking skills never there, and that retrieving skills, it's so important as a defender when you take that first step, how quickly you come back. But yeah, very touching story of Nitin Kumar as well. But yeah, you know, in your kabaddi kit, if you're lifting up your injured father from an accident, yeah, that would have been a very unerasable memory in his life. Oh, Sardar Chaudhary! Come on, Sardar Chaudhary, why did you have to do that? You're a raider, you went in for the dash against Jayasurya Nagarajan. He's gone into the lobby. Jayasurya will get 1 touch point, and Sardar has gone himself into the lobby as well. यहाँ देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर देखिए पहले बचे थे, उसके बाद क्या उन पर भी किक लगी, पर मंजीत को जरूर उन्होंने टच किया था, और ये तय है कि 2 पॉइंट यहाँ पर पलनी टस्कर्स के पास मिल जाएंगे। और नवीन, इसीलिए राधिका ने इन्हें नाम दिया है जयसूर्या को बैकबोन ऑफ पलनी टस्कर्स। बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही स्मार्ट रेडर है। राइट कॉर्नर से अटैक, परफेक्ट पोजीशन पर पुरुषोत्तम मौजूद थे, दोनों साइड पर गए, गोपाल सिंह का बनाते हुए इस बार शिकार। Purushottam Palani Vale, I'll tell you what, he's very good in that right corner and goes to that double thigh hold, and then it converts as a single thigh hold, but then the support came in also very nicely. Yeah, you speak about Jayasurya Nagarajan, yes, he is definitely the backbone, and also Harshit, because he is coming in from such a family which has played Kabaddi so much, he also has been under Sai's eyes for a long time. He's trained at Sports Authority of India for Kabaddi. He's made sure why Kabaddi in his veins is so nicely, and he wanted to be an athlete first. He wanted to be an athlete, he wanted to be a runner, and that is why he was in Sai starting off with. And he, for me, amongst all our young lads in the Yuva Kabaddi series, he is one guy who is not media shy. He knows how to speak. He knows how to, articulate well. He knows how to conversate. As Lakshandeep Singh is trying to get a touch point and get a revival as they are trailing with 5 major points here, the Periyar Panthers. Oh, Ajay Mutaya! Don't tell me he's hurt himself. Don't tell me with the pursuit he's hurt himself. And you know what? Ajay Mutaya, he wanted to be a boxer. Oh. He actually went ahead and did his boxing in his schooling days. He was Tamil Nadu first. He got the gold medal in boxing. Ajay Mutaya. Oh. Yes, exactly. And then he did not have proper guidance. And I asked him, he has a small injury on his nose, because boxers generally have that, injuries with the nose and all that. And I said, did you get that injury on the nose? He said, no, with the boxing, no. I got gold medal. How can I get punched? He asked me that. And then he changed his profession from a gold medal in Kabaddi, in boxing to Kabaddi. So that was a big change for Ajay Mutaya.
जी अजय मुतैया तारीफ करनी होगी और बड़ी ही यहाँ पर लाजवाब कहानियां हम लगातार कॉम्बॉक्स में आप सभी के साथ लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ पर डू और डाई रेड है, जय सूर्या नागराजन यहाँ पर रेड के लिए जाएंगे और जैसा कि आपने कहा था कि बिल्कुल मीडिया शाय नहीं है क्योंकि इन्होंने 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ वहां पर इंटरव्यू हमारे साथ कंडक्ट किया था। यहाँ देखते हैं कि क्या मल्टीपल स्किल्स के साथ अपना प्रदर्शन दर्शा पाएंगे। लोकेश गुजरिया का अटैक आया, अनुज सैनी का प्रयास था, 2 पॉइंट तो तय हैं, एक और मल्टी रेड लगा दी है, मल्टी पॉइंट रेड इस खिलाड़ी ने। Oh, Rocky says it's a super raid. My God. We just felt it was a 2-pointer raid. Arshit, where was the third one coming in from? Lokesh Gosalia. Oh, Anuj Saini. Right. That was a problem. And also that in defender should not have gone in for that. Lakshdeep Singh. And also, you know what? Manikandan, the other substitute who's there, Manikandan Subramani, he's also been that state boxing champion. So that is very nice. They've got different sports that is coming in. So Manikandan Subramani, he's got that gold in that boxing. And then, of course, Ajay Muthaiya is just trying to be there around. And now in a do-or-die raid, Nakul Saini wants to box out something of the defense. He's been given away the bonus. They're giving it away. They are not actually going ahead because this is an all-out opportunity for the Periyar Panthers. Time is running down. 2-1 gone. That's it. That's the all-out for the Periyar Panthers. They have conceded that one, and the first all-out inflicted by the Palani Tuskers. और पल्ली टस्कर्स ड्रीम टीम की तरह खेली है राधिका। देखिए इस बार भी डिफेंस में पूरी तरह से पेशेंस उन्होंने बरकरार रखा और ये इनके पिछले 2-3 मैचेस में नजर आया है। जरूर अनबीटेबल की स्ट्रीक पर है पर उसके बावजूद ही हर मैच से कुछ और सीख रही है। भगत जरूर एक नई हेयर स्टाइल के साथ यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हल्की सी मॉस्टेक भी उन्होंने अच्छी तरह से बनवाई है। पूरन शेखावत जी ने मॉस्टेक अपनी अच्छी तरह से बनवाई, वो चुलबुल पांडे की तरह। और उनकी बात कर रहे थे पूरन शेखावत जी की, वो भी एक ऑल इंडिया आर्मी प्लेयर है। नवीन और पूरन शेखावत एक बहुत अच्छे कोच हैं। आर्मी की टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, आर्मी के लिए उन्होंने बहुत तैयारी की और उन्होंने यही कहा कि मैंने जब कबड्डी शुरू किया था फ्रेंचाइजी लीग के साथ साथ मेरा सपना था कि आर्मी के लिए खेलूं। मनजीत मित्रा माना उन्हें ऐसे टैकल करने पसंद है फ्रॉम द लेफ्ट कवर, बट जय सूर्या नागराजन के विरुद्ध अगर आप इतने हेस्टी टैकल करेंगे तो ऐसे मुंह छुपाना आपको लगातार पड़ सकता है। Second time he has gone in and did this big fatal error. As a defender, if you are going ahead and tackling the raider outside the block line, you're never going to get that angle. This is the second time that this is going to, in the favor of Palani Tuskers. But yeah, Sardar Chaudhary. Now what can he do? Because the Aage ka rasta for the Periyar Panthers is on the comeback lines for the Raiders. He's been blinded. He's completely been blinded. I think the defender also will probably come out. Right corner. Yeah, Purushothaman Palani, he was running in. He just came in so quickly against Sardar. I think he also goes off. वाओ, पुरुषोत्तम देखिए जिस तरह से वहां पर गए थे, बिल्कुल एक समय पर लॉबी से कांटेक्ट भी उनका छूट गया था और पूरी तरह से बाहर भी चले गए थे वहां पर। तो नवीन एक और ये प्रश्न ये रहेगा कि बहुत सारे खिलाड़ियों को अमूमन हर मैच में, खासकर जब आप द्रविडियन टीम्स की बात करते हैं, यहाँ पर साउथ की टीम की बात करते हैं, ये खिलाड़ियों में हमने अक्सर देखा है, जैसे पिछले मैच में चोला वीरंस से कई खिलाड़ी सेल्फ आउट हुए। यहाँ अच्छी जंप राम कुमार की नजर आएगी और अच्छा पॉइंट वहां पर फिर से अनुज सैनी से ऐसी चूक की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या इसमें करना चाहिए, क्या साथी खिलाड़ियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें बाहर नहीं जाने दें या फिर स्वयं का कंट्रोल वहां पर होता है? See, for all the tackles that has been attempted by the Periyar Panthers today, they have gone in and taken it away from outside the block line. Even this previous tackle, as Manjeet Mitra has to step in for the raiding department because there are no raiders right there. And the ankle hold comes in very strong. Right, Tamilarasan Kalaswamy, he gets his first tackle point. Wonderful ankle hold, even though Manjeet Mitra got that bonus. Look at the way where he actually puts his hand across, and that is the right time the right cover comes in. See, you spoke about how do you coordinate. See, this is the coordination. When you know that the corner defender has to go for the tackle and then the cover comes in. And what was Anuj Saini doing? What was Manjeet Mitra doing? Exactly the opposite. The cover goes in and attacks Manjeet Mitra 2 times outside the block line. And now, even now, right corner, once again the same error. 1 point, Palani Tuskers. बिल्कुल राहुल चौधरी, बिल्कुल जिस प्रकार से पिछले मैच में डिफेंस का सेटअप चोला वीरंस ने अपनी टीम के लिए पहले हाफ में किया था, वैसा ही प्रदर्शन पेरियार पैंथर्स से नजर आ रहा है। और पलनी टस्कर जरूर संजीवी यहाँ पर मैदान पर मौजूद नहीं है, बट इनकी बेंच स्ट्रेंथ इसलिए इतनी अच्छी है ना, और इसलिए अभी तक अनबीटेबल रही है कि जब ये आउट हो जाते हैं इनका रिवाइवल नहीं मिलता है। इस बार राइट कवर पर अटैक किया, रिव्यू की मांग कर रहे हैं, राइट कवर पर टच किया है, प्रॉपर श्योरिटी दर्शाई है गोपाल ने। ये He was very confident about it, and the defender did not agree to it. Sagar Panchal didn't agree to it.
Let's listen what the review is. Stand here. Shut up, TV please. umpire, Periyar Panther challenge is 1 touch point. Our decision, no touch point. Please review. Right. As Sagar Panchal's audio is just having an issue there, but nevertheless, we'll sort this out. Right cover on the knees. Right, is that what it is? Ainathan Ranganathan, has he gone back in time? He's got that stretched knee for a few instants. And also, we'll have to still watch that replay out there. Ram, our EVS operator, will also have to see if Gopal Singh ran into the lobby. If he has ran into the lobby, we'll have to even roll it even more further and see if there is no touch. Ainathan Ranganathan is very, very confident. He comes from Vadur as well, from Tiruvarur, where he is very confident about his Kabaddi game because Soundararajan. And of course, you know what? Both that brother combination that he's got in the team with Ainathan Ranganathan and of course Purushothaman Palanivel. Purushothaman Palanivel, both of them, Ainathan Ranganathan and Purushothaman Palanivel, both come from the same place, you know, of Vadur. Okay. Both come from the same place. And Soundararajan, he's one man who's also gone ahead and helped Divakaran also so many times. He's that one coach who's got a free Kabaddi academy in Vadur. Unsuccessful review. No touch point. We'll have to see if Gopal Singh went into the lobby. We'll have to check that out as well. As the raid will be continued. There was no touch point, but we'll have to see in this replay as well. No touch point. So that is Gopal Singh does not enter the lobby. जी हाँ, वहाँ पर लॉबी में एंट्री नहीं की थी। और आई मीन एक और चीज़ आपने देखी होगी कि इस मुकाबले में और पिछले मुकाबले में जो ऑफिशियल थे, रेफरी जो थे उस मुकाबले के, उन्होंने रिव्यू मांगने गए, यानी कि U2 नहीं गए थे। लोकेश गोसलिया पर किक लगाई थी। ये 7 साल का अनुभव है लोकेश गोसलिया का, और इस बार किक लगाई, दूसरे लेग पर डाइव लगाया, अनसेटल किया, वेट को ट्रांसफर करने से पहले डाइव लगाकर रोका है यहाँ पर राम कुमार को। क्या ये वापसी की गाथा की शुरुआत हो सकती है पेरियार पैंथर्स के लिए? नवीन, Periyar Panthers. Right, Gopal Singh Neck getting holding. that No neck holding. green card. Oh, also, you know what? It's most important that the cover combination comes in at the right time. Lokesh Gosalia went for that double ankle hold, and then Gopal came in for the support. So that's very, very good. Yeah, this can be a little bit of a comeback momentum. But if Gopal keeps on raiding, if he keeps on going ahead with whatever he did and attack the right cover, more back hold. Strong back hold that came in. That was wonderful to see. Tamilarasan Kala Sami. Wow, where was he until now? जी, हमने शुरुआती 7 में भी बात की थी कि ये खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं और अचंभित कर देने वाला प्रदर्शन है। बेफल टैकल था एक तरीके से, पूरी तरह से यहाँ पर बेफल में डाल दिया था, चौंका दिया था रेडर को। उन्हें पता ही नहीं चला कि तमिलावर्सन कहाँ से आए और कैसे वहां पर इन्होंने शानदार कार्य किया। फिर से सुपर टैकल का मौका जरूर होगा पेरियार पैंथर्स के पास। भगत सिंह ने जरूर शुरुआत की थी, अपनी टीम के लिए अच्छा किया था। फुटवर्क देखिए किस प्रकार से है, बट यहाँ लोकेश गोसलिया पर जो टच करने का प्रयास जरूर शायद अच्छी तरह से जयसूर्या और उनके साथी खिलाड़ी के फुटवर्क को दर्शाने के लिए वो एंगल था। नवीन, Yeah, very much. We saw how he takes off from that position. 8 raid points already for Jayasuriya Nagarajan. As the timeout that's been taken Palani Tuskers. by Palani Tuskers. Right. Let's listen to Divakaran and also Puran Shekhawat. எப்படி போயிட்டு இருக்கு? கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கு. நீ மட்டும் தான் மிஸ்டேக் பண்ற. ஏன் அவன் எவ்வளவு ஸ்பீடா அவன் ஆடிட்டு போறான்டா? அவனை எதுக்கு உள்ள கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம் நம்ம? ஆங்கிள் பிடிக்க, கிப் எடுக்க எல்லாம் பண்றானா இல்லையா? நீ ரைட் எவ்வளவு ஸ்பீடா அவனை ஆடிட்டு போட்டு நீ ஏன் ஸ்பீடா ஆடுற? நீ அப்படியே செல்ல மாதிரி நின்னு போதும். Right, okay. So what Divakaran was trying to say was, why have I got that strong left corner? Let him play a speedy game. Why are you trying to go out there and give extra points? He says, let the raider do whatever he wants. Why are you backing up? He's told one of the right flank defenders, because he spoke that Tamilarasan is doing a very, very good job. Just try and let him play what he wants to play. That's what he's told. But in a super tackle situation, the captain of Palani Tuskers, Ram Kumar, I want him to be very sensible, Arshil. He can go back because it's a massive, massive lead. Don't go out there because it's already one super tackle that has already been successful for the Periyar Panthers. Intelligent, but be careful. जी, सेंसिबल, जैसा कि आपने बात कही थी, और तुरंत वहां पर राम कुमार ने सुना और उसे इनिशिएट भी किया। और सरदार चौधरी, बट
ये खिलाड़ी थोड़ा सा समझ के मेरे अभी तक उस प्रकार से आए नहीं कि क्या इनका मेन गेम है। जरूर डू और डाई रेड थी, इसलिए इस बार जल्दी से वहां पर जाकर जल्दी से आए जयसूर्य नागराजन। डू और डाई रेड, भगत राइट कॉर्नर पर होंगे, किक से बचिएगा भगत। अगर आप एंकल होल्ड का प्रयास करें तो जयसूर्या की किक अक्सर आती है। लोकेश गोसलिया पॉक लाइन के आगे से फ्रंटल डबल थाइस पर जाने का प्रयास, पर बहुत अच्छा कार्य किया जयसूर्या ने, एक तरीके से एंटी ब्लॉक किया। Anti-block and also that anti-dash where he pushed off and he actually, you know what, somehow used his momentum to bounce back from Lokesh Gosalia. That's what it looked like. He bounced like a tennis ball and he went in. But this is pressure situation. Sardar Chaudhary, do or die raid. Can the defense be quiet? Divakaran actually suggested that it is going to be a do or die raid. Come on! This is not what Purushottam Palani should be doing in that right corner. Panthers, jersey number 3 out. चलिए वैसे बोनस नहीं मिला है पर वैसे बोनस मिल गया है क्योंकि पुरुषोत्तम ने बहुत ज्यादा आगे आ गए थे। उन्हें लगा था कि सरदार चौधरी जो है वो अब लेफ्ट फ्लैंक की तरफ जाएंगे, तो जैसा मैंने पहले उन्हें डैश किया था, बैक होल्ड किया था, वैसा ही कार्य वहां पर करूंगा। अब चलते हैं यहाँ पर वार्तालाप करते हैं। एम राम कुमार मौजूद है। 3 का हाउस फिर से है, क्या 3 के हाउस में राम कुमार इस बार भगत को किक लगा पाएंगे या फिर अनुज सैनी के विरुद्ध जाएंगे? एक बार फिर से एम्प्टी रेड के साथ वापस, और नवीन ने चुकी शायद वहां पर टॉस जीता था पेरियार पैंथर्स ने, पेरियार पैंथर्स, यानी कि दूसरे हाफ में भी वो पहली रेड पेरियार पैंथर्स की। No, toss was yes Periyar Panthers. So yeah, so if he is going back, if Anuj Saini can go back in this 10 seconds, now he is very confident saying I've got 3 or 4 tackle points, I want to raid. Now that should not be the thing. If they can go back and be very sensible and come back in the second half and raid first, if that is what they want to do, that'll be intelligent. Yeah, that's a nice one. Even though it's a 12-point lead here for the Palani Tuskers, the first raid in the second half, that's why the toss becomes so important. But even speaking about the toss, Harshit, you know what? Only I think 3 or 4 raid points. That's it. I think yes. Yeah, look at this. 5 raid points finally for the Periyar Panthers. I just, you know, vaguely calculated. I was thinking only 4 raid points, but somebody suggests just 5 raid points. In the opposition, you see that 13 raid points. So there is where the big difference is. And exactly, it's a 12-point lead, 13 raid points. So it's the Raiders who have got the Palani Tuskers up ahead. Short break now. As we come back, let's see if the Periyar Panthers' Raiders can bring them back anyhow. Okay, so we are back in the second half, non-stop you up. सभी का पुण्य करते हैं अभिनंदन। पर पहले हाफ की कहानी, जैसा कि हमने मैच की शुरुआत में ही कहा था कि पेरियार पैंथर्स के जो रेडर्स हैं वो क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे पलनी के डिफेंस के विरुद्ध, और वैसा प्रदर्शन नहीं नजर आया है। सरदार ने जरूर शुरुआत अच्छी की थी, गोपाल का वैसा परफॉर्मेंस नहीं नजर आया, बट पलनी टस्कर्स के लिए सबसे अच्छी बात कि हमेशा अक्सर वो कई बार एडवांस टैकल के लिए चली जाती थी। आज उनके डिफेंस ने अपने हॉर्सेस को संभाल कर रखा है, पर पेरियार का डिफेंस खासकर कवर्स ने बहुत सारी चूक की है, जिसके चलते राम कुमार और जयसूर्य नागराजन को बहुत पॉइंट मिले हैं। Very much. And also the only point where the super tackle was inflicted, I think if not for this, the lead would have been even more. So 20 for the Palani Tuskers, and the Raiders are not working out for the Periyar Panthers. That's been their big problem. Now, the first raid of the second half will happen for the Periyar Panthers, and if they don't go out there and get a touch point, then it might not be very nice on their part, as we will get the scoreboard corrected. That's not the correct scoreboard. Right, as Sardar Chaudhary goes in, and look who's there at that right corner. Mukesh Kannan. What is he doing? Mukesh Kannan and Ram Kumar. So that shows how much of a weak in confidence is Sardar Chaudhary. You're putting out 2 Raiders on that right corner flank.
और उसके बावजूद प्रयास न करना। सरदार चौधरी को समझ आया था कि वहाँ पर पुरुषोत्तम नहीं है, तो जाकर उन्हें अटैक करना चाहिए था, क्योंकि सुपर टैकल का मौका भी था, क्योंकि टॉस में कोई फायदा हुआ नहीं ना, आपको लगातार 2 रेड करने का मौका मिला। जयसूर्य नागराजन अब फायदा उठाना चाहेंगे, 3 का हाउस है, क्या अनुज सैनी की तरफ जाएंगे या फिर भगत की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। एम्प्टी रेड आपको नजर आई है, पर पहले 2 और डायरेक्ट पेरियार पैंथर्स की आएगी, उन्हें समझना होगा। और अब सरदार, जो पिछली बार गलती हुई थी, अनुज सैनी क्यों ये गए हैं रेड के लिए। पिछले मैच में जरूर ये बेस्ट रेडर साबित हुए थे अपनी टीम के लिए, पर ये मजाक का गेम नहीं है नवीन, ये पलनी टस्कर्स का डिफेंस है। इस बार बोनस का हल्का सा प्रयास, बट यहाँ पर एम्प्टी हैंडेडली वापस आएंगे। प्रेशर अगली रेड में सरदार पर होगा। Right, hang on. Anuj Saini, best raider, what? 5 raid points? That's all, right? Yeah, only. Yeah, so that he should understand that it was not what the real Yuva Kabaddi series competition is all about. Now, if they want to continue with this 3 defenders here, now Ram Kumar, he has to try out, because if not, the next raid would have been a 2-order raid for Palani Tuskers, but they wanted to inflict that super tackle. It's a second one that has been inflicted. So good that Ram Kumar tried in this raid, but Anuj Saini, he's got 2 points. अमेजिंग। और इस बार डायरेक्शन जो थी जयसूर्य नागराजन की, वो लॉबी की, राम कुमार की क्षमा कीजिएगा, वो लॉबी की तरफ थी, तो उन्होंने दोनों एंकल्स पर गए, जंप करने की कोशिश की भगत, और डायरेक्शन में बदलाव किया सरदार चौधरी के साथ। तो ये सेकेंड सुपर टैकल यहाँ पर पूरी तरह से अपने पक्ष में गया, बट मंजीत का रिवाइवल आया है। क्या मंजीत एज ए रेडर इस बार अपने क्रम को दिखला पाएंगे? नंबर 55 जंप लगी, बट गलत डायरेक्शन में, फिर से लॉबी की तरफ थी। जरूर पूरन शेखावत किसी चीज की मांग कर रहे हैं। Yeah, he's saying jersey pulling. Puran Shekhawat should stop complaining and be a, very good sportsman. See, again, I understand there was a slight number 11, green card. tackle Neck that holding, happened, no neck holding. where neck holding, Raki says. So, Puran Shekhawat, we've seen him. He always keeps complaining of either the substitution, either the jersey pull. Now, I understand. See, as a coach, you have to do all that, but these referees, they are not in Busan. They are not in South Korea. Harshit, you understand what I'm talking about? Absolutely. No, I'm sure. See, even they have their experience in the Asian Championship that is happening. But I've been seeing a few live matches of India being the table toppers, the top runners, the dominant team. Today against Iran, that was a very close match in the morning. Me, Ashwin, Aparna, we were all sitting together and watching that match with a lot of tense moments, because Mohammad Maqsoodlu was doing very good for Iran. And that was a very tough and close match. But there, the referees were, kind of holding themselves back. And the Indian players had to go out there and say, no, this is the touch. No, we got this point. All that was happening. But see, again, even they are learning. They are also making sure that they get the trick of the trade, trick of Kabaddi very nicely as Mukesh Kandan comes in. But I am really happy with our Indian national team doing so very well in the Asian Championship that is happening. They are on top of the table, and come Sunday, I'm sure it's going to be India-Iran again in the finals, because the top 2 of that round robin, it's a single round robin, top 2 teams will play the finals. I'm sure Sunday is the one, as we listen to Divakaran. முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியே வர ட்ரை பண்ணு, புரியுதா இல்லையா? அவன்கிட்ட ஓடாத, 2 பேருமே சேமா டை ஹோல்ட் எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இவன் கிட்ட போய் சும்மா பேக் அடிச்சுக்கலாம், கிக் பண்ணா ஒரே கிக் பளிச்சுன்னு அடிச்சிட்டு உள்ள வா. அவன் அவுட் ஆயிட்டாலும் 5 பேர் டிஃபென்ஸ் கான்ஃபிடென்ட்டா. Okay, you know what he says? He very clearly, Divakaran said, go out there. If he goes ahead and gives you a feel of going for the bonus, attack him. That's what he said. Any raider coming in, and then this is a little bit of a trickiness what Jayasuriya now has to go ahead, because already 2 tackle points, Arshit. And now, if he gets in the wrong notion, I was about to say, if he gets tackled out, that was not the way, but Anuj 1 point, Palani Tuskers. Jersey पिछली number बार 7 सुपर out. टैकल अच्छा बनाया था, बट इस बार बहुत दूर से देखिए, बहुत दूर से टाइप करने चले गए थे, और जयसूर्य नागराजन की जो तिरछी आंख थी वो Palani Tuskers. अनुज सैनी पर थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अनुज सैनी वहां पर टाइप लगा सकते हैं, वो परफेक्ट राइट कॉर्नर के खिलाड़ी हैं। बट नवीन, एक और बहुत इंप्रेसिव बात जो मुझे लगती है, दिवाकरन साहब की टोन देखिए, बहुत போன काम है। மிஸ்டேக் இந்த வாட்டி பண்ண கூடாது. நல்ல போனஸா அலோவ் பண்ணு. 2 பேத்துல ஆடுறதுக்கு 3 அஃபென்ஸ்மே நம்ம கிட்ட சாலிடா 2 பேத்துல ஆடுவாங்க. அப்ப நல்லா ட்ரை பண்ண விட்டு டச் கொடுக்காம நல்ல போனஸா அலோவ் பண்ணுங்க, புரியுதா? டிஃபென்ஸ்ல போய் Okay, he says armiya bonus allow pannunga, that's all. So give them the bonus, it's okay, don't give the touch point. That's all he's told. Can the defense understand what Divakaran has said, and can they do it?
Sardar Chaudhary, he's looked very, very weak in this match at all. No raid points yet for Sardar Chaudhary. He was very good. I think 3 raid points. Yes, he's got 3, but he's not looked as if that he is coming in with that a lot of confidence and experience, because he's got that Super 10 before this match. But now in a do-or-die raid, pressure getting onto him. 6 seconds, 5 seconds, gone, dashed off. Wonderful. That's what Ajay Mutaya is known for, that left cover. Beautiful dash. जी हाँ, नवीन और सरदार चौधरी एक ऐसे रेडर हैं जो डिफेंडर्स को अपनी तरफ आने का ज्यादा मौका देते हैं, स्वयं अपने हैंड टचेस कम दिखलाते हैं, किक्स कम दिखलाते हैं। इस बार वही हुआ, लेफ्ट फ्लैंक से एक अच्छा अटैक आया और कॉम्बिनेशन में आया और सरदार को भी वहां पर बाहर जाना पड़ा है। और राम कुमार जयसूर्य नागराजन दोनों चर्चा कर रहे थे कि कौन जाए, तुरंत वहां पर गए राम कुमार और एक टच पॉइंट प्राप्त किया। और ऑल आउट यहाँ पर कौन हो जाएंगी? पेरियार पैंथर्स, लोकेश गोसलिया, अनुज सैनी डिफेंडर्स के क्रम में बहुत ऊपर है, बट नवीन पेरियार पैंथर्स के लिए रेड पॉइंट्स ऑलरेडी हम बात कर चुके इसके बारे में। गोपाल सिंह एक बार बाहर जाते हैं तो सीधा ऑल आउट के बाद इनका रिवाइवल होता है। Yeah, that has been their problem, because of course, you know what, in that all out you spoke about whether Ram Kumar had to go or Jayasuriya Nagarajan. Captain said, hang on Jayasuriya, you've got your Super 10. Jayasuriya Nagarajan has scored his Super 10, so Ram Kumar said, let me also get 1 point. Let me go ahead and make that happen, as Gopal Singh, he goes back empty-handed. 0 raid points for Gopal Singh today. We spoke about him in the pre-show, and we said who can stop him. Ajay Mutaya, yeah, he can go ahead and stop him is what we were thinking about, but I don't understand why Gopal Singh has not gone ahead and got a single raid point yet. जी नवीन, तो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरियार पैंथर्स एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेडर को कहीं ना कहीं मिस कर रही है अपने स्क्वाड में। जरूर आपको सरदार चौधरी वहां पर नजर आते हैं, बट वो उतने अजाइल और उतने स्विफ्ट नहीं है। और गोपाल सिंह एज अ सेकंड रेडर मुझे लगता है बहुत ही अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर आपने अगर एज अ मेन रेडर बहुत ज्यादा भूमिकाएं दे दी है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आ रहे हैं। इससे पिछले एडिशन में वो ज्यादा फ्रजाइल नहीं थे, बट यहाँ लीजिए लेफ्ट कॉर्नर, एक बार फिर से तमिल रसन ने कहा कि बहुत समय बाद मेरी तरफ कोई रेडर आया है, तो लीजिए टैकल आ जाएगा। Wow, third tackle point. And look at that follow-through action, what he's got. First, he takes away only the shoulder. He does not take away his hands. As that corner defender, you need to have that. Now, Sardar, Sagar and everybody will get along to see if there is each 1 point. Yeah, Sagar Panchal, he said each 1 point. Who actually went out? We'll have to check that out again on that replay. मुकेश कन्नन कंटेंशन में नजर आ रहे हैं। Right. What was Mukesh Kannan doing? I'll tell you what. If you listen to this, Arshit, you might be really shocked. The one naughty boy of the whole Periyar of the Palani Tuskers is Mukesh Kannan. Yeah. Total silent and naughty boy. Yeah, he actually got that connection off the lobby. No, Palani Tuskers. Don't go for the review after the conference of the referees. Palani Tusker challenge is raider out. Our decision, 1 point each. Please review. हाँ, यहाँ रिव्यू नवीन जरूर, क्योंकि उनका जो लेफ्ट लेग था वो यहाँ पर पूरी तरह से समझ आया। देखिए कहाँ खड़े हैं पहले हम आपको बता देते हैं। राइट कवर पर वो मौजूद है। यहाँ एक अच्छा एंकल होल्ड आया, नंबर 55 जर्सी डैश करने बिल्कुल गए, सही था। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, एक जो लेग था मुकेश कन्नन का वो आउट ऑफ द लॉबी है, और यहाँ आप वो अपने लेफ्ट लेग को थोड़ी देर के पश्चात ऊपर करेंगे। यहाँ वो कंटेंशन पूरी तरह से टूट चुका था लॉबी से। And I think he was trying to take a bonus point in the lobby. That's what it looked like. Mukesh Kannan, see, look at that. He goes in completely outside and lifts off his left leg. But just before this, now I'll tell you something. Palani Tuskers, have they hit the hammer on their own leg? Because it looked like there was a bonus point. It looked like it was a bonus point. If we can actually look at that on that first attempt of Gopal Singh on the bonus, it very clearly looked like as if they have got that bonus point as well. So Rambir Singh, the TV umpire, will go out there and actually check if the bonus point has been given away. It almost looked like it. Before the ankle hold came in, I was speaking about that follow-through action where, you know, the right shoulder of Tamilarasan actually went ahead, and then his, his hands and palms were in the right place for the ankle hold. During that time, I just felt there was a bonus point. जी हाँ, हो सकता है जरूर रामबीर साहब इसे चेक करेंगे क्या वो बोनस था। गोपाल सिंह जरूर यहाँ पर पलनी टस्कर्स रिव्यू अपना गंवाने वाली है, और क्या पेरियार पैंथर्स को उसका फायदा हो सकता है कि गोपाल सिंह अपना खाता खोल देंगे आज, जैसा आपने बताया है नवीन। खाता अभी तक उनका खुला नहीं है, पर हम बात कर रहे थे बिल्कुल पलनी टस्कर्स की, तो मुकेश कन्नन के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ सागर पंचाल को इंडिकेशन आ रहा है 55 ओ 55 वो 55 भी क्या पार गए थे। ये नाथन रेंगाथान रिव्यू अनसक्सेसफुल, 2 points
Periyar Oh, Panthers. review. Red out Right. 1 point. यानी कि Palani दो Tuskers. खिलाड़ी लॉबी का कनेक्शन उन्होंने तोड़ दिया था। यहाँ पर अय्यन नाथन को भी बाहर भेजा गया है, मुकेश कन्नन को भी, यानी कि राइट कवर और मिडल के खिलाड़ी। एक बार फिर से इसे रिप्ले में हम चेक करेंगे। Now, will the review be retained? Is the question. The question is, going out there and they have lost that review as well. So 2 points given away and no bonus. Right, interesting. But nevertheless, Jayasuriya Nagarajan can change off everything that was actually going ahead, and it was just a little bit of confusing on that review. And he just goes back empty-handed. Actually, only 8 points in the first half and then 4 points in the second half as of now for the Periyar Panthers. जी हाँ, पेरियार पैंथर्स अभी भी वो गाड़ी जो है ना वो 5वें गियर में आई नहीं है, पहले दूसरे तीसरे गियर में यहाँ पर चल रही है। और खासकर रेडर्स, नवीन, क्योंकि जब इतनी बड़ी लीड होती है ना विपक्षी टीम के पास, तो आपके रेडर्स आपको कमबैक कराते हैं। डिफेंस में सिर्फ आप मैक्सिमम 1 पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। जुआ डायरेक्ट है, रामकुमार के जरूर यहाँ पर क्या परीक्षा ले पाएगा। यहाँ पर फ्रजाइल डिफेंस आज नजर आया पेरियार पैंथर्स का। लोकेश गोसले की तरफ से पहले बोनस का प्रयास किया है, क्या बोनस पर सेटल हो सकते हैं? क्या वो इनफली वहां पर उन्होंने बोनस प्राप्त किया था? अनुज सैनी के ऊपर से जंप लगी। नवीन, फिर से वो जो जंप की डायरेक्शन थी वो लॉबी की तरफ थी और अनुज सैनी का एक अच्छा कैच वहां पर। Yeah, he was ready for that, isn't it? He was expecting there. He could press on that and jump over him. Strategic timeout. As we have that strategic timeout, Ramkumar just going out on that do-or-die raid. Let's listen to Puran Shekhawat. It's a long time that we haven't heard about him. हाँ, मेरी बात सुनना आराम से। मंजीत है, 2 नंबर पर खेलना। पहले है ना 2-3 बार इधर उधर भगा। पहला अटैक में मत ले, इधर उधर भगा, पागल कर। छोटे सुने बात तो सुनो। अनुज है, ओए मंजीत, एक बार ये काम करना, अगला कॉर्नर भाजा ही भाजेगा, सेकंड पे अटैक कर ले एक बार, मान के बाद मान सकता तो अटैक जब है, ठीक है ना? He wants to attack right corner. यार है कोई सुने, What is Divakaran saying? मंजीत 1 नंबर पे मत खेलना। Let's listen to Divakaran. 1 नंबर पे मत खेलना। அவன் செய்ய வச்சு டச் வாங்காம குடிக்க கூடாது. லாபி கட் பண்ண கூட கொஞ்ச நேரம் அவாய்ட் பண்ணு. நல்ல டச் வாங்கிட்டு புடி. நீ புடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வருவான். நீ புடிச்சு போனா போதும். இங்க பா, லோனா உடைஞ்சாலும் எப்படி இருக்கணும்? 1 by 1 தான் போகணும். அவசரப்படக்கூடாது. புரியுதல? 1 பண்ணா கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுங்க கேம். This is intelligent. Wow. Divakaran, what he actually said that in Tamil was, even if you have been attacked by the raider, that's okay. It's okay. You go for it. Even if there is a touch, and then go for the ankle hold. Exactly. Picture perfect of what Divakaran said. That is what Tamil Arasan has done. After the raider has touched him, he's gone for the ankle hold. Harshit, obeying your guru with so much precision, that is why they are at the top of the table. जी हाँ, रिजल्ट, इसीलिए रिजल्ट वहां पर इंपैक्टफुल रहे। बट मंजीत ने बिल्कुल उसके अपोजिट किया। उन्होंने कहा था कि थोड़ा भजाना पहले, यानी कि अनसेटल करने की कोशिश करना। तो सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस आज मंजीत और पेरियार पैंथर्स से नजर नहीं आया और गुरु की बात उन्होंने नहीं मानी, तो उसका जो निष्कर्ष था वो उनके अपोजिट गया है। और मंजीत को कहा था थोड़ा सा अनसेटल करना पहले। हाँ, and I think Puran also said, पहले पे मत खेल। You know, he said he wanted to come back on that first raid. And Puran Shekhawat's point was not being taken, and Jayasuriya Nagarajan has kicked Anuj Seni. Can Periyar Panthers go for the review now? Palani Tuskers have lost their review. They've got this point though. अनुज सैनी बाहर जाते हुए, सरदार चौधरी अब रेड पर हैं। बट फिर से हम वही बात पर आते हैं कि देखिए, डिफेंस में आप एक अंक प्राप्त कर सकते हैं। रेडर्स आज पूरी तरह से यहाँ पर वो कार्य नहीं कर पाए हैं। सरदार चौधरी देखिए यहीं खेलेंगे, वो ऐसे अटैक करने चाहिए और अटैक पूरा बहुत कम करने जाते हैं। यहीं वो अधिकतर खेलते हैं और बॉक लाइन के ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, सिर्फ इसका इंतजार करते हैं वो कि कोई खिलाड़ी उन पर अटैक करने आए तो वो अपनी एस्केपिंग स्किल दर्शाएं। बट अटैकिंग स्किल कितनी जरूरी है नवीन एज ए रेडर आप में? Yeah, very much. Now I'll tell you what. You speak about attacking. This lad, Mukesh Kannan. We've spoken about him so much, even in Puducherry. We've spoken about him even here. Oh, turns the pages around. Actually just hitting him one on the neck. 1 point. And he actually made Divakaran happy about that. ये देखिएगा यहाँ पर इनके खिलाड़ी भगत आए और मुझे तो लगा था कि अगर वो हाथ नहीं भी लगाते तो भी भगत स्वयं उन्हें क्रॉस करके चले जाते। बहुत स्पीड से आए, उन्होंने रेडर पर ध्यान नहीं था, ओवर तेजी कर गए वहां पर। You know what? Bhagat has saw. Oh my God! Right cover goes ahead with a nice tie hold. 1 point. As Ashwin enjoys the proceedings as well. And you know what? I think Bhagat in that previous raid, he's seen Mukesh Kannan and thought that, okay, is this face going to get a point against me? That is why he was dodged. Don't get fooled by that naughty face. I'll tell you what,
You know what they call him in the team? They call him Mask Mukesh. Wow. Because that mask, whatever he wears of being innocent, being nice and goody-goody is not a fact. He is the naughtiest of the all. He's the naughtiest lad in the entire team. जी और नवीन साथ ही साथ बिल्कुल आपने सही कहा और नॉटीएस्ट है मास्क उनका है पर संजीवी से जब हम ऐसे वार्तालाप कर रहे थे उनसे पूछा संजीवी कि आप और मुकेश कन्नन में से आपको ज्यादा स्मार्ट कौन लगता है तो वहां पर मुकेश कन्नन का उनका नाम लिया था सरदार चौधरी लीजिए मुकेश ने शायद टैकल को इनिशिएट किया और मुकेश के टैकल से बचने के पश्चात पूरी टीम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ आई और सरदार का विकल्प नहीं Strong. You know what was that attack called? He's standing in that right cover position, Mukesh Kannan. And he just surprisingly strong ankle hold was being attempted on Sardar Chaudhary. And he's struggling, Archit. The reason why he's lost a lot of pace, Sardar Chaudhary, is because of that injury. That one injury that he picked up in the previous seasons, I think he's not completely come out of it at all. And he's also, I think, put on a little bit of a weight because of that recovery, because of all that rest and medicines being taken off. Is that the third super tackle? Is that the third or the fourth? Wow! Lokesh Gosalia this time. Super tackle, 2 या ये points. वही Periyar लीथल Panthers. लोकेश घोसलिया हैं जिन्हें हम जानते हैं लाजवाब दोनों थाइस पर गए ग्रिप बहुत अच्छी थी और जैसे एक शेर यहाँ पर शिकार की तरफ कूदता है वैसे जानते थे और जो फॉलो थ्रू की आप बात करते हैं नवीन इस बार फॉलो थ्रू को देखिएगा पूरी तरह से उन्होंने एंकल को भी कट करने की कोशिश की कि रेडर को कोई मौका जम का नहीं मिले अब मंजीत गए हैं क्या मंजीत थोड़ा सा कह रहे थे कि काश मैं बचपन में थोड़ा सा और दूध पीता कि मेरी हाइट और बढ़ जाती Palani Tuskers. Yeah, the lack of the height. Good turn, nevertheless, with the anti-block and the turn towards the lobby. Lack in the height. That is what cost Let her Manjeet. wait, please. But very good skill. Right. I'll tell you what, it was a very, very good skill from Manjeet Mitra. But the defense, with that combination of the dash that came in, that is what done him in. But Jayasuriya Nagarajan, wonderful work. And of course, his father will be really, really happy. The policeman who's got that SI promotion. Yeah, he will be celebrating tonight for sure. And that was not needed at all. 3 super tackles were successful Redder for the said, Periyar Panthers. 1 point, And this Palani time Lokesh Tuskers. Gosalia Jersey number does 9 not do out. what he did previously. जी हाँ लोकेश घोसलिया इस बात है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के चेहरे पर भी नजर आएगा Substitution, कि कितनी बार आप Periyar सेम Panthers. सिचुएशन में होंगे कितनी बार अपनी टीम को वहां से 76 निकालेंगे out. पर जयसूर्या नागराजन ने Right. कहा कि चलिए ये मैं एक और बार वहां पर पॉइंट लेकर आऊंगा और नवीन ने जयसूर्या के बारे में आप बात कर रहे थे तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो पिताजी हैं ऐसा ही है वो कहाँ पर हैं Oh, absolutely. He's still in the police department as well. At that very, very important Tiruchi place. As Nakul Saini, this is the substitution that had to come a long, long time back. And they have, I think, gone in with this substitution very, very lately. This is what the problem is. It's a very late substitution. They've given the bonus away. And that's it. He says, enough is enough. Let me get my Bonus high point, five. Periyar Tamil Panthers. Arasan. 1 Jet plus 2, Pasupati 3 is happy. point, Palani And Tuskers. next to him is the All boxing out, champion Periyar sitting out there. Panthers. Manikandan Subramani as well. So that's a high five. That's a very good All one. in. चेक बहुत अच्छा हाई फाई आज इसी सबसे खिलाड़ी नुकसान पर यहाँ पर पल्ली जिम्मेदारी थी तो बहुत अच्छा बदलाव किया आज पल्ली टस्कर ने तमीर हसन को वहां पर 55 मौका दिया out. और उन्होंने आते ही क्या 36 हाई फाई बनाया है क्या 10 लेफ्ट out. कॉर्नर से वहां पर डाइव लगाई है Red. और पल्ली टस्कर्स की भी रिचुअल रहा है कि Red. जब मुकाबला वो आसानी से जीत रहे होते हैं अंतिम मिनट में अपने अधिकतम खिलाड़ियों को मैट के बाहर बुला लेते हैं क्या विपक्षियों के लिए शायद ये भी एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन रहती होगी कि आपने 39 मतलब अब तो चलिए 29 मिनट आपने किसी और टीम के साथ खिलाया अब किसी और टीम के साथ खिला रहे हैं बट 1 गन point, ब्लेजिंग Palani ऑल Tuskers. राउंड Jersey number दिनेश 4 out. जिनके बारे में हम इतना नहीं जानते थे दिनेश ने कहा रुकिए रुकिए Periyar देखिए Panthers, please. Wow. Two Dinesh Ganapati against 17 out. Manjeet Mitra. Small little 11 anti-block, and then 55 turned out. towards the lobby, the right radar. Wonderful work. Red. Manjeet Mitra did not understand what to do. And that bench is getting stronger and stronger. And Anuj Saini is going to raid because there are no raiders. और नितिन कुमार अंदर आए हैं नितिन कुमार को अंदर बुलाया गया है जरूर इनका भी थोड़ा सा इंजरी प्रोन है 2 बार इंजर्ड थे एक बार पहले भी जब युवा में आए थे वहां पर इंजर्ड हो गए थे बट अब इनका जो सपना है युवा साकार कर सकता है बट इन्हें लगातार अच्छा खेलना होगा अनुज सैनी रेड के लिए है तो नवीन आप अक्सर वो डायलॉग कहा करते थे और जरूर इस बार हम उस डायलॉग को मिस कर रहे हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ऐसा कुछ करके वो डायलॉग था और आप हर तरफ नहीं देख सकते हैं अनुज यू आर अ ग्रेट डिफेंडर और अपनी टीम को वहां पर अच्छी तरह से लीड करना होगा आपको Now you speak about Anuj Saini. What is Lokesh Gosalia doing? Against Redder Dinesh. said, 1 Given point, away 2 Palani easy Tuskers. points. Jersey number 9 out. Dinesh Ganapati's confidence is skyrocketing because of Tivakaran's right time inclusion. But I wanted Match over. Nakul Saini to come in a much earlier time.
That is, I think, the end of the match. Right. And only 8 points in the second half for the Periyar Panthers. They were 8 to finish the first half. They were 8 to finish in the second half. So 16 points, that's it. Another big victory for the undefeated super players of Palani Tuskers. Once again, they go out there and pocket a big match. And that to look at that difference of victory as well. I'm sure they have gone up on that points table, beating the Nilgiri Knights. जी हाँ, पलनी टस्कर्स एक बार पुनः बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दर्शाया। पेरियार पैंथर्स, हमें लगा था कि क्या गोपाल सिंह को कौन रोक पाएगा, इसके बारे में चर्चा थी, पर तमिलनाडु ने कहा कि रुकिए एक बार फिर से इस नाम पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए। आज हाई-फाई बनाया अपनी टीम के लिए, अच्छा किया। राम कुमार, जय सूर्या और इन के साथी यहाँ पर मुकेश कन्नन हो या फिर और खिलाड़ी हो, उन सबने मिलकर बहुत अच्छा किया। और नवीन, जो पलनी टस्कर्स की सबसे बड़ी ट्रिक है ना, वो ये है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग वो अपने अपोनेंट्स को पूरी तरह से बैकफुट पर कर देती है, यानी कि इतनी लंबी लीड ले लेती हैं कि वो पूरा मैच उस लीड को कंसोलिडेट करने के लिए खेलती रहती है पलनी टस्कर्स। The only problem there was how can you go out there and get that deficit back? Because I've always told this, Arshit, if you're trailing, only your raiders can bring you back into the game. And when the raiders are not around, that has been the big problem for the Periyar Panthers, and they've been struggling. And when Gopal Singh is being tackled out like that, especially in the covers and corners, and look at that. I was speaking about the man who always wears the mask of innocence, Mask Mukesh, that's what they're calling him as well. Very lovely, very friendly guy, but he can be very deceptive. You just do not want to get bogged down with that innocent face that he's got. He's naughty, but he's also very good in Kabaddi. That's what we want. Look at this, Arshit. What? You saw what? 5 raid points in the first half? Only 1 raid point in the second half. That's it. Over. No. Done. And almost there were, 16 raid points. I think 13 raid points for the Palani Tuskers in the first half. And look at that. 7 raid points in the second half. That has been the big problem. I've said defense wins you matches. And also if you don't have a proper attack, you'll also lose that. 5 raid points in the first half. Only 1 raid point in the second half. Is this the real Periyar Panthers with that combination of defense that we've seen always? और 3 सुपर टैकल को अगर आप छोड़ दे तो उसके अलावा सिर्फ 1 टैकल पॉइंट वहां पर था और 3 अतिरिक्त पॉइंट भी थे वहां पर। जय सूर्या नागराजन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 12 रेड पॉइंट प्राप्त की, सुपर रेड जिसमें एक शुमार थी। स्ट्राइक रेट देखिए 92%, यानी कि ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन और शानदार के साथ साथ सेंसिबल प्लस स्मार्ट। And he also made sure, the reason why you're saying smart is because I think he's gone in and put out those empty raids when needed. But look at this, Tamilarasan Kalaswamy comes in, 100% tackle strike rate. Very good. And this is the first time that he's got his high-five as well. And as I said, Palani Tuskers jump up above the Nilgiri Knights. And also look at that difference, points per match, Ashit, because of that big victory. And of course, they've got all those, 5 points out of this match. So no problem at all. And Palani Tuskers comes back to the points table where they really started off and belonged the entire survival round. And Nilgiri Knights, yeah, that's a big competition as well. And look at them. The top 2 have played the less number of games. That's it. Everybody has played 5 matches, apart from, of course, Sinsonics and the bottom. The top 2 have played the less number of matches. And of course, Nilgiri Knights, do you think they have a chance to go up on that points table against Aravalli Arrows? I think no, Naveen, क्योंकि नीलगिरी नाइट्स ने एक मुकाबला वहां पर कम जीता है, बट अरावली एरोज उनके समक्ष अच्छा मौका होगा, अच्छे मुकाबले की उम्मीद करते हैं। बट नॉन स्टॉप युवा में अगला पड़ाव कौन सा है, 7 बजे हम आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे लाइव फ्रॉम मैसूर। तब तक के लिए अगर हल्का सा कुछ जाकर खा के आना है तो आइए। नहीं, हल्का सा नहीं, आप बहुत ज्यादा खा के आओ, because I am saying Nilgiri Knights. Let's see, Harshit, you are saying Aravalli Arrows. Let's see what's going to happen. 10 Madhur Vadas on the challenge. Absolutely yes. See you soon at 7 p.m. guys.
Welcome to Non-Stop Yuva, where we are running with this Kabaddi non-stop entertainment. Match number 56, and we have the Nilgiri Knights versus the Aravalli Arrows. As we promised you, we are coming in with 5 p.m. to 8 p.m. matches, and that is coming to you live and exclusive on Fan Code from the Chamundi Vihar Indoor Stadium here in Mysore. I'm Navin Shori, alongside with me, of course, will be Ryan, but let's go to Harshit first to bring on Nilgiri Knights and Aravalli Arrows on the mat. जी समय है अब तीसरे पड़ाव का हैशटैग नॉनस्टॉप युवा। अब ऐसी टीम्स यहां आप सभी को भिड़ते हुए नजर आएंगी जिन पे है दावेदारी जीत जीत और जीत की। चलिए, थोड़ी देर पहले इस टीम के खिलाड़ी हमारे साथ गुफ्तगू करते नजर आ रहे थे, पर अब समय है सीरियस बैटल का। लेट्स इनवाइट द राजस्थानी अरावली एरोज। Thank you so much, Harshit. And don't forget what you have challenged and gone back after the previous match that was getting over in the favor of Palani Tuskers. You said Aravalli Arrows will win this. I am watching in for the Nilgiri match. Let's see. It's not a very right thing to speak about that at the beginning of the match, but nevertheless, the best team will win is what we want to put it across as. And Harshit is stop being politically right. That's what I love about him in this, especially in this summer edition of the 2023. As we have another very strong team, Nilgiri Knights. They really want to go up on that points table and beat the Palani Tuskers, because right now Palani Tuskers have snatched away that first point from them, as Velavan Muruganandan and Santosh Srinivasan will be in the corners. Sundar Vishwakandan and Surya Selvam will be raiding in with Marumuthu Selvam, where he's got the captaincy today, and the Manigandan factor in the covers. Sudalmani and Nesamani, both Manigandans in the covers, as Balaganapati Manigandan will be in the substitution lines. Kesavan Raja, K. Harish misses out, right? He's not playing. I think he's got an injury. And Elimalai Murthy will be there in the substitution lines. And Ajayananda Krishna will also be there alongside with Karnan, the coach. And along with me is Ryan this evening. Good evening, Ryan. I think Ryan will join us very soon, as Aravalli Arrows is in front of us. Right, as Rajendra Bhakkar and Ankit Jat in the corners, and Jaswant Yadav and Brijpal Singh will be raiding in with Navpreet Singh. That's what I look like, because Prem Badu, the captain, with Dev Gurjar in the covers, will be, of course, being very, very clear as a defender as well. He's not going to raid today is what I'm expecting, as Kanaram Bana and Praveen Kumar will be in the substitution lines with Rajesh Gurjar, the coach. Gagan Glorious Gowda, watch that, as Durgesh Kumar had snatched away that first place today against that Chola Veerans side, where he got that Super 10. 11 matches, 112. Wonderful for the glorious raider. And Jay Surya Nagarajan comes in with his Super 10 in this previous match. The Palani Tuskers' premium raider is coming in, 9 matches, 79 for him as well. So the top 3 defenders, I'm very interested to see this. Where are the cover defenders now? Ankit Jat and Lokesh Gosalia actually maintaining that top 2 as the corner defenders. But then Prem Badu is that one cover defender right there. So good that the Aravalli Arrows have got 2 defenders in their lineup in the top 3 defenders list, as Ankit Jat and Prem Badu will be managing that top 3 names as well. As a coin was flipped over from Akshay Desai. We'll have to see who gets that. It's the Nilgiri Knights. Right. Interesting. Very interesting. Marimuthu Selvam was watching at his coach or the bench probably. He got that toss, and the first raid will happen from the Aravalli Arrows. And Ryan, I think, is now joining us. Good evening, Ryan. Good evening, Naveen, and yes, I get to introduce Marimuthu Selvam, who's the player to watch out for in this match for the Nilgiri Knights. 12 matches, 58 raid points coming across those 12 games, and that impressive raid strike rate of 53.7. He, along with his other 2 raiders, will be very good to watch out for in this game.
But extra responsibility for Marimuthu Selvam as a captain also today. But Sundar Vishwakannan and Surya will of course help them out. But this lad, Brijpal Singh, is very quick, he's very speedy, he's very pacey as well as that left raider. But he will have to watch out for the Nesamani and the Sudalamani cover combination, because when they start to go, they will not stop. That has been their biggest asset for the Manikandan cover combination. But for the Nilgiri Knights, just 2 losses. And that's the reason they are at the top second of the points table of the Summer Edition 2023 here at the Yuva Kabaddi series. Ran, Harshit has picked Aravalli Arrows. Do you want to pick a side? I'm going to go with the Nilgiri Knights. No, I'm going to go with the Nilgiri Knights because they've been the team that's shown consistency. I've seen the Aravalli Arrows also put out good kabaddi, but they've made a few wrong decisions. Whereas I look at this man, this coach, he's a man with a plan, and I'm going to follow Mr. Karnan, the man with a plan. Man with a plan, yeah. He's a man on fire. He's a, there's a song in Master movie, where Vijay's collar tune that became very, very famous is a man on a mission. That's what the song is always as. It's an English song, basically it's an English rap song. So yeah, Ryan, you've been listening to some Tamil songs in English maybe? As Aravalli Arrows have got that one tie. 6 losses, 6 victories. And that is why they are actually reeling to try and go up in that points table. And Aravalli Arrows will have a tough fight against a man with a plan, a man on a mission, is Mr. Karnan and his team, the Nilgiri Knights. So, as we have set up this wonderful stage at hashtag non-stop Yuva, and of course Rajesh Gurjar. Why is he so worried? Why is he thinking so much, so deeply? The manager, can he allow him to think? And even that grin on that forehead that becomes even more with the wrinkles getting around so closely. Ryan, I think, is deeply thinking of how can he go ahead and await this challenge that's coming in from Nilgiri Knights. Right, so we are all set for going in with that jib angle, and we are all set for that to zoom out, and we will go for the countdown as the overly worked director of the PCR, Mr. Deva, will get to the countdown as well. The toss was won by the Nilgiri Knights, and Marimuthu Selvam, I think he is captaining for the first time. He did not know that he had actually won the toss. So the first raid will happen from the Aravalli Arrows, as I think Brijpal Singh is ready to run in from that left flank. Karnan, yeah, he met up with me in that lunch table today. He said, see, we have been thinking and wondering who is that man or that voice or the guy who always keeps translating our secrets from Tamil to English. Who is that man? That's what he was asking me in that lunch, and then said, yeah, this is me. This is me. I am that guy who actually went ahead and told all that secrets from Tamil to English as well. Ryan, I think this is a nice way of getting into the coach's book. Whether good or bad, I don't know. I've got into his book. Yeah, that's a nice thing to do. I've often noticed that in the city of Bangalore, be it any sport, for example, here in Bangalore, a lot of them speak English, and all of a sudden you'd find that combination of 2 to 3 players from Tamil Nadu or from Kerala speaking in their regional language, and they often communicate like that. And at the same time, the opposition will have a player who can actually understand that language, and he would call out those strategies. So that's often a fun thing in the game of sport. Yeah, absolutely. But tell me something. In which part of the map is not there now, Ryan? Bangalore is long gone. It's not Bangalore anymore. What is it called, Ryan? Yeah. As a toe touch from Surya Selvam, he's claiming it on that right cover. And I don't really appreciate what Dev Gurjar was showing the hands for. That's a lovely toe touch. They've agreed to it. Ryan, there's nothing called Bangalore anymore. Please come. Yes, it's Bengaluru. Apologies. Yeah, there we go, and we have a review. Oh, they're claiming there's no touch, maybe. Please review. Right.
right, Akshay Desai says no review, rather no touch point on the right cover. Ryan, I just thought that there was a strong toe touch. Oh, that is a toe touch. And you know what? It is not the raider who's done the toe touch. It's the defender who's got a toe touch on the raider. Either of which, the point will go to the raider as well. See, look at where Dev Gurjar's legs are. It looks like as if Dev Gurjar has gone ahead and done a toe touch on the raider. And with what basis was the defender saying that there's no point there? That's what I'm trying to figure out right now. Yeah, that's correct. I agree to that. You know, because it was not a touch point by the raider. I completely agree with Dev Gurjar. But Dev Gurjar has gone ahead and done a toe touch. That who's going to see? That is actually the responsibility of Rambir Singh, the TV umpire. But yeah, it's a very, very gutsy review nevertheless. And one review per match. They shouldn't have gone in. Unsuccessful! And Harshit Sharma is now crying with a big towel in his hands. He's supporting the Aravalli Arrows today. He's rooting for them to win. And Harshit, I'm sorry, my friend. No review for your team now. Yeah, there we go. They lost the review early on. The question is, will they lose the game? As the prediction, we can see two of us here supporting Nilgiri Knights in the com box, and Harshit there rooting for the Aravalli Arrows, as Brajpal is one man who can possibly make Harshit's prediction come true, because he's often taken the onus on himself and performed for the team whenever they needed him the most. Right. Yeah, and he starts off also well. Bonus point. That's good. You know what? I'm not able to find Harshit at all in the entire arena. He's in the Chamundi Vihar Indoor Stadium. He is not around. Because, you know why? Just a few kilometers from the Chamundi Vihar Indoor Stadium, we have the Chamundi Hills, where he's gone to probably pray. As there's another kick on Rajendra Bakar by Marimuthu Selvam. 1 point, Nilgiri Knights. This is number 2 out. As the Nilgiri Knights get one more point. As all of our viewers, you just heard Naveen right now. Harshit is missing. Right. So please do go on to our Instagram page and start using the hashtag where is Harshit, where is Harshit. And that will get us some traction as Jaswant Yadav steps in for the next raid. A huge shout out here for Ryan, and I'm going to put the shout out to Aparna. Of course, she handles our digital platform very, very nicely. Very, chirpy, very nice, very friendly, warm girl, Aparna. Of course, go for it, Aparna. You can hire Ryan to be your, partner in sharing a lot of things on the digital platform. I never got even a sniff of what we're trying to say. You're trying to promote some digital marketing, Ryan. That's nice. I mean, it's often the fun aspect, and today's young generation responds to that. As Sundara Vishwakannan is gotten a running and touch successfully, and that's a third point for the Nilgiri Knights. Very good work, running and touch on Prem Bhadu. Prem Bhadu, he was very good against the Kaziranga Rhinos in that left corner, not against the Nilgiri Knights. He is a cover defender. He has to understand left cover is his real strength. And he has to probably go back to that. Yeah, because there was no Rajendra Bakar, Prem Bhadu was standing. But now Brijpal Singh, has he got few points? Few more, no, hands, legs, everything taken care of. Dangling hands, dangling legs. And I think the raider... 17. All right, Jay Kumar wants to have a conversation with his fellow referees. Brijpal saying he's crossed the midline very easily. And you know what, Ryan? This is the importance of reviews. This is the major importance of review. If this not is in the favor of the Aravalli Arrows, they'll be kicking themselves for taking that review unnecessarily. Let's look at the replay. Yes, and we can... Yeah. And let's go for it as the conversation is still on. Rider shape, 1 point. Aravalli Arrows. This is number 17 now. Okay, Raider save 1 point. That means Brijpal has gone ahead and touched the midline. Where is the touch? Oh, right, that's an anti-cross. Oh. That's an anti-cross that's happened. Very, very good decision. Wonderful. Hats off to the on-mat referees, Jay Kumar and everybody getting along together. We never ever would have even seen that in the first action. Marimuthu Selvam, he went ahead and anti-crossed. Right?
Just Yeah, I unbelievable. mean, we're getting to see it. We're getting to see it all in this match. Dev Gurjar earlier on, the defender doing the toe touch, and now we see a defender crossing the line. So, yes, we do have an interesting game up ahead. That's what we can reckon from the proceedings so far. As Brajpal comes in, he got the bonus point earlier. Question is, will he get a touch point here and inflict pressure on the Nilgiri Knights? The bonus is on for him, and he will not get the bonus, nor will he get a point, because the point will be given to the Nilgiri Knights. Nilgiri Knights. Okay, and what was he complaining about? What was he complaining about? Jersey number 12. There. Okay, just number 12. He will get the green card. Jersey number 12. He, Foul play. Green card. my God. Velavan Muruganandan. Right. Of course, might be unintentional, might be not what he really wanted to go for it. The tackle was gone, and of course, there was a footing, there was a step that was being missed by Brijpal Singh. Ryan, did you notice? He was trying to go for the dubki, there was no chain, and then he was caught in no man's land, and then he was starting to complain of something. Oh yes, rightly pointed out. It was that one moment where he had a plan, but the moment he realized he could not execute that properly, he completely just gave it off. And I think he was a bit frustrated with the way the defender there used his arm to stop him there, even after he knew that he was not going to get back. However, it happens in sport, and Jaswant Yadav here coming in. 4-2 is the score. 9 minutes is what's remaining, and the Nilgiri Knights here will look to take a big difference as we have a do-or-die raid. This is not what the captain actually would have loved. The dash comes in. Was it a strong one? Yes, it was a strong one, says Jaykumar, the referee. Ankit Jat right away goes towards the midriff and dashes him off. Ryan, this is what I always keep saying. When the corner or the cover defender, when they go for the dash, attack the midriff. Look at that. Exactly on the waist. And that imbalances the raider completely. Yep, when you go for a dash, it's very important to ensure that the contact is made at the right position. The contact needs to be made rightly on a thigh hold, just like that. Very nicely executed. And one more point for the Nilgiri Knights, coming in the form of defense here, Naveen. Santosh Srinivasan, take a bow. Look at the way he actually foxed Jaswant Yadav. He was trying to show Jaswant that he is going back, but then suddenly he paused. And then the double thigh hold was so successful. Ryan, every time, even a raider or a defender, if they pause for that small split second, look at the wonders, look at that difference that it can bring on to. I think he's pushed him off. He's just pushed him off. Surya Selvam, Ankit Jat says there was a hand touch. Shape. 1 point. And Ankit Jat did not want to go back. He's sending off Dev Gurjar. How was that possible? Can we go back and see that again? Wait, what? Right. Dev Gurjar just knelt on the ground. Honestly, I have no clue what happened there. No. Naveen, did you reckon anything? I did. I'll tell you what. It should have been 2 points. Because there was a hand touch. And, Ankit Jat was being pushed to the lobby. And then when, Marimuthu Selvam was returning, Dev Gurjar got his hands on the shoes. If you can go back to that replay, it'd be really interesting to see. Because it should have been 2 points. Now watch this. There, the hand touch and then the touch on the legs as well. If there was no touch, what was he doing in the lobby? What was Ankit Jat doing in the lobby? Wonderful work from Deva and Ram, the combination of director and EVS operators. So if you say Ankit Jat has not got a touch, what was he doing in the lobby? And this is a lovely, lovely ankle hold. Ankit Jat staying inside for the super tackle with a little dicey decision of not going off. Ryan, very simple. In the previous raid, if Ankit Jat was not hand touched, he was stepping into the lobby first. Before there was a struggle against another defender. So, according to my books, Ankit Jat shouldn't have been there on the mat at all. Very well pointed out, Naveen, and very well will come in with an empty raid, paving way for the Nilgiri Knights, Sundara Vishwakannan, to come in for the next. The left raider, he can bring in some change, isn't it? Because it was much needed, because it was too many right raiders going across. And now this is a do-or-die raid. Now breathing all the pressure in the world. And it was very, very interesting to see how the entire defense was very good in the previous raids.
But now, can they maintain the same coordination? The C angle looks wonderful. Velavan Murugan and then did not go for the chain. He was ready for the ankle hold. Now Preet Singh should have actually recognized that one. Right out. Wonderful 1 ankle point, hold. Nilgiri. When the corner defender ran, if he's not in a chain, the Raiders should understand that the ankle hold is coming no time. And look at this. This is picture perfect as Velavan Muruganandan puts it out there. Wow, he put it out there and he put the Raider out there as well. Along with that beautifully executed ankle hold, and the super tackle is on for the Aravalli Arrows. They will look to replicate what they did in the previous time. We had a similar instance where they got the better of the Raider. The question is, can they get better of Surya Selvam? Surya Selvam here looking to take advantage of the situation. He has 8 seconds. He will go back. No touch point coming in there. Wow, superb. It is very nice that he came back empty-handed, and he also made sure that he maintained that decorum of keeping everybody on the mat. Right, as Prem Badu goes in for another empty raid. Timeout. There's a timeout. Let's listen to Karnan. சூர்யா இப்போ ரைட் கார்னரும் ரைட் கார்னர் செகண்ட் மனும் குத்துருக்கு ரெடியாக நிற்கிறாங்க. அவன் அதுக்கு தான் அவன் க்ளோஸ் கொடுத்து செக் வச்சு கூப்பிட்டு போகிறேன். கண்டிப்பாக குத்துவேன். அவனை கை வச்சு வரணும். சரியா? நீ சூர்யாவை போட்டான். டிஃபென்ஸ் ரைட் டிஃபென்ஸ் உழம்பு வேணாம். நீ ரைட்டில் ஆடுறான்ல, அவெல்லாம் அடித்தா வெளியில் போக மாட்டேன். அவனை செய்ய விடு. அவனை செய்ய விட்டா தான் மணிகண்டை அடிக்க முடியும். மணிகண்டை மட்டும் காப்பாற்று. போன சமயம் பார்த்துக்கிடுவேன். என்னடா? Nice words, very nice words. Karnan, for the first time, speaks about the Raiders first instead of the defense. Because in a do-or-die raid, super tackle situation, he said, Ankit Jat will come to you first. The right corner will attack onto you first. Go attack the right corner, he says. He's also gone inside the lobby. And then he is very, very confident of this. Yeah, they're not agreeing. Ankit is not agreeing. And no, Karnan, go for the review. If Surya is very confident, they have the review. They're going to go for it. Because it's a super tackle that will be given away. Karnan did not want to go for the review. Review umpire, Nilgiri night challenge, 1 touch point. Our decision, Raider out. Please review. It was a do-or-die raid, Ryan, and I feel there was a jersey touch. Surya Selvam was doubly sure about it. And if the Raider has not felt anything, he might not be so sure is what I feel, but has that right hand stretched so much to flutter the jersey? This is a better angle. Lovely zoom in angle as well. What do you think, Ryan? Honestly, it's very close. It's either touched the shoulder part of his jersey, because the Raider was claiming that it's touched the jersey, and it's got to be the shoulder part of the jersey. Otherwise, there's no touch point there, according to me. Might be tough. One of the toughest decisions of the day in this hashtag non-stop Yuva for Rambir Singh, the TV umpire, because this is a do-or-die raid, and that might be another super tackle point that has been given away for the Aravalli Arrows. Successful. Unsuccessful. Yeah. 2 points, Akshay Desai, because it was a super tackle. It is 2 points, yes. Prem Badu is right. Aravalli Arrows. Yeah, it's a 2-pointer one. Do-or-die raid. This will not go in any defender's book, but it will go as extra 2 points. The jersey flutter. He was so confident. He was so very confident on that occasion, Surya Selvam. And for the first time, Ryan, Aravalli Arrows are in the lead. And I can actually hear Harshit from somewhere. Yeah, well, the mountains he went to is probably echoing, so you can hear him as Rajpal comes in for the Aravalli Arrows. A 1 point lead for them, courtesy of the 2 points they got. So they've gotten 2 super tackles so far in this match. So the Aravalli Arrows gotten 4 points in the form of super tackles, and Nilgiri Knights are trailing now. And don't forget Harshit's prayers as well. Courtesy his prayers. He is also praying, and he's been in a very meditative mode. And this is a destructive mode from Sundar Vishwakandan. Running at touch is got Rajendra Bhakar once again. Nilgiri Knights. Jersey number 6 out. Just wow, that was a very nicely executed raid. Take a look at the defender after this, he just had no response there, and very well done. He went in so deep because you could see the way his hand made contact with the jersey there. It was so comfortably done, and that showed how well he executed it, as we have a do-or-die raid, and Prem Badu steps in for the Aravalli Arrows now.
My God, did they even think about this? Did they even actually spent a second thinking about this? Prem Badu, a defender, the captain, coming in for a do-or-die raid. I'm very sure he did not think about it, but still goes ahead. Has he got the point? The defense now actually realizes, oh, hang on, Prem Badu. Wait. Please, this is not what we want to see. That's fine. Velavan Muruganandan and everybody getting along together. I know it's a contact sport. The referees are here, the officials are here to go for the correct legal decision. It's a bit of a heated moment. Let's see what just happened. Manigandan went in. And did he cross? It looked like. It looked like he crossed. That's it. I was very clear. Prem Badu has got that point is what I said. And that's a jersey pull from the Raider. That's a jersey pull from the Raider is what we saw. So Prem Badu's got 2 points. No problem there. What is the decision by the officials now getting along together? He's probably very safe. That's for sure. And that is another piece of luck that's actually going into Prem Badu's kitty. Raider shape, 2 points. Yeah, very good. That's it. 66, 88 Fine, down. Prem Badu. We've got you. That's fine. Enough of, celebrating and asking the other defenders to get out of the mat, send off. Nah, that's fine. That's all fine. It's all very fair and play. Yellow card for Velavan Muruganandan. 1 technical point. My God, because he already got a green card and now because of an yellow card. Now, hang on. Where does number 12, Velavan, come in? No, let's go with the replay. Let's keep this replay on. No, come on, guys. It's okay, Naveen. We have the game moving on, and I'm sure the replay will be back as the Aravalli Arrows got 2 points over there. At 3 points, in fact, is what the lead have. And Nilgiri Knights have all of a sudden flustered so badly, they've not been able to score points. Aravalli Arrows have been scoring points in the form of twos because they got them in form of the super tackle and also in the previous trade as a substitution takes place for the Nilgiri Knights. Yeah, absolutely. As Yelumalai 70 now. in place of Marimuthu. Can we please go back to that replay and see, because it was a yellow card that was given. I did not know where did Velavan actually get involved. Where? Come on, Prem Badu. Come on. What did Velavan do? What did he? Ran. He just randomly blamed them. Exactly. Ran, if I have a slight bit of a vision problem, you also have seen the same footage, isn't it? Correct me if I'm wrong. Yes, what did Velavan Muruganandan do? I mean, he was just at the wrong place at the wrong time, because I think what the referee saw was the Raider pointing at him at the end, and right here, Surya Selvam finds nothing but the Aravalli Arrows defense, and it's going to be one more tackle out. Right out, 1 point Aravalli Arrows. And still Prem Badu is not happy with something. He's still complaining. Now what is Prem Badu doing? What is he doing? Pressing behind the neck. Who's going to look at that? Guys, we understand that this is a contact sport. I understand this is aggression. I understand you are aggressive. But respect the game. Respect the players. What was Prem Badu doing on that occasion? Pressing him from behind the neck? Was that okay? And he was just faking an aggression towards Velavan Muruganandan. Why? No, that's the reason. I'll tell you something. That's the reason. When you don't respect your players, the other players, you don't respect the game. And the game will not go back and respect you. Half time, change the code. That's the half time that's gone in. As there's a 4-point lead for the Nilgiri Knights. They were really good in the beginning, but then the Aravalli Arrows have come back and nullified that lead, that 4 points, the 3 points, and now they have got the 4-point lead. That is very good. 4 raid points and 4 tackle points. And of course, with that extra points that's going in, there's no all-out points, but that extra points, because they were running in with the do-or-die raid that ran in Surya Selvam into the lobby. That is a major, major setback, Ryan. Let's see what's going to happen as we slip into a short break and come back soon.
Welcome back, everybody. As the first half was very much filled with aggression, passion, energy, and of course a little bit of unwantedness on the kabaddi mat. Yeah, see, every time you just watch whatever happens in this high pointers. The Nilgiri Knights as Raiders, they're claiming those points with the kabaddi spirit on. And this was another complaint. And then Prem Badu went across. He was complaining. That was a green card that was being given away. And then instead of just going ahead and seeing it very correctly, the yellow card was also given away to Velavan Muruganandan. So nevertheless, everything going in terms of what the plan was accordingly to. So this was another big error for Surya Selvam. You know, do-or-die raid running into the lobby and giving away 2 extra points on that super tackle situation. Here. This was a jersey pull first. Who's going to talk about Prem Badu's jersey pull? What card should he be given off? And then he's pressing Surya Selvam behind the neck. What color card did Prem Badu should be getting? And nevertheless, a lot of conversations. As I'm Navin Shauri, alongside with me is Ryan. Ryan, I think now whatever Mr. Kannan has to do is getting a lot of raid points. Because they won the toss, they have the chance to raid first. Wonderful work. Rajendra Bhakar in no position for that frontal block. 2 points. Very, very good raids to begin with. Oh yes, the ideal way to start the second half. The way he escaped, the way he propelled himself to escape that. Wow. Just wow, very nicely done. You can see the aggression. The defender there clapping his arms. And a couple of points for Nilgiri Knights to reduce that 4-point lead down to 2 as Jaswant Yadav comes in looking for his first point. And you know what? I'm not actually going ahead and saying the referee's yellow card was wrong, but Velavan Muruganandan absolutely scintillating. 1 point. You plotted Nilgiri against Knights. him. You made sure he got the yellow card. Now after his suspension, he's back and that strong ankle hold. What is the plot now, Ran? Well, the plot is definitely a Nilgiri Knights comeback. They will go on to score a few points and Aravalli Arrows will come back and score a few points. The question is the last 5 minutes of the game. That's where the decision is going to be done. And that's what I feel the plot is of this game, Naveen. Yeah, now Sundar Vishwakandan, thank you so much to Prem Badu, he says. 1 point. And only aggression has never ever got any man on top of the world, my friend. It has to be filled with a lot of respect. It has to be filled with a lot of thinking. Hasty tackle from the captain. Aravalli Arrows coach. During the coach. Oh, this is tit for tat. Jay Kumar gives off a yellow card for Rajesh Gurjar. He can't be in the arena. 2 minutes, he has to sit outside the arena of the kabaddi mat. He cannot be coming in for any timeouts. He cannot be even telling anything as Elumalai goes off. And they've brought back Marimuthu Selvam. There you go, Rajesh Gurjar sitting outside the arena. Yes, and Nilgiri Knights have reclaimed the lead. And Navpreet Singh here will come and try to get his second point and also tie the game. Did he cross the midline there? Looks like he's crossed the midline. 1 point. And no, he's not. No. Raider out. Yeah, he's not crossed the midline. Because that strong, surprising attack from Surya Selvam. Look at that. Not even sniffing the midline. Forget touching it. Right. Wow, that's a strong ankle hold from a Raider. Surya Selvam, shocking and surprising. Now, this is the all-out the Nilgiri Knights actually wanted. The much needed all-out. And the lead is back now with the boys who actually been trying to come back in this match from a very long time. Just take a look at this. A total of about 7 or 9 points, if I'm not wrong, has been scored in less than 3 minutes. Nilgiri Knights were down by 4 and they've come to become 17. So they've scored 9 points across a matter of less than 3 minutes, Naveen. And you know what is more shocking than that, Ryan? Aravalli Arrows are stuck on 12. Their first half score was 12. That's it. Not even a single point yet. As Brijpal Singh has come back. And after he's been tackled out, he's not come back at all. He's not been revived at all. He's come in after the all out. And what? We are 4.5 minutes into the second half. And not even a single point being scored by Aravalli Arrows. And look at Nilgiri Knights. They were 8
to close the first half. And this is a marvelous recovery, marvelous comeback. Anti-block and turn wanted to happen. Now they are pressing the neck of the Raiders. Ankit Jat, that is fine with them. And I feel this is the essence of Kabaddi often, you know, the fights arise when these players, like see, you've gotten the tackle and after the tackle, that excess aggression that's shown, that's always where the fight starts. I've seen it happen even in the college level where these guys play. It's that moment when they just push the Raider off after getting that tackle, etc. That's where the problem starts, and that's where these players need to gain that maturity. And take a look at this combination. Very nicely executed, and Bridgeball is not having his day today. 1 point. Nilgiri Wow, Knights. just amazing again from Santosh Srinivasan, and Bridgeball Singh is not knowing what to do. And this is been the trademark of Santosh Srinivasan. He tries to go back. He actually gives a little bit of a hint to the Raider saying, listen, I'm going back. And when the Raider goes to attack, small pause and an ankle hold. That's it, a thigh hold. Wow, he's done that for the second occasion in this match. Very, very good skill. So anytime a Raider or a defender, if he's pausing for a small second, there is danger lurking, and a lovely toe touch by Marimuthu Selvam on Dev Gurjar right cover. He has to go back. Ryan, you know what? 1 point. I'm not against aggression. Jersey number Even I'm 7 an out. aggressive sportsman. I've been very, very aggressive on the ground. And, you know, my own teammates have sometimes hated me saying, come on, you're the captain, you need to be cool and all that. Because, see, you're playing for your life. It's not just about for your team. You're not just playing for, of course, for any, you know, franchise or anything. First, you're playing for your country. You're playing for yourself. You're playing for your life. I'm okay with the aggression. But you need to be very big-hearted in receiving the aggression from the opposition, isn't it? You show the aggression, which is okay, which is completely okay with me. Example, Prem Badu. When the aggression comes from the opposition, take it. Take it in your stride. Is that what is wrong? Yeah, that's a fair point. You give something, you should be ready to take it back as well. As Sundara Vishwa Kannan here looking to get a point. No, he will not, because they've inflicted the pressure right back on the Aravalli Arrows. And we should know this is not like the usual Yuva Kabaddi series where we have 20 minutes, we have 15 minutes. So the clock will strike down to 0 a lot faster, which means you can't let a team take a big lead. And that's what the Aravalli Arrows have to do now. They should ensure that the Nilgiri Knights don't get too far away. But the question is, can they do it? Can they do it against a side like Nilgiri Knights that's so good at holding a lead? I really doubt of what can that situation lead them into. Official timeout. I think 2 minutes of Rajesh Gurjar is over. Probably he can come back is what it will be given in as. No, he's not yet coming back. The penalty of 2 minutes for Rajesh Gurjar, I think, might be over, or still is going on. I don't see him. Yeah, he's gone. He's come back. Rajesh Gurjar has come back there. We can see him at the corner of the screen. And what is Rajendra Baka trying to explain his defenders and Raiders as well? Yeah, Rajesh Gurjar is back. Right, 2 minutes of suspension. You know why? Just to probably take a breather, sip a bit of water, cool your nerves down, cool your brains down, get into the strategy thinking. That's a good thing, isn't it? Yeah, definitely. And we've seen this in a lot of other sports as well. It's there in hockey, it's there in handball. I've been sent out for 2 minutes while playing handball as well. So it's often a good thing. Like you said, it cools the player down. It helps them put themselves in the surroundings, you know, so that they realize, you know, they're outside, they can calm down and get back and continue with the game. And that's exactly what's going to happen here. The game's going to continue with 8 minutes, 22 seconds remaining. The Nilgiri Knights resting on a 6-point lead. I understand. Ryan, you know what? I thought you were a very good basketball player which has a lot of aggression. Handball? Aggression? Why? It's such a nice and easy game. Why were you aggressive in a handball match? Well, if you realize, handball involves a lot of aggression because you're allowed to use your body and stop the player while they're charging at you or while they're charging at the goal. Right. So there is a lot of aggression that can come out in a sport like that, especially when you hold a player. As we have a do-or-die raid, courtesy of Jaswant Yadav, he will look to get his scoring going from this raid. But the Nilgiri Knights defense will look to get a point because the Aravalli Arrows have gotten just 1 point.
so far in the second half. It's looking tough for Jaswant Yadav because he's struggling all throughout. He's not able to get the touch point. He's not able to maintain his balance. Can he get through this time? Yes, he can. Jaswant Yadav getting his first point. He's asking for 2. Let's see what happens. No, only 1 point. 88 out. Whatever the Periyar Panthers today cry for, that has gone for them in their previous match. But now the Aravalli Arrows are, I think, just going ahead with a lot of crying. That's what is happening there. Why was that? Yeah, you claim for 2. If you get it, take it. That's fine. You know, you can't influence the decision. And that was only the right corner. Santosh Srinivasan who's going off. Yeah, there. Look at that. He touched both his legs, and I think that's why he was confused. Yeah, let's listen to the coach. ठीक है डिफेंस रोक के वो कैच मारनी है थर्ड है कैच मारनी है Okay. He says to Ankit Jat that this is a do or die raid, and Ankit Jat catch marni hai, but kab kahan, that they'll have to figure out themselves. Yeah, because now Marimuthu Selvam will not even go near Ankit Jat. Rajendra Bhakar and also Prem Badu will be in contention if he's running behind him. Very, very interesting and very important as well for Marimuthu Selvam. He needs to rush. He needs to go for it on that right cover, on that right corner. Time running away. 5 seconds, 4 seconds. And Ankit Jat should have just let it go. Get up. I can completely feel what Rajesh Gurjar is saying. Rider shape, 1 point, Nilgiri Knights. Jersey number 3 out. Ryan Rajesh just said, tackle karni hai, lekin kab kahan? Why did you do that? Rajendra Bhakar jumping over the defender, that was good. Because that just saved another point, but in a do or die race, giving away a point. Right. Rona mat. Huh? Someone's crying, really? I thought I was joking, saying the Aravalli Arrows are crying for every point. Rajesh Gurjar says, Rona mat. ये दोनों राइट वाले दोनों यार एक के बाप एक हैं वो रुकेगा तो वो दे दे सुने कोना रुकता कवर दे देता कवर रुकता कोना दे देता रोक के खिलाओ ना यार very true. ब्रिजपाल புசே கூடாது சூர்யா அப்புறம் வெளிய எடுத்து விட்டுருவேன் எத்தனை தப்பு செஞ்சு போறீங்க சாரின்றீங்க சாரி சொன்னா பாயிண்ட் வந்துருமா உங்க ரெண்டு பேத்தையும் சொல்றேன் ஒரு தடவை தான் சொல்ல முடியும் கண்ட்ரோலா நிக்கணும் ஓயாமலாம் சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் ஆட ரெடியா இருக்கேன் புரியுதாடா இந்த அஃபென்ஸ் ரொம்ப கண்ட்ரோலா அடிக்கணும் My God, that's very strong words from the coach. He says, Mathi utruven. Where aalanga tayara irukanga aadradhukku. That shows the bench is ready. And very good by Deva as well, because he is also a Tamilian. He understood what Karnan said and he immediately cut to the bench. That's very, very good direction skills by our PCR director Deva. So what Karnan said was, if you're not playing well, I'll substitute you off. And today Brijpal Singh definitely needs somebody else for his support. Santosh Srinivasan and Velavan Muruganandan. Both the corners have been deadly against all the Raiders today. Indeed, and one thing I've noticed, whenever you go after a timeout or after a halftime situation, every time the Nilgiri Knights have listened to their coach and gone in, it's always been executed the right way. So Karnan sir is definitely a strategist as the Nilgiri Knights here rest on a 7-point lead. They will happily take their time in every raid as 6 raid points for him already. He might keep the Super 10 in mind, but I'm sure the victory is what he has in mind because that's more important. And he will kill the clock and go back. Yeah, very much. And I'll tell you what, they are on 31 compared to Palani Tuskers' 35 on the points table. And if possible, if we can get that mini points table across on the corner, that'd be really nice for a comparison. Because if Nilgiri Knights win this match, they go on top of the points table. That is very nice to be there, always on the top. Marimuthu Selvam also probably will put in an empty raid. That's what the captain will be thinking. Yeah, because he's got that massive lead. He has time to correct his knee bandage. I think we have time to fire that mini points table at the corner of our screens whenever it's ready. It's interesting because Nilgiri Knights are fighting for that top slot always against the Palani Tuskers. Rightly said, and Aravalli Arrows here trying to get back into this game. I had said that the last 5 minutes is going to be where the decision is going to take place as we have the points table here, Naveen. Yeah, very much. See, if they get 5 points out of this match, Nilgiri Knights get 36. So that means they are going on top of the points table. And just recently, Ryan, just because of the previous match's victory,
Palani Tuskers went on top, and that is not going to be there for a long time. Right, that is what the game is all about here in the summer edition of the Yuva Kabaddi series. Do or die raid. Rajendra Bhakar wanting to go for a dash from the cover position. Does not target the midriff of the raider. And wonderful work. Really good work to go out there in a do or die raid. Get that point. See, no attack on the midriff. Oh yes, Rajendra Bhakar there. You could see him disappointed there, and we love this situation. Back-to-back do-or-die raids always makes the game interesting, and Jaswant Yadav has the onus to try and do what was done in the previous raid, that is get a point. This time, he's taken the defender out, but it will be 1 point each. Manigandan Sudalamani goes off with Jaswant. And Karnan is not happy. Karnan is really not happy with that. I understand why, because Manigandan Sudalamani was coming in with so much force behind him. There was a nice hand touch by Jaswant on that right in defender. And then Sudalamani had all the problems in the world. It's going off. So under 3 minutes. I think Nilgiri Knights have probably pocketed this. Again, I don't see Harshit here, Ryan. Again, I don't see him. He exactly came to the commentary box and inside the arena when Nilgiri Knights were leading. Now he's missing. Can we go back and put that hashtag once again? Find Harshit. Indeed, we don't have to be so harsh on Harshit. Naveen has. Am I? Timeout. No, I'm such a good boy. Am I harsh? No. Slight grin on my face. Harshit is back. லீடிங் நிற்கிறான் இப்படியே நம்ம தேர்ந்து ஆடுவோம் மெதுவாக உன்னை எதுக்கு அனுப்புன்னு சொன்னால் லெஃப்ட் காரணம் வந்தான்னு நிற்கிறேன் அந்த வேட்டி தொட வேண்டியதானே அப்புறம் சூரியனை பட்டு உன்னி அனுப்பியிருக்கு இல்லை அவனை அனுப்பிக்கலாம்ல சரி பரவாயில்ல இப்போ தேர்ந்து ஆடிக்கிடுவான் நீ अब वो उसको लेके जाना था टाइम कोई दिक्कत नहीं है जा टच करके आओ सुपर टैकल बनाना है इधर वो खड़ा होगा अंकित यार भाकर क्या करने लग रहा है यार Oh God. Rajesh Gurjar is not happy with Rajendra Bhakar. He's asking Prem Badu what is he doing? Come on. And you know what Karnan said? He said that left corner is ready to attack you. Try and not go there. Try and not go towards Prem Badu. That's what Karnan said, and exactly the same thing what Marimuthu Selvam is doing. He's not going to attack him. He's going towards the right corner. I love the way these lads listen to their coach. I love the way they completely agree to whatever the coach says, to the T. Yeah, and that shows why they are second in the points table and deemed to be table toppers at the end of this day, because they will go up, and now it's a do-or-die raid, which means Surya Selvam will have to go in for the point. Will it be a do-or-die raid, or will it be the super tackle for Aravalli Arrows? That's something they've gotten in a couple of instances, but they haven't been able to inflict such moments in the second half. And take a look at that, Surya doing it with authority there. 1 point, Nilgiri Knights. And you know what Karnan said? Prem Badu will come and attack you, but not Dev Gurjar. But when Dev Gurjar comes in, turn the pages away. That is what is a very, very good skill. If a cover defender is coming to dash you, if you can flip it around like a toy or a page of a book, you can escape. Now pressure on Navpreet Singh. Do or die raid. And the cover defense, hang on. Both the Manigandan, there's the Sulamani and the Nesamani. They will have to play a little more back. No! I was telling about the same thing. Manigandan Nesamani playing a high line defense. 2 points for Navpreet Singh. 66 out. Oh yes, 2 big points for him there. Take a look at that. First try the kick, and second time the dash not successful enough. And now Preet ensured he put his hand across at the right time. So that is like the 3rd or 4th instance in this game where we have back-to-back do-or-die raids, and that does up the intensity. And take a look at this, amping up the intensity. Could this be a couple of points for Sundara Mishra? It should be a couple of points. Oh wow, just take a look at this, Naveen. Ryan, we know in cricket something called wrong-footed bowling. What was this? This is wrong-footed action of what? Trying to be acrobatic for the cameras? No. You will not get any grip on the Raiders' leg with such things. Nilgiri Knights, please come here. I didn't understand what Navpreet Singh was trying to do. First of all, as a Raider, when he had got that wonderful kick on that strong left corner, Velavan Muruganandan, when he came for the ankle hold, he kicked it. He got a point. What was he trying to do in the tackle? As there's another substitution that's happened, Elumalai Murthy finds his place back once again. But today,
Brijpal Singh has been a big letdown for the Aravalli Arrows. And he still continues to be a letdown. Only one rate point, Ryan. Can you beat this? For Brijpal Singh, just one rate point for him. Oh, that just shows as to how reliant they are on him. Whenever Brijpal puts up good performances, Aravalli Arrows are always in a better position. And we can take a look at the score right now and know that they are in no good of a position, because 10 points is a big difference in the game of Kabaddi. And the 10 points will become 13 because 3 more points will be added to the account of Nilgiri Knights. And it's 30-13 right now. That's it. It's a sliding victory for the Nilgiri Knights. 2 all-outs inflicted. With all that was happening, and Ankit Jat in that last surrender raid, you saw his attitude and aggression as well. He was also not happy with something. And there is a line of substitutions that's happening. Kanaram Bana comes in. Rajendra Pakar taken out. Rajesh Gurjar not happy with him. And I think even there will be Praveen Kumar coming in place of Dev Gurjar. Yeah, that is what it is. Complete substitution, and even Karnan wants to give the bench the all-important practice on the mat. Please come. As Ajay comes in with a red headband on. Surya Selvam goes out. And Marimuthu Selvam has given his place for Kesavan Raja. Ryan, you are still running the last 35. Find Harshit, because Harshit said Aravalli Arrows will win this. Yeah, I was just going to check if the hashtag was trending, and I'm sure it was almost going to trend, but we found Harshit in between and he went off. So that was the deadlock breaking over there. And breaking is what's happened to the Aravalli Arrows, because they've scored just 5 points in the second half. It's 5 points to the Nilgiri Knights getting 23 to 5 in the second half. You cannot expect to perform well like that, can you, Naveen? That was a very good hand touch, and thankfully Prem Badu did not complain of saying the raider hit me hard. Oh, it's definitely going to hit them hard, because they've lost completely. But they will get 1 more point to reduce the deficit, and I think it should be 13 points at the end of this game, because the next raid I don't see points coming out of it unless it's a do-or-die raid. Yeah, with the headband on, it's nice to see Ajay Ananda Krishna showing some style statement. And I think it might be lucky as well, because there are few superstition practices for lucky. And yes, he has been lucky. Once again, Prem Badu gives away a point. 2 points for Ajay Ananda Krishna. I don't know if he is just having the hairband to cover his long locks, or it's a lucky sign. Ryan, what do you guess? Oh, well, I reckon it's a little bit of both. You know, you have the long hair, you want to put that to ensure it doesn't fall on your forehead. However, a big win for the Nilgiri Knights today by 15 points. They claim victory, and they also claim the top spot. Naveen? Yeah, big. It's a massive victory, Ryan. 33, and from where? 8 points only in the first half. So, I am not very good at mathematics, but I'm sure, Ryan, you are. 33 minus 8. That is 25 points in the second half. Can you believe this? 25 points taken away. 2 all-outs been inflicted. And Aravalli Arrows, they really lack that venom in their arrows today. Especially in the second half, that's what happened. As we take a look at the highlights, a lot of talking points in the second half, including a few all-outs, a couple of all-outs to be precise. There were no super tackles that came in for the Aravalli Arrows like it did for the Nilgiri Knights. Not many for the Aravalli Arrows, Naveen. And I'm really impressed with the both cover defense of the Aravalli Arrows. They've been really good. Sundar Vishwakandan, of course, for his 9 rate points, might get it all. But do not forget, Santosh Shivan on that right corner was very, very good there. He goes for the ankle holds. He goes for the double thigh holds. He runs behind, then pauses a little while, then comes very soon, very quickly to surprise the raider. And he's done it all. As 4 tackle points for him, he becomes the best defender. Much deserving. Much deserving. And look at that, 19 rate points in return with only 8. Brijpal Singh was completely outdone and dusted with those wonderful tackle points. Especially started off with, of course, Velavan Muruganandam. And that is how the Aravalli Arrows tried to go ahead and target him out. But nevertheless, Santosh Srinivasan also coming in with a lot of support. He also went in and blocked
all those right raiders. That's very good. Generally, a right corner defender does not get those right raiders attacked. But today, Santosh Srinivasan has done very nicely for his best defender title. Indeed, and the best raider of this game is Sundara Vishwakannan. We saw him put out a big performance today. 13 raids in total, 10 raid points and a good raid strike rate, 76%. That's way higher than his average, and he's definitely adding on to that. Marvelous, just marvelous. A team spirit that went on to just make a big comeback. First half, deficit of 4 points, and then coming into the second half, 25 points. That's because some wonderful scintillating action from that right corner defense of Santosh Srinivasan. Yeah, and no, Palani Tuskers are still on top. Ryan, you know why? Points per match. Watch that. Palani Tuskers have played one match lesser, and also the points per match has led the Palani Tuskers to be on top. Nilgiri Knights, even by getting all those points of this match, they cannot go on top of the points table. Now, did we even think about this? I was thinking Nilgiri Knights will go away with the points and reach the top of the points table. Never to be. Never ever to be. But the next match is at 8 p.m. That's coming up in just, I think, 12 minutes from here on in. Chambal Challengers versus the Kaziranga Rhinos. Two struggling teams. Chambal Challengers have lost 6 to 7 games in contention in consecutive formats. Kaziranga Rhinos have not won a single game yet. Ryan, you want to pick a side quickly here? I'm going to go with the Chambal Challengers. I want the Rhinos to win, but I'm going to go with the Chambal Challengers to win this game. You naughty fellow. Come on, I will go with the Kaziranga Rhinos. Let's see what's going to happen as we will slip into a very short break. And very short, I mean, within just 8 minutes, we will come back with the Chambal Challengers against the Kaziranga Rhinos. Two teams who are at the bottom of the points table as of now. I'm Navin Chaudhary signing off along with Ryan James. See you soon. Like what? In 9 minutes. नमस्कार, स्वागत आप सभी का मैच नंबर 57 जहां चंबल चैलेंजर्स के सामने काजीरंगा राइनोस की टीम टकराने वाली है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला, और हमें ये जरूर बताइएगा कि कैसा आप सभी को लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक एक्शन के अंदर युवा कबड्डी सीरीज नॉन स्टॉप एक्शन आपकी तरफ लाती हुई नजर आ रही है। मैच नंबर 57 स्ट्रेट टू योर वे। तो चलिए, समय हो चुका है दोनों ही टीम्स को मैट पे बुलाने का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंतजार आपसे और कराया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार।
नमस्कार, स्वागत है इस्तकबाल मैच नंबर 57 चंबल चैलेंजर्स के सामने काजीरंगा राइनोस युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन। और आज जिस अवतार के साथ मैचेस हुए निश्चित तौर पे आप सभी को देख के अच्छा लगा होगा। वो एक्साइटमेंट जिस तरीके से बिल्ड हुआ वो देख के सभी का दिन बन गया होगा। 5 बजे से मुकाबले शुरू हुए, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, लेकिन क्या काजीरंगा राइनोस की टीम इस एक्शन को उसी रफ्तार के साथ बिल्ड कर सकती है जैसे बाकी टीम्स ने किया है। चलिए, समय हो चुका है दोनों टीम्स को मैट पे बुलाने का, समय हो चुका है हर्षित के पास जाने का। ओवर टू हर्षित। आज के दिन का अंतिम चैलेंज आप सभी के समक्ष चंबल चैलेंजर्स चैलेंज प्रस्तुत करेंगे काजीरंगा राइनोस के विरुद्ध। क्या राइनोस का खेमा दर्शा पाएगा अपना बेहतरीन खेल या फिर पुनः चंबल चैलेंजर्स बढ़ेंगे बड़ी जीत की ओर? आइए इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं इस चमचमाती हुई कबड्डी मैच पर। लेट्स इनवाइट फर्स्ट द टीम ऑफ चैलेंजर्स। और इनकी मेजॉरिटी और साथ ही साथ परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर गया है। क्या उस ग्राफ को जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे अगेंस्ट देयर अपोनेंट? हियर वी आर इनवाइटिंग द शाइनिंग परफॉर्मर काजीरंगा राइनोस। दोनों टीम्स मैट के ऊपर आ चुकी है, यानी कि वो टकरार कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। चंबल चैलेंजर्स रोलर कोस्टर की राइड खेलती हुई ये टीम नजर जरूर आती है, लेकिन उनकी ओपोनेंट काजीरंगा राइनोस की टीम को जीत की तलाश लगातार पिछले कई लंबे समय से है। चंबल चैलेंजर्स के स्क्वाड पे निगाह डालते हैं। अजय, उनके साथ में आपको खेमचंद और संस्कार, ये वो 3 खिलाड़ी है जो रेडर का ट्रायो नजर आ रहा है, लेकिन इस ट्रायो में मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे उनके सबसे इंपॉर्टेंट रेडर दुर्गेश। चलिए बात कर लेते हैं दुर्गेश साहू की, जो फिलहाल राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े रहेंगे। लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका रेहान निभाने वाले हैं, तो वहीं कवर्स के ऊपर गौरव और लखन आप सभी को नजर आने वाले हैं। नवीन, एम गोपी, कपिल, अनिकेत, सुजीत, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब पे, लेकिन जब इनके कोच चाहे इनको मौका दिया जा सकता है। फिलहाल समय हो चुका है मेरे साथी कमेंटेटर को इंट्रोड्यूस करने का। स्वागत है रायन। Hello Ayush, and to introduce the starting 7 of the Rhinos from Kaziranga, we have in the middle Manson Singh alongside Ranjit Singh and hey there James. Right inside, the covers duties will be taken over by Nitish Ray and Vikram Nath. The corners we have Shubha Paul and Mokibur Rahman, the captain. Not to forget their substitutes Athoiba, Ilyas, Ankur, Samir Shah and Ikti Ahmed. अब काजीरंगा राइनोस की टीम की कोशिश ये रहनी होगी कि कितनी कम से कम वो गलतियां कर सकें, खुद में सुधार कितना कर सकें वो महत्वपूर्ण। टॉप 3 रेडर्स, गगन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल आपको नजर आने वाले, 112 पॉइंट निकालें, 11 मैचेस खेलें, तो 109 पॉइंट के साथ दुर्गेश कुमार, जो फिलहाल मुझे उस लिस्ट में नजर नहीं आए थे, वो 12 मैचेस खेलकर वहां पायदान पर मौजूद है। तो 79 पॉइंट निकालने वाले जय सूर्या तीसरे पायदान पर, गगन से बहुत पीछे। Oh yes, we can see a significant difference there between the second and third position, but that's not the matter here because the top 3 defenders are fighting it out. We can see Ankit Judd there, 37. Second, we have Lokesh Gosalia, the man himself, down by just 4, and just down by 2 it's Prem Bhadu. So an intense competition going on here, Ayush. लेकिन वो मैचेस का फासला है और टैकल के अंदर हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। रायन, कितने मैचेस आप खेलते हैं, कितने कैचेस आप लपकते हैं, लेकिन फिलहाल सिक्का हवा में उछला, रेफरी साहब ने कैच किया था। काजीरंगा राइनोस की टीम ने टॉस को जीता है, लेफ्ट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया। मुकाबले की पहली रेड चंबल चैलेंजर्स की टीम डालती हुई नजर आएगी और यही महत्वपूर्ण है, यही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत यदि आपको अच्छी मिल जाती है तो चीजें आपके पक्ष में जाती है। काजीरंगा राइनोस से महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहने वाला है चंबल चैलेंजर्स की टीम के लिए। दुर्गेश साहू के ऊपर निगाहें बनाएं। 10 मैचेस इन खिलाड़ी ने खेले हैं, 22 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। टैकल का स्ट्राइक रेट इनका 52 का है, लेकिन मान के चलिए कि उन खिलाड़ियों को ये पकड़ते हैं, उन रेडर्स के ऊपर में ये आंखें रखते हैं जिनको पकड़ना आसान नहीं रहता। रायन,
Yeah, it's often not easy to get a hold of the Raiders, and he was one of those kind of a Raider who is hard to get a hold of. 38 points across 9 matches, 37.03 is his raid strike rate. He will look to work on it, as Manson Singh is the player to watch out for the Rhinos. मैंशन सिंह, राइनोस की टीम से यदि किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है तो निश्चित तौर पे वही नाम है। चंबल चैलेंजर्स 13 मैचेस खेले, 5 मुकाबले इस टीम ने जीते हैं, 4 गंवाने पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा टाई इस एडिशन में किसी ने खेले तो चंबल चैलेंजर्स ने। विन परसेंट 40 से नीचे है, लेकिन इस टाई के स्कोर से आपको साफ पता चलता है, 4 मैचेस जो टाई खेले उससे साफ पता चलता है कि कितने क्लोज मैचेस खेलने के लिए जानी जाती है चंबल चैलेंजर्स की टीम। बहुत ज्यादा फासला अपने ओपोनेंट से होने नहीं देती। पिछले 5 मुकाबलों में 3 टाई थे, 1 जीता था, 1 मुकाबला गंवाना पड़ा था। रायन, Oh yes, so many ties, and the coach Pradeep Yadav will definitely pen down a strategy on his books to convert those ties to victories, because they are doing things right. They just need to make a couple more edits, a couple more amends, and things could go their way. Speaking of a team that things haven't gone their way, it's the Kaziranga Rhinos. No victory for them so far, but I'm sure it's a lot of learning. We heard their coach earlier on in the season where he thanked this opportunity, this platform, and that's what's the important factor. The Josh Bus Junoon, the talent meeting the opportunity. That's what the Yuva Kabaddi series is all about. कई सारे युवाओं को मौका मिला है और नॉर्थ ईस्ट से आई ये टीम इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। मेंशन ने तो किया है, लेकिन बानस जो टीम के कोच हैं उन्होंने शुरू से यही कहा है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि उसके चलते खिलाड़ियों को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दबाव भी आ जाता है जिसमें कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं, कुछ खिलाड़ी निकल जाते हैं। हमने देखा है मेंशन को अपनी टीम के लिए थोड़ा सा निकलते हुए। दूसरी तरफ चंबल चैलेंजर्स की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। कोच अपनी टीम को क्या कुछ ज्ञान की गुट्टी पढ़ा कर आए हैं वो पता चलेगा जब वो 30 मिनट का खेल इस मैट के ऊपर खेला जाएगा। चलिए, समय जो है वो हो चुका है काउंटडाउन का। देखते हैं दोनों टीम की तैयारी मैट के ऊपर कितना रंग लाती है। जोश, जज्बा, जुनून। बाहर जाके देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दिखेगा वो फुल मून। नहीं, वो सब जोक्स अपार्ट है। मैच शुरू हो चुका है। चंबल चैलेंजर्स के सामने काजीरंगा राइनोस की टीम है। मुकाबले की पहली रेड खेमचंद लगाते हुए नजर आएंगे, जो कि चंबल चैलेंजर्स के एक खिलाड़ी है। बैकिक लगाने की कोशिश की है लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को, अभी तक कोई संपर्क देखने को मिला नहीं है। दाएं से बाएं चहल कर भी कर रहे हैं। मुकीपुर, जज्बातों को काबू रखना होगा। हमने इस खिलाड़ी से गलतियां होती देखी है। बोनस चुराया, चंबल चैलेंजर्स का खाता खुला। Yes, he opened the scoring matters for the Chambal Challengers and of this game. And Manson Singh is the man to watch out for. Kaziranga Rhinos, the raider, often scoring points for his team. Can he start off on a good note? That's the question. He could possibly go for the bonus, but we can see the high-line defense there. But he can still score those points. He can still steal those points. He will not do it in this instance. But it's all right. He has plenty of time to get his points. चंबल चैलेंजर्स की टीम ने अब अजय को भेजा है। ये एक अच्छी रणनीति है। चंबल चैलेंजर्स चाहती है कि लगातार अपने खिलाड़ियों को रोटेट करते हुए नजर आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिले। इनका शिकार किया है लॉबी का इस्तेमाल कर अपनी टीम के लिए। अजय ने एक और पॉइंट निकाला। पहला बोनस, उसके बाद शुभा का शिकार। Oh yes, take a look at that. And this is what the Rhinos should actually try to avoid. Is to try avoiding an instance where they give away so many points in the very beginning. You know, they need to let the teams get it. It's all right as long as they steal points. As Bikram Nath gets bonus +1. A couple of points there to tie the game. बाहर लेके गए दुर्गेश साहू को, उनकी गलती को अपने इस्तेमाल में लाना, अपने पक्ष में कर जाना कभी भी आसान रहता नहीं है। तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। कुछ चर्चाएं चल रही है, क्या 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा जा सकता है। चंबल चैलेंजर्स की तरफ से लखन को बाहर भेजा जाएगा। भेजा गया है। सुपर रेड, 3 पॉइंट की रेड लगा दी काजीरंगा राइनोस के इस खिलाड़ी ने। Wow, a big moment early on in this match. Take a look at that. The ankle hold, not successful in any which way. And he stole that second touch point over there. Very nicely done.
and that's a good way to start. They got a super raid to get their scoring going, and they lead by 1 at the moment, Ayush. काजीरंगा राइनोस अद्भुत कार्य करती नजर आ रही है, लेकिन यही वो गलतियां हैं जिसके चलते ये टीम ज्यादा समय तक अपने ओपोनेंट के सामने टिक नहीं पाती। डाइविंग एंकल होल्ड करने की आवश्यकता नीतीश कुमार थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कार्य करके दिखाने की कोशिश जरूर की थी। एक अच्छा जंप मैं कहूंगा जिसके चलते ये पॉइंट आसानी से अपने नाम कर पाए। चंबल चैलेंजर्स ने स्कोर को बराबर कर लिया रायन। Yes, they're often known for doing that. They keep the score tied and they keep it the same way till the end of the match, and they will hope to go 1 up always when they play a game. And the Rhinos should take a positive note from that and take note to the fact that the Chambal challengers often only tie games, so the Rhinos can try to put in their best performance and put the pressure back on the Chambal challengers as we head into the रायन, मैंने क्रिकेट में सुना है भारतीय कई खिलाड़ी ऐसे कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आप जीते या ना जीते, लेकिन पाकिस्तान की टीम से वो क्रिकेट मैच मत हार जाइएगा। तो वैसे ही चंबल चैलेंजर्स के कोच आज ये कह रहे होंगे कि आपने जितने भी टाई खेले सब माफ है, काजीरंगा राइनोस से टाई मत खेल जाइएगा। Yes, and Shubha Paul steps in for the Kaziranga Rhinos. The score is tight so far. Rhinos trying to pave their way and mark their territory in this match, as Shubha Paul will not get a point, and I think their next raid will end up being a super raid, and Chambal challengers will now have the option to go and get a point and get the lead. अजय, जर्सी नंबर 12, रेड लगाने के लिए चंबल चैलेंजर्स अपने अलग अलग रेडर्स के ऊपर रिलाय कर रही है। ये बहुत अच्छी रणनीति है। चेन टैकल करने की कोशिश भी की जा सकती थी क्योंकि 4 खिलाड़ी चेन में थे, लेकिन अंदाजा ही नहीं लगा। उससे पहले चंबल चैलेंजर्स ने शिकार बनाया, विक्रम को बाहर किया। ये वही विक्रम है जिन्होंने सुपर रेड लगाने में सफलता हासिल की थी। 3 पॉइंट लगाए थे, कवर्स पे खड़े थे, रनिंग एंड टच का शिकार हुए, मैच से बाहर हुए। Yes, and they don't have Vikram to come here in this do or die raid situation, which means Menson will have to get a point for them, and he has 18 seconds. He cannot go back because Menson is denied the point. चंबल चैलेंजर्स। कबड्डी तक तो ठीक था रायन, लेकिन जैसे ही वो कुश्ती का खेल शुरू हुआ, मेंशन वहां मुकाबला हार गए। फ्रंटल ब्लॉक और उसके बाद रिप्ले में कंफर्म कीजिए, ताकत, शेयर ताकत दिखाने की जरूरत थी और वहां थोड़े से फीके पड़े। गौरव ने बाजी मान ली, बैक होल्ड भी सही समय पर लखन का आया, उसी के चलते चंबल चैलेंजर्स एक और अंक लाया। And Chambal challengers looking confident now, looking strong to go get those points, especially the way they force the Rhinos into that super raid situation. That's what they're doing. They are taking command of this game as they get one more point in the form of a raid point. जेम्स बाहर जाएंगे, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। जब उनको मौका मिलता है रेड करने की कोशिश भी करते हैं। बॉडी को पूरा बेंड किया था, लेकिन शायद थोड़ा और पीछे जाया जा सकता था। बहरहाल अब फर्क नहीं पड़ता, चंबल चैलेंजर्स ने पॉइंट निकाल लिया है। काजीरंगा राइनोस धीरे धीरे पीछे होती भी नजर आ रही है। शुभा पॉल की ये रेड है, लेकिन वो डैश आएगा चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर्स का। सही समय पर चेन तोड़ना, ये रणनीति यदि आपको सीखनी है तो आज के इस मुकाबले में एटलीस्ट चंबल चैलेंजर्स से सीखिए। Yes, taking initiative in terms of getting that point, and the super tackle is on, which means the Rhinos can try and get 2 points if they successfully stop Kim Chand from getting a point here. The question is, will Kim Chand look at this as an opportunity? He will look at it as an opportunity and easily get the touch point there. 1 more point, Chambal challengers march on to 8. 1 point, Chambal challengers, number 8 out. वो रहमान बिल्कुल भी नहीं थे और उनका कॉन्फिडेंस बड़ा कम नजर आया। रायन, एक क्षण के लिए ऐसा लगा जरूर जैसे एज इफ ही इज गोइंग टू कैच अ बटरफ्लाई एंड द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ऑन, नॉट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू Yes, and the onus is now on in Iranjit Singh to save his team from a potential all-out, which would be very expensive because it would give 3 points to the Chambal challengers. Will it be 3 points? Iranjit tried to jump and get his way through, but all he found is Chambal challengers defense, and the first all-out has been inflicted in this match. Kaziranga Rhinos. काजीरंगा राइनोस की टीम का सफाया हुआ है। कॉर्नर ने बहुत अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की है। गौरव, उनके साथ में लखन, ये जो कवर्स के खिलाड़ी जिस तरीके से धावा बोलते हुए नजर आए हैं आज के इस मुकाबले में,
वो अद्भुत रहे दृश्य। कॉम्बिनेशन टैकल करने के लिए जानी जाती है ये टीम और आज वैसे ही टैकल्स करके दिखाए हैं। एक बड़ा फासला डबल डिजिट्स पे पहुंच चुकी है चंबल चैलेंजर्स की टीम। आज हमारा भाई की रेड है, रेड को एंजॉय कीजिए रायन। Ajay here, we often see a raider named Ajay coming in. You're often going to support him only because he has the better half. But this time, Ajay will get caught. And a very good tackle coming in. However, Ajay got the bonus. But the Rhinos made the tackle and that's the highlight of that moment, Arshit. Red. Let it out. 1 point. Chambal Challengers. Red. Nine-point lead, and Ajay Maravi will try to increase it. It will become a double-digit lead right now, and the Rhinos are just leaking points at the moment, Number 6 out. giving points away to the Chambal Challengers. 2 more points there, making it an 11-point lead, and this is not what the Rhinos are looking to do, Ayush. पिछली बार रणजीत ने जिस तरीके से वो होल्ड करने की कोशिश की थी उसमें सफलता मिली, तो शायद थोड़े हाई ऑन कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने ये गलती कर दी। हाथ में आई जरूर थी लेकिन सपोर्ट उनको मिला नहीं और उसी के चलते पॉइंट गंवाना पड़ा। मेंशन चहलकर्मी कर रहे हैं चंबल चैलेंजर्स के इस हाई ऑन कैंप में, इस हाई ऑन डिफेंस में बहुत ज्यादा एडवांस खेल रही है। बोनस लाइन तो छोड़िए, बॉक लाइन के आसपास भी मेंशन सिंह को मंडराने नहीं दे रहे चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर्स। आखिरकार एम्प्टी हैंडेड वापस जाना होगा। Yes, and this is what the Chambal Challengers often seem to be doing against the Rhinos. They are forcing them into that pressure situation of a do-or-die raid, and we often see the Rhinos raiders falter there. And Kemchand here is a raider who doesn't falter because he's been getting points consistently throughout this match, and that's another point for them. Number 8 out. अपना चौथा पॉइंट निकाला है खेमचंद ने और मुखिबुर की ये दूसरी गलती है। किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर कर खुद के सर के ऊपर से हाथ निकालना चाह रहे थे। मुखिबुर एक अजीब सा स्टेप था, एंकल होल्ड करना चाह रहे थे। हमेशा डाइव लगाने के लिए जाते हैं रायन। मुझे समझ में नहीं आता कि कोच क्या ये बातचीत नहीं करते होंगे कि यदि आपको वो डाइव ही लगानी है तो या तो पोजीशन चेंज कर लीजिए, कॉर्नर खेलना है तो एंकल होल्ड के लिए जाइए। ओहो, एक क्षण के लिए लगा जरूर था वहां से रेहान ने अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला है, लेकिन फिर रेडर ने इंश्योर किया कि मिड लाइन के पार उनका हाथ गया। रेहान के चेहरे के ऊपर मुस्कान जरूर है। कुछ चर्चाएं की जाएगी रायन। Yes, the raider there, Mr. Shubha Paul getting the point, and take a look at that. The hands were across the line and definitely a point there. 1 point. Rehan will be Kaziranga confused Rhinos. and 1 point has been given to the Rhinos. Number 7 out. दुर्गेश भी कंटेंशन में आए जरूर थे लेकिन सही समय पे वो समझ गए कि यहाँ उनकी दाल गलनी नहीं है, तो उसी के चलते उन्होंने अपने मोमेंटम को रोक लिया, हाथ को सही समय पे पीछे खींच लिया। वरना गलती होती हुई देखी हमने आज के इस मुकाबले में दुर्गेश से भी। अजय 16-5 का स्कोर, 11 अंकों की लीड चंबल चैलेंजर्स के पास। यदि उसके अंदर एक और का इजाफा करते हैं तो खुद के जर्सी नंबर को मैच कर लेंगे इन टोटल। रनिंग एंड टच करना चाह रहे थे लेकिन शायद वो टच पूरी तरीके से संपन्न हुआ नहीं। यदि होता तो लॉबी का इस्तेमाल करने में अजय हिचकिचाते नजर नहीं आते। 5 का डिफेंस बोनस बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है। इलियास बाहर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब अगली बार सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। Yes, as a substitution happens, it's good to see Ajay not rushing in. When he got into a frenzy of scoring points, of getting those successful raids, usually you go in to get one more point. But he used his composure and came back without getting a point. As a substitution takes place, James paves way for Ilyas Khan, and Ilyas Khan steps in for the raid, Ayush. थोड़ा सा कम समझ में आया मुझे कि बॉक लाइन को इतने सद के पार करने का मतलब क्या कोई पॉइंट निकालने का इंटेंशन इलियास का था नहीं। हालांकि अब वो स्ट्रगल में जाने का बन बनाता सा नजर आ रहे हैं। बॉक लाइन के पार करने के बाद उन्होंने बोनस चुराने की भी कोशिश की, जो प्रयास असफल रहा। एम्प्टी हैंडेड अपने कैंप में वापस आ गए। चंबल चैलेंजर्स लगातार अपने रेडर्स को शफल करती नजर आ रही है रायन। इस बार खेमचंद को भेजा है। Yes, Kemchand in with 3.5 minutes and he crawls his way through. Very nicely done from Kemchand, and that is definitely the highlight of this match so far, Ayush. Timeout. Kaziranga Rhinos. फ्रंटल ब्लॉक आया था, डुबकी लगाने की कोशिश की, सही समय पर डूबते हुए बाहर आ गए
और इलियास उनको कहा कि चलिए आप सब्स्टिट्यूट होकर आए, वापस बेंच पे बैठिए। उसको धकेले, ठीक है, दुबकी लगा के आ जा, वो अकेले आएगा, चेन नहीं मारेगा, ठीक है, ओके। ओए कवर इतना खास है नहीं उन लोगों का, दुबकी लगा के आ जा, ठीक है। नीतीश वहाँ रोकी के रोकने के लिए वहाँ डिफेंड आना भी डर ओके। रायन, आपने सुना कोच ने कहा कवर इतना खास है नहीं। जनाब गौरव ने 3 पॉइंट निकाले हैं, इनफैक्ट वो कवर की पोजीशन के ऊपर खेलते हैं। रेहान शेख को 1 पॉइंट मिला है, वो कवर की पोजीशन के ऊपर खेलते हुए आपको नजर आते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज भी करके दिखाते हैं। तो देखना यह है कि क्या कवर के खिलाड़ियों को छका सकते हैं काजीरंगा राइनोज के रेडर। कवर से सतर्क रहने को कहा, कॉर्नर ने अटैक बिल्ड कर दिया, बच के जाइए यहां से। Yes, a very nicely executed tackle there as Bikram once again found the defenders. His only positive has been that super raid that he's gotten. But just a minute there, did the defender's foot get into the lobby before he initiated contact with the raider? That could be a speculative moment. However, the Chambal challengers gets one more point and they head towards the direction of another all-out possibly. Yes, they are going towards that all-out. A back kick being executed towards Mention Singh, one of the finest raider for Kaziranga Rhinos. Shubha Paul, इन्होंने भी पॉइंट अपनी टीम के लिए एक निकाला जरूर है। और पिछली रेड में एक क्षण के लिए मुझे लगा कि कवर के खिलाड़ी की जगह कॉर्नर ने अटैक किया, नहीं कवर ने ही जवाब दिया था और वही खिलाड़ी था गौरव, लेकिन उनका शिकार करके उनको मैच से बाहर किया है। ये एक बहुत बड़ी मछली फंसाई है, डिफेंडर्स की वॉल को तोड़ के दिखाया है। शायद चंबल चैलेंजर्स के मैनेजर भी ये जानते हैं, टो टच से शिकार किया। Oh yes, Shubha Paul, the raider there, saving his team in that instance, you know, from a potential all-out, reviving an important man, and they have the super tackle on right now. Can they get it? Can they get it? Oh yes, this might be a super tackle. It is likely to be a super tackle. It will be a super tackle. The Kaziranga Rhinos getting a couple of points in this instance. क्या ये वही काजीरंगा राइनोस की टीम है जो मुकाबले की शुरुआत में आई थी? पिछले 2 मिनट इनके पक्ष में जाते हुए जिस तरीके से नजर आए हैं, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि ये टीम कुछ वीक मोमेंट्स खेलती हुई नजर आ रही है। सुपर टैकल में ना सिर्फ 2 पॉइंट अपने नाम किए हैं, एक रिवाइवल भी इनको मिलेगा। और शुभा, यही वो खिलाड़ी है नारायण जिन्होंने पूरी की पूरी दास्तां बदल दी। Yes, Shubha Paul, the raider, coming in for the Kaziranga Rhinos, scoring at a very important situation that eventually led to that super tackle where they got a couple of points. He will not get a raid point here. However, he's changed the course of the game, and as we head into the last 1 minute, the Chambal challengers have 11-point lead. 11 अंकों का फासला जो लगभग 5 मिनट पहले मुकम्मल कर लिया था चंबल चैलेंजर्स की टीम ने, काजीरंगा राइनोस की टीम ने जैसे तैसे करके उस फासले को बढ़ने दिया नहीं है। लेकिन अजय, इन्होंने 7 पॉइंट निकाले हैं, 19 पॉइंट में से 7 पॉइंट यदि रेड करके किसी खिलाड़ी ने निकाले तो वह अजय हैं। सपोर्ट इनको अच्छा दिखाते हुए आज के इस मुकाबले में खेमचंद भी नजर आए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, चीजें बदलती भी नजर आएंगी। Indeed, and the super tackle earlier on for the Kaziranga Rhinos was their 8th super tackle, so that is one positive for them to take back, and they can possibly work on how their defense can eventually pave out their entire strategy, as Shubha Paul here has been the key factor for them in this match, especially in terms of saving them from that all-out. The next raid will be a do-or-die raid, and that's what the Chambal Challengers raider did here, forcing the do-or-die raid. Over to you, Ayush. Half time, change the code. किस्मत देखिए रहे हैं, जब किस्मत हो मायूस तो क्या करेगा आयुष। मौका ही नहीं मिला डू और डाई का लुत्फ उठाने का, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद जरूर मिलेगा। चंबल चैलेंजर्स 19 के ऊपर है, 8 के ऊपर काजीरंगा राइनोस की टीम है। 15 मिनट का खेल खेला जा चुका है, वो फासला है 11 अंकों का चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में है। कारण यह है कि उनके रेडर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। 12 पॉइंट रेड करते हुए निकाले चंबल चैलेंजर्स की टीम ने, जिसमें 7 का योगदान था अजय का, तो खेमचंद को मिले 5 अंक। 5 अंक इन टोटल टैकल करके निकाले हैं। गौरव ने 4 शिकार बनाए हैं। काजीरंगा राइनोस ने 5 पॉइंट रेड करते हुए निकाले हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 टैकल पॉइंट, डिफेंसिव पॉइंट भी इस टीम को मिले हैं। एक बार काजीरंगा राइनोस की टीम ऑल आउट हुई, 2 अंक चंबल चैलेंजर्स ने एंजॉय किए। लेकिन अब हम और आप एंजॉय करते नजर आएंगे सेकंड हाफ, उसके लिए जाइएगा कहीं मत, बने रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत इस्तकबाल काजीरंगा राइनोस के सामने चंबल चैलेंजर्स की टीम है। पहले हाफ का खेल घटित हो चुका है। उन 15 मिनट के अंदर शेयर डोमिनेंस दिखाई है चंबल चैलेंजर्स की टीम ने, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी काजीरंगा राइनोस की भी कि उन्होंने अपने खेल में इंप्रूवमेंट दिखाया है। पहले के मैचेस जैसे खेलती हुई वो टीम आपको नजर आती थी, उन दृश्यों में थोड़े से परिवर्तन आज उन्होंने किए हैं। हालांकि डिफेंस जिस तरीके का खेल रहा है, विशेषकर गौरव नामक ये खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है अपनी टीम चंबल चैलेंजर्स के लिए, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन ओपोनेंट टीम के रणजीत ने भी एक शिकार किया था, एंकल होल्ड की, कॉम्बिनेशन टैकल की, साथ ही साथ उस टीम के लिए एक सुपर टैकल की सिचुएशन भी आई थी जिसको एग्जीक्यूट काजीरंगा राइनोस की टीम ने किया था। 5 के डिफेंस के अंदर पॉइंट निकालना आमतौर पे बहुत मुश्किल होता नहीं है, और मुखिपुर जब बार बार वो डाइविंग एफर्ट दिखाते हैं तो शायद चीजें और आसान बन जाती है। कमबैक दिखाने के प्रयास के अंदर काजीरंगा राइनोस के रेडर्स ने, शुभा पॉल ने वो एफर्ट्स दिखाए जरूर थे, लेकिन ज्यादा समय तक उनके लिए वो एफर्ट्स काम नहीं आए। फिर ये वो क्षण था जहां से ऑल आउट की सिचुएशन धीरे धीरे और पास आती हुई नजर आई थी। ये बड़ा शिकार था, गौरव मैच से बाहर था, सुपर टैकल की सिचुएशन जिसके चलते काजीरंगा राइनोस ने अपना 8वां सुपर टैकल किया। पेरियर पैंथर्स एकमात्र टीम है जिन्होंने 9 सुपर टैकल किए हैं, और वो काजीरंगा राइनोस से इस प्रतिस्पर्धा में एटलीस्ट आगे हैं। समय हो चुका है सेकंड हाफ के खेल को आगे बढ़ाने का। कम बॉक्स में मेरे साथ रायन। स्वागत है दोस्त एक बार फिर से। Hello once again, Ayush, and we are live from the Chamundi Vihar Stadium in Mysore. Welcome to all our viewers on fan code in this exciting encounter where the Kaziranga Rhinos have a Super 8 and they've also registered their 8th Super tackle so far. Shubha Paul, the Raider, once again steps in. He's been the key one getting points for them. And the Chambal challengers have looked strong and they will look to close this game out, and they would not want to give Kaziranga Rhinos any sort of hope. Ayush. एक सेकंड के लिए आई ब्लिंक हुई जरूर थी, समझ गए होंगे रायन आप, लेकिन अजय उन्होंने अपनी आईज को कभी ब्लिंक होने नहीं दिया। चंबल चैलेंजर्स के लिए लगातार वो स्ट्रैटेजीज के ऊपर पूरी परिपक्वता के साथ खेलता हुआ खिलाड़ी नजर आ रहा है। हालांकि 4 का डिफेंस जो कबड्डी के खेल में सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, उसमें इतना आसान होता नहीं है पॉइंट निकालना। शायद उसी के कारण एम्प्टी हैंडेड वापस आए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ रायन, मुखिपुर रेड करने के लिए आए हैं। Rightly said, Mukhipur is coming in for the raid, the captain. And as you earlier said, the 4 defense is often one of the most difficult situations in Kabaddi. It often confuses the raider. However, Mukhipur would be even more confused because he often doesn't step in for the raid. But I've noticed this one thing with the Rhinos coach. He often sends all of his players in for a raid. So we can't be too surprised if that happens, Ayush. आज संस्कार रेड लगाने के लिए इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ बॉक का इस्तेमाल किया, वापस चले गए। डू और डाई की सिचुएशन, शुभा पॉल को भेजा गया है। 5 का डिफेंस, बोनस एक्टिवेट नहीं है। ये बहुत क्रूशियल सिचुएशन रहने वाली है शुभा पॉल के लिए। हालांकि इस मुकाबले के अंदर उन्होंने ऑलरेडी 2 पॉइंट निकाले, लेकिन डबल एंकल होल्ड का यहाँ शिकार बन जाएंगे चंबल चैलेंजर्स के लेफ्ट कॉर्नर रिहान शेख ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी टीम के लिए पॉइंट लाके शुभा पॉल को बाहर का रास्ता दिखाया। Oh, just take a look at that. The moment Shubha turned to try and even get to the midline, he saw another Chambal challenger blocking him there. Ajay comes in. It's a do-or-die raid, which means the Rhinos can possibly get 2 points if they get the super tackle successfully. Ajay here will do the do-or-die raid deed, gets the point, and the Rhinos are inching to another or possibly here, Ayush. सबसे ज्यादा गलतियां यदि काजीरंगा राइनोस के कैंप में खिलाड़ी करता है तो मुझे लगता है कि वो मुखिपुर है। चाहे वो डिफेंस के अंदर हो या फिर वो अपने कप्तानी में खिलाड़ियों को चेंज करना हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी वीकनेस के साथ में आप चीजों के एक ही गलती बार बार रायन यदि आप कर देना तो फिर वो गलती नहीं, वो गुनाह कंसिडर किया जाता है। Oh well, that's fair. That's actually a fair thing to say in this regard, because you expect a team to eventually work on those certain aspects, and that's what we want from the Kaziranga Rhinos in this edition. And right now it's just 2 defenders against the Chambal challengers who look very strong and very confident going in for all these raids. Will it be a super tackle? Oh no, it's not even close to a super tackle, because that's another touch point for the challenge. Number 6 out. अब बाहर गए रंजीत, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट निकाले थे। बैंड होने की भी कोशिश की, खुद को डक करना चाहा, लेकिन एंड लाइन, वो साइड लाइन दोनों के करीब थे, उससे पीछे हटने का कोई मौका था ही नहीं। नितेश राय जो कि एक रेडर है, पांव लड़खड़ा गया, या तो घुटने में या एंकल में कोई चोट है। तारीफ करूंगा मैं चंबल चैलेंजर्स के खिलाड़ियों की कि उन्होंने वैसा धावा बोला नहीं था, लेकिन गौरव अपने हाई फाई से ज्यादा समय तक दूर रह नहीं सकते। वो हाई फाई उनको जोर जोर से पुकार रहा था।
आइए गौरव, वो फासले को कम कीजिए। काजीरंगा राइनोस का दूसरा ऑल आउट। Yeah, there we go. Earlier on, he rolled his ankle, and I'm sure that does hurt a lot. It's very painful. However, he held his ground, and it eventually led to the all-out, the second all-out of this game. Rhinos looking to enter the double digits in terms of points, and the Chambal challengers have a big lead at the moment. 17 points. That's the lead for them. Rhinos will just look to reduce that right now, Ayush. सब्स्टिट्यूशन काजीरंगा राइनोस की टीम कर रही है, लेकिन वो एंकल हल्की सी ट्विस्ट हुई थी। इक्ति अहमद को अंदर बुलाया गया, नितेश राय को बाहर भेजा गया चोट के चलते। यहाँ फ्रंटल ब्लॉक आया, टर्न ट्विस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, 2 पॉइंट। चंबल चैलेंजर होल्ड ऑन, बोनस भी मिला है। अनदर सुपर रेट फॉर चंबल चैलेंजर्स। दे विल मार्च अप टू 25 पॉइंट्स नाउ। Up 25 plus 3, 28 and a 20-point lead right now with that. Take a look at this. This initiative, the third instance, the third point given there, that was unnecessary. However, that's what's been the story of the Rhinos often, you know, giving points just like that. And right now, Melson Singh, he needs to score points just like that. And he will look to do that in this instant. Trying the bonus there, that's a smart thing to do, Manson. Go for the bonus points, go for the free points that's available for you, and then try and get the touch point. He did not get the bonus in that instance, and the score will remain the same. यदि आप मेंशन सिंह को देखें तो उन्होंने अपने टोटल जितने भी रेड पॉइंट निकाले हैं ज्यादातर बोनस के चलते आए हैं, लेकिन ये गलतियां करती आई है काजीरंगा राइनोस की टीम। सोलो टैकल करना चाह रहे थे, एंकल होल्ड करने की कोशिश करना चाह रहे थे। वो खिलाड़ी जिनको सब्स्टिट्यूट करके आप लेकर आते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाते हैं, और यदि ऐसी गलतियां वहां आपको देखने को मिले तो दृश्य अच्छे नहीं है। अतोइबा सिंह को बाहर जाना पड़ेगा। रायन, जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, क्या कभी कोई भी खेल खेलते हुए, मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से बास्केटबॉल, आपको भी एंकल ट्विस्ट हुआ, या फिर व्हाट इज द बिगेस्ट ऑफ द इंजरी व्हिच यू हैव गॉन थ्रू? Oh man, the biggest of injuries. I mean, there's so many. I don't know which one to classify as the biggest. But yes, often the MCL tear is the most recent one I got. It was a grade 1. It was not the bad ones where you require a surgery. But prior to that, yes, I've broken my arm also. So the disappointing factor is just that, you know, you're going to have to sit out for at least 6 to 8 weeks, sometimes 2 months. So that's the bad part of any injury. So all injuries have just like that. And just like that, an injury here for the Rhinos is what's taken place, because they've stayed at 8 points for quite some time, Ayush. Yes, they have. और उसका कारण है रेडर्स लगातार पॉइंट अपने टीम के लिए लेते हुए नजर आ रहे हैं। डू और डाई की सिचुएशन काजीरंगा राइनोस के लिए आ चुकी है। डिफेंस हाउस पैक है, बोनस से काम चल जाएगा मेंशन सिंह का, लेकिन क्या वो बोनस निकालने देगी? चंबल चैलेंजर्स की टीम निकालने की कोशिश की है। गौरव वहां पर मौजूद, फिर फ्रंटल ब्लॉक, कॉम्बिनेशन टैकल। गौरव और उनके साथी खिलाड़ी लखन की ये जोड़ी कहर बरपा रही है, लगातार चंबल चैलेंजर्स के लिए पॉइंट ला रही है। Oh yes, the challengers have this game very much in their pockets, and there's no way they're gonna possibly even consider a tie in this instance, because the Rhinos are just not able to find a way to score points, let alone come back into this match. And can he do this? Will this be the super tackle? Will they tie Periyar Panthers? Can he hold his grip properly as we see the t-shirt onto the head of the raider? He's still trying to escape. This is a game of kabaddi. It doesn't stop. Can he crawl through? Can he crawl through? 5 seconds. 4, 3. Oh man, this is the raid of the season for me, Ayush. All out, Kaziranga Rhinos. What was Shobha doing? शोभा कर क्या रहे थे? उनको कुछ समय तक तो समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली बॉडी का कौन सा पार्ट पकड़ना है, और उसके बाद जब तक समझ आता तब तक बड़ी देर कर दी। तारीफ करनी पड़ेगी अजय की, स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक जारी थी। पहले ऐसा लगा जरूर कि वो टी शर्ट थोड़ा सा होल्ड हो सकता है, वो कंसर्न हो सकता है। दोनों ही खिलाड़ियों ने, शुभा ने अजय का, अजय ने शुभा का टी शर्ट पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद एंकल होल्ड के लिए गए, लेकिन ध्यान रखिए जनाब, एक एंकल तो पकड़ी जा चुकी है, दूसरी एंकल के ऊपर फोकस करिए। कई सारी गलतियां, स्ट्रगल, अपने आप को, बॉडी को मल्टीपल जर्क्स के साथ में आखिरकार अजय ने अपनी टीम के लिए वो पॉइंट हासिल किए, ऑल आउट करार दिया काजीरंगा राइनोस को, और साथ ही साथ शायद वो ग्रीन कार्ड भी मिला है जर्सी पुलिंग के लिए। Yeah, and then we get to listen to the coaches now. आराम से चलो, ज्यादा ट्राई मत कर, चोट वोट लग जाएगा, ठीक है? रेड पे निकल, ठीक है, आराम से चलो। सुजीत तू भी जा रेड में, धीरे सेकंड बचा के।
कल टीम से तू बस के खेलना टच मत शांत हम का ठीक है कौन है उनको उठा हां ठीक है ये उनको उठा दी मोटो पे करना का करता था सुपर जगह उठा दियो हां सुपर जगह उठा दियो अपन दी साइड लो ठीक है ठीक है घर तो पड़िबो पॉइंट कर ठीक है हो ठीक है तब बहुत से कवर खेल लेबी कौन है ओके वो वाले ओके तो बार तू खेल दोनों खेल लेना ठीक है टच मत खाना आराम से मैं तो बहुत से कवर खेल लेबी अब है ना रेंज ही है वैसे चंबल चैलेंजर्स के कोच ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का फायदा उठाते हुए अपने खिलाड़ी सुजीत को कहा है कि सुजीत सब्स्टिट्यूट करके आपको बुलाया गया है, आप भी रेड लगाने के लिए जाइए, लुफ्त उठाइए। मेंशन सिंह गए हैं, पॉइंट लेकर आएंगे। 1 पॉइंट काजीरंगा राइनोस नंबर 13 आउट। या getting points in form of a raid there. Yes, Ayush. And I'm still thinking of that previous raid prior to that timeout, the strategic timeout. It's still in my head where Shubha did not support, and at the end of the raid, it looked like Shubha was getting hold of Vikram, who was his own defender there. And that's just still on my head. And I'm sure it'll be on the head of the Raiders. Oh, did he cross? Did he cross? Oh, it looks like he crossed. 1 point. Oh, Raider out. 1 point for the Rhinos there, Ayush. चंबल चैलेंजर्स के कोच इस तरीके से खुश हो रहे हैं एज इफ कि उनका प्लान यही था कि नवीन रेड करने के लिए जाएगा तो पकड़ा जाएगा, और फिर उनको वो मजा आ रहा है। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखती बनती थी। जोक्स अपार्ट, लेकिन जो एफर्ट काजीरंगा राइनोस की टीम ने दिखाए हैं, शायद कम से कम 4 खिलाड़ी उनको चाहिए हर एक रेडर को रोकने के लिए रायन, लेकिन सुपर टैकल तो फिर भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। An interesting fact there. They have a lot of super tackles. Menson here getting into the game later on. And this is back-to-back successful raids for Menson here, Ayush. आज समझ नहीं आया कि दुर्गेश को एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये खिलाड़ी कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर कहर डालते हुए नजर आते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार तो ये बेस्ट डिफेंडर का खिताब भी जीत चुके हैं, लेकिन आज के इस मुकाबले में तो बेहद साधारण सा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फासला है 24 अंकों का है, पक्ष में चंबल चैलेंजर्स के 25 का हो जाएगा। इरनजीत का हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, और यदि आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स के लिए जानते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए चीजें आपके पक्ष में नहीं जाती। Yeah, and we can see a grin on the manager's face there. Once again, the Chambal challengers coach and manager often very animated throughout, and they're quite expressive. Yes, we get a glimpse of them once again. He still hasn't removed the grin from his face, and I still have a grin on my face because that same raid is in my head, the 4.1. And your Menson Singh, this is a hat trick of successful raids, and he is getting in on the game. देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेंशन ने पहले राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर वो रनिंग एंड टच मारा, फिर कवर के खिलाड़ी आए, डैश करने के उन्होंने एफर्ट्स दिखाए। मेंशन का हाथ फिर मिड लाइन के पार हुआ है, लेकिन चर्चाएं एग्जैक्टली क्या की जा रही है? क्या मेंशन की बॉडी हाथ पार होने से पहले लॉबी से बाहर चली गई थी? Yep, that's probably the question, and we will have a verdict soon as umpires have come to a conclusion. Kaziranga Rhinos. And there we go, 1 point in favor of the Rhinos, and that's 3 raids consecutive coming in form of success for Menson here. That's a positive. He's woken up all of a sudden in the second half, Ayush. लेकिन रैन कॉर्नर के खिलाड़ी की जर्सी में हल्की सी थिरकन हुई थी। नॉट टू श्योर एग्जैक्टली हुआ क्या, हालांकि रेफरी ने 1 पॉइंट दिया था, यहाँ भी 1 पॉइंट मिलेगा। नंबर 33 आउट। गलती हुई है 31 से, और उसका खामियाजा काजीरंगा राइनोस को भुगतना पड़ेगा। कवर की पोजीशन पे थे, चेन को तोड़ा, अजीब सा एफर्ट करने की कोशिश थी, ना ही वो एग्जैक्टली डैश था। एक तरीके से लगा कि अजय को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने कैंप में जाने के लिए। Yep, and the substitution once again for the Rhinos as Ankur comes in, and Ilyas Khan here will look to get a point, or 25-point lead for the Chambal challengers. This game is all wrapped up, and wow, Ilyas Khan crawling his way after getting the touch point. The defender could not get a hold of him, and he just crawled his way to the midline, got a couple of points there. गौरव और खेमचंद, गौरव तो आमतौर पे तम करते हुए नजर आ ही रहे थे। काजीरंगा राइनोस के रेडर्स की लगातार मान के चलिए कि वो रीढ़ की हड्डी को तोड़ सा दिया है गौरव ने, जो जर्सी नंबर 9 में खेलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर थे। क्या ये 3 पॉइंटर रेड हो सकती है? इलियास का हाथ पार आया था, फिर मुझे लगता है तीसरा खिलाड़ी आया, बट चर्चाएं जरूर की जा रही है।
Yes, and we can see that fan behind there. That's the reaction of all of us waiting to see Kaziranga Rhinos come out and win. No disrespect intended to them, but yes, they're a team that's showing true Josh Jazba Junoon. We just want to see them put a 2 little more of points. effort and come out and Kaziranga win. Rhinos. And Number 9 good and effort 10 like out. this raid as they get 2 more points. टाइम आउट खेमचंद और गौरव दो ही खिलाड़ी बाहर गए क्योंकि दूसरे कॉर्नर के ऊपर से ये दो खिलाड़ी सबसे पहले कांटेक्ट में आए। तीसरा खिलाड़ी जब कांटेक्ट में आता डाइव मारी तब तक इलियास मिडलाइन को पार कर चुके थे। मार लेंगे, इलियास मार के लेके आएगा वहाँ से। इलियास लेके आएगा ना, 3 ही बचा, एक बोनस, এটা बोनस জিতে কোন, এটা बोनस জিতে हमको, देखो ना बोनस ইন পয়েন্ট ডিফারেন্স হয়েছে, এটা बोनस জিতে ইলিয়াস পয়েন্ট লৈ নিব। ইলিয়াস অ্যাটাক করনা, তুই জানা, ঠিক আছে? ইলিয়াস রখাব নয়, ইলিয়াস লৈ পাক্কা লৈ নিব, ঠিক আছে? লাগিলে এটা बोनस জিতে দিবা, হ্যাঁ? रेड चंबल चैलेंजर्स की टीम की रेड करने की बारी आई है। अजय जिन्होंने 14 पॉइंट निकाले हैं, सुपर 10 आज के इस मुकाबले में कंप्लीट करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, उनके ऊपर ये दारोमदार है। लेकिन काजीरंगा राइनोस जिस तरीके का खेल आज मेंशन सिंह ने पिछले कुछ मिनटों में दिखाया है, सराहना करनी पड़ेगी। जब जब वो रेड करने के लिए गए तब तब वो अपनी टीम के लिए पॉइंट्स बैक टू बैक निकाल करके लाए। लेकिन फिलहाल डिफेंस की बारी है, डाइविंग एंकल होल्ड आया है, पॉइंट देकर जाएगा अजय को, पॉइंट देकर जाएगा चंबल चैलेंजर्स को। चंबल चैलेंजर्स नंबर 9 आउट। Yes, and this is a rather soft finish to an electrifying day that we've had so far with a lot of intense moments. And right now, the Chambal challengers are cruising their way, and the Rhinos should just avoid a third potential all-out. Wow, take a look at this! A couple more points for Vikram Nath. A very good raid there. Number 15 and 4 out. दुर्गेश बाहर जा रहे हैं, साथ ही नवीन आपको नजर आ रहे हैं। रनिंग एंड टच मारा सबसे पहले उन्होंने नवीन के ऊपर, फिर दुर्गेश ने थाई होल्ड करने की कोशिश की, हाथ थोड़ा सा स्लिप हुआ, एंकल पे गया, लेकिन जो रफ्तार विक्रम ने पकड़ ली थी उनको रोकना आसान नहीं। जो खेल पहले हाफ के पहले 2 मिनट में विक्रम ने दिखाया था, सुपर रेड लगा के लगभग वैसा ही कारनामा करते हुए आखिरी के 2 मिनट में नजर आ रहे हैं रायन। Indeed. And Ajay here is coming in for the Chambal challengers. Oh, take a look. Did he get a point there? Oh no, that would have been a very good touch point if he got it there. However, he will head back without a point, and the game into the last 1.5 minutes. The Rhinos, can they get an all-out? I would be really happy if they can inflict an all-out here. Menson Singh, he's been getting points in the second half. He's been on fire. Can he get that fire to spread a little more and cause an all-out for the Chambal challengers? Menson Singh here gets the point. 1 point. Kaziranga Rhinos. Number 7 out. रेहान बाहर गए और मेंशन ने अपने टीम के लिए वो काम जो पिछले 5 मिनट से वो कर रहे हैं वो फिर करके दिखाया है। हालांकि ऑल आउट इन्फ्लिक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उस कगार के ऊपर लेकर आ गए चंबल चैलेंजर्स को। काजीरंगा राइनोस की टीम को चाहिए कि बहुत ज्यादा हाईलाइन डिफेंस ना कमाए। यदि अजय को आप यहाँ नहीं पकड़ पाते तो आपके पास फिर भी अगली रेड में मौका है। समय 40 सेकंड का बचा है, अगली रेड निश्चित तौर पे आएगी। यही तो गलती नहीं करनी थी रंजीत। नंबर 6 आउट। रेड पिछली बार भी सुपर टैकल थी, इस बार भी सुपर टैकल है। पिछली बार भी 2 खिलाड़ी थे जिनमें से एक को मेंशन सिंह ने बाहर किया था। यहाँ 2 खिलाड़ी है जिनमें से कम एक को बाहर करना इलियास खान को चाहिए और उन्होंने किया भी है, लेकिन फिर भी खतरे की घंटी वहां मौजूद है। चंबल चैलेंजर्स मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में अब ऑल आउट हो पाएगी। सुजीत जरूर बाहर गए, लेकिन अजय जो सबसे प्रोमिनेंट रेडर है वो अभी भी मैट पे है रायन। Yeah, and his coach also signaled, telling that, you know, the time is up, just go in, don't do anything unnecessary. And yes, the game is done, which means the Rhinos could not put in that all out. However, good effort by Menson, Bikram, and a lot of positives for them in this 18 points that they scored. And we get the double thumbs up from the team there. The Chambal challengers coming out strong, winning this game 40-18 against the Kaziranga Rhinos. और उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो अजय का जाएगा और उनके साथ साथ गौरव। जिस तरीके से उन्होंने वो 6 टैकल पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले थे, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। एक बड़ा फासला 22 अंकों के फासले से चंबल चैलेंजर्स की टीम ने ये मुकाबला अपने नाम किया है। काजीरंगा राइनोस के कोच चेहरे के ऊपर वो मुस्कान जरूर है, लेकिन वो जानते हैं कि वो एफर्ट्स अभी भी कम नजर आ रहे हैं। काजीरंगा राइनोस के लिए एक
टेंशन की चीज जो है रायन वो ये है कि इनका स्कोर में इंक्रीमेंट इतना ज्यादा हो नहीं रहा है, वही 18-20 के आसपास लड़खड़ा रही है इनकी गाड़ी। Definitely, as we take a look at the highlights of the second half, mainly the Kaziranga Rhinos also had a lot of good moments for them. However, the moments kept on coming for the Chambal challengers because they continued to score points throughout the game. But the Rhinos have a few positives to take away from this game, a few good moments, and that's what we love to see. Take a look at this. This was one of the interesting factors of this match, where he first put the shirt, then he goes and removes the shirt there off his head, and after that the Raider somehow got his way back. And here we got to see Menson getting in on the game as he got a lot of points coming in. Not to forget this very good raid once again, but once again it was Menson coming back for his team, showing us why he is a true talent and he is one who can come out strong in this game. Only thing is, can he do it for an entire 30-minute duration? That's what he needs to look at. Good positive moments, but let's see if the Rhinos can convert 2 or 5 minutes of brilliance into 30 minutes of brilliance and win a game here, Ayush. 40-18 के स्कोर के साथ चंबल चैलेंजर्स ने मुकाबला अपने नाम किया। रेड के अंदर 26 पॉइंट निकाले, 14 पॉइंट आज काजीरंगा राइनोस को भी मिले हैं। आखिरी के कुछ समय में उनके रेडर्स चेते थे और शायद उसी के चलते उनको वो पॉइंट्स मिलते हुए नजर आए। टैकल के अंदर फासला था जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा मैसिव भी नहीं था। सिर्फ 8 टैकल पॉइंट आज के मुकाबले में चंबल चैलेंजर्स ने निकाले, जिनमें से 6 तो उनके अकेले खिलाड़ी गौरव के नाम जाएंगे। ऑल आउट 3 बार किया काजीरंगा राइनोस को। एक क्षण ऐसा लगा था कि शायद चंबल चैलेंजर्स को भी ऑल आउट किया जा सकता है, पर रणजीत की गलती से सब पानी फिर गया। सुपर रेड दोनों टीम ने एक-एक लगाई है। सुपर टैकल काजीरंगा राइनोस ने करके दिखाया, लगातार ये करके दिखाती हुई नजर आती है ये टीम। अजय अपनी टीम के लिए 17 रेड पॉइंट आज के मुकाबले में निकाल के बेस्ट रेडर बनेंगे। 16 रेड इन टोटल लगाई थी, 17 रेड पॉइंट उनको मिले, एक सुपर रेड में भी वो इन्वॉल्व थे। स्ट्राइक रेट 106 का अद्भुत माना जाता है कबड्डी के उस खेल में, और वो भी तब जब आपके साथी खिलाड़ियों के ऊपर से दबाव कम करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर हो। Indeed, just 1 point separating his total score and the opposition, as Gaurav Verma was the best defender today. A total of 8 tackles, 6 tackle points, and a tackle success rate of 75%. No super tackle for him, but he still is the best defender of this match, as the Chambal challengers did manage to stop all the raiders of the Rhinos today. Take a look at the points table after this exciting day. Palani Tuskers holding on to the top position. Nilgiri Knights would have ideally gone on top, but the points per match is what granted the Palani Tuskers the first position. Chambal challengers in the third position even after this victory. Hampi Heroes fourth. Periyar Panthers, Aravalli Arrows, Sonics follow, and Chola Veerans and the Rhinos in the bottom with a point and no point there. So an interesting points table here. Ayush up to the 7th position. 7वें पायदान तक चीजें अभी भी बदल सकती है। याद रखिए टॉप 8 की टीम्स अगले राउंड में जाती हुई नजर आएगी। आज के दिन क्या क्या हुआ? हम्पी हीरोज सबसे पहले चोला विनर्स के सामने आई थी। हम्पी हीरोज ने 8 अंकों से वो मुकाबला अपने नाम किया। मैच नंबर 55 में एक्शन में थी पलनी टस्कर्स, उनके साथ पेवियर पैंथर्स की टीम टकराई थी। टस्कर्स ने 23 अंकों की बड़ी जीत पेवियर पैंथर्स के सामने हासिल की। नीलगिरी नाइट्स के सामने अरावली एरोज का सामना था। नीलगिरी नाइट्स ने मुकाबला 15 अंकों के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया। चंबल चैलेंजर्स बनाम काजीरंगा राइनोस, दिन का आखिरी मुकाबला 22 अंकों से चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में गया। तो सिर्फ एक मुकाबला था हम्पी हीरोज और चोला वीरंस का, जो लेस देन डबल डिजिट्स मार्जिन से एक टीम ने जीता। बाकी सारे मुकाबले हाई स्कोरिंग और हाई डिफरेंस वाले रहे हैं। उम्मीद की जाएगी कि कल का शेड्यूल नॉन स्टॉप युवा में ऐसा ही रहेगा। पेवियर पैंथर्स के सामने चोला वीरंस को आना है, दूसरे मुकाबले में पलनी टस्कर्स के सामने अरावली एरोज को टकराना है। मैच नंबर 60 होगा जहां एक्शन में काजीरंगा राइनोज होगी, सेंसोनिक्स से टकराती हुई टीम आपको नजर आएगी। आखिरी मुकाबला चंबल चैलेंजर्स एक्शन में होगी, पेवियर पैंथर्स के सामने वो टीम भिड़ती हुई नजर आएगी। 5 बजे से 8 बजे तक, इनफैक्ट शाम के 9 ही पकड़ के चलिए। इस टाइम तक आप अपनी सीट को बांध के रखिएगा, हाउस पैक रहेगा कल का भी दिन। अभी समय हो चुका है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। स्टे कनेक्टेड।
हेलो, व्हाट अ ब्रिलियंट डे वी हैव विटनेस्ड इन दिस नॉन-स्टॉप युवा। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस और इस युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन का आज का दिन निश्चित तौर पर बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही अनकैनी यानी कि अलौकिक रहा है। आइए शुरुआत करते हैं इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट हमारे सर्वप्रथम ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड का हम धन्यवाद करते हैं। फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत ही अलौकिक दिन के साथ साथ किस प्रकार के आज के मुकाबले रहे हैं, चारों मुकाबलों की तरफ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद है मिस्टर रामवीर भिदोरी सर, जिनके कंधों पर भी मजबूत दावेदारी थी आज एज अ टीवी एम्पायर इंटरनेशनल रेफरी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे सर। और सीधा चलते हैं, जो सबसे पहले मुकाबला आज के दिन रहा था वो हम्पी हीरोज बनाम चोला वीरेंस का था। हम्पी हीरोज सर्वाइवल 2 में उनसे जीत की आवश्यकता थी और यहां पर उन्होंने जीत प्राप्त की है। 40-32 से चोला वीरेंस को हराया। चोला वीरेंस ने पूरा किया प्रयास बट मुकाबला अपने पक्ष में नहीं कर पाई समाप्त। सीधा चलते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ। तो शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ जो रहे हम्पी हीरोज के द वेरी करिज्मेटिक शशांक बी, जिन्होंने प्राप्त किए 15 रेड पॉइंट। देखिएगा इनके प्रदर्शन को। And after that we have the award of best defender of the match। तो हम्पी हीरोज के कॉर्नर्स लग रहा था कि क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, बट इस खिलाड़ी ने बताया कि जी नहीं, ये हैं तो किस बात की चिंता। नरसिम्हा मूर्ति जिन्होंने प्राप्त किया 3 टैकल पॉइंट्स और इनके भी प्रदर्शन अब आपके समक्ष है। और अब समय है इस मुकाबले के कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। तो हम्पी हीरोज के एक और बार ग्लोरियस अंदाज में कुछ सुपर हिट्स यहां आप सभी को समक्ष नजर आया और क्या एस्केप रूट बनाया था इस खिलाड़ी ने, वो है गगन गौड़ा। इसकी वीडियो आप सभी को ब्रीफ में जरूर दिखाएंगे हम। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक। और आइए अब बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की जो खेला गया पलनी टस्कर्स बनाम पेरियार पैंथर्स। वो भी एक शानदार मुकाबला था बट पलनी टस्कर्स ने दर्शाया कि क्यों वो अनबीटेबल है और बहुत ही साथ साथ इनविंसिबल है। और कबड्डी कमाल अवार्ड आप सभी के इसका वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट शो में आप सभी के साथ साझा किया जाएगा और ज्यादा ब्रीफ में बात करते हुए। बट इस मैच के अवार्ड्स की तरफ चलते हैं जिसमें पलनी टस्कर्स ने जीत प्राप्त की। शुरुआती बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ जो थी पलनी टस्कर्स के जय सूर्या नागराजन, जिन्होंने प्राप्त किए 12 रेड पॉइंट्स। इनका परफॉर्मेंस अलौकिक और देखिएगा। Undoubtedly he is the backbone of Palani Tuskers और आज भी प्रदर्शन को उन्होंने लाजवाब रखा। अब समय है चलने का बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ जो रहेंगे पलनी टस्कर्स के बड़े ही सरप्राइजिंग और आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन जिन्होंने करा था वो है तमिलरसन, जिन्होंने बनाया आज शानदार शानदार हाई फाई। देखिएगा इनके पॉइंट्स। And after that we have the कबड्डी कमाल ऑफ द मैच जो जय सूर्या नागराजन के पक्ष में जाएगा, जिन्होंने लगाई शानदार 2 सुपर रेड्स। पलनी टस्कर्स के खिलाड़ी अथम मचा रहे हैं। तो चलिए इस मैच के प्रेजेंटेशन से इतना ही, बट आज के दिन के तीसरे मुकाबले की तरफ चलते हैं और फिर से आप सभी बताऊं कि कबड्डी कमाल अवार्ड के वीडियोस आप सभी को ब्रीफ में वार्तालाप करते हुए हम दिखाएंगे द पोस्ट शो। जुड़े रहिएगा तब तक हमारे लिए। बट अभी समय है आज के दिन के तीसरे मुकाबले के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ चलने का। जो मुकाबला खेला गया नीलगिरी नाइट्स बनाम अरावली एरोज। और नीलगिरी नाइट्स पहले हाफ में पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में क्या बाउंस बैक किया है, क्या ओवरकम किया और इस मुकाबले को जीता है 15 पॉइंट्स के मार्जिन से। अवार्ड की शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ। तो बड़ी सुंदर जिन्होंने रेड लगाई वो थे नीलगिरी नाइट्स के सुंदर विश्व कन्नन। आज भी सुपर 10 लाजवाब था इनका, देखिएगा।
तो आज रेडर्स के लिए बड़ा ही अलौकिक दिन रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने कर दिखलाया। बट अब समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की। तो नीलगिरी 9th के लिए हमेशा जो संतोषजनक प्रदर्शन करते हैं वो है एस संतोष श्रीनिवासन, जिन्होंने आज भी प्राप्त किए 4 टैकल पॉइंट्स। देखिएगा इनके रोबस्ट परफॉर्मेंस को। और चलते हैं सीधा कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ। तो अरावली एरोज के एक ऐसे खिलाड़ी के मुंह हमें हम सभी को नजर आए जिसने बहुत ही लाजवाब चेहरे पर हमारी मुस्कुराहट लाई, वो थे जसवंत यादव। इन्हें दिया जाएगा मूव ऑफ द मैच के चलते ये अवार्ड। तो हर एक मुकाबला बड़ा शानदार रहा था। आज के एक मुकाबले में आपको 4 सुपर 10 जब शुरुआत हुई, बट अंतिम मुकाबले में क्या हुआ आइए उसकी तरफ ले चलता हूं। चंबल चैलेंजर्स जहां पर भिड़ रही थी काजीरंगा राइनोस के विरुद्ध। चंबल चैलेंजर्स जरूर ड्राइविंग सीट पर थी, बट काजीरंगा ने भी दिखाया कि एक ग्राफ परफॉर्मेंस का धीरे धीरे ऊपर जाएगा। 40-18 से जरूर अपने नाम किया चंबल चैलेंजर्स ने मुकाबला, बट वो स्मार्क आप सभी को काजीरंगा में भी नजर आया है। सीधा चलते हैं बेस्ट रीडर ऑफ द मैच की तरफ, जो रहेंगे चंबल चैलेंजर्स के लिए अजय मारवी, जिन्होंने प्राप्त किए 17 पॉइंट्स और बने हैं खतरा विपक्षियों के लिए। और अब समय है डिफेंडर ऑफ द मैच का। तो चंबल चैलेंजर्स के लिए आज गौरवान्वित कर देने वाला क्षण था कि आज गौरव को खेलने का मौका मिला और उन्होंने बताया अपने कोच को कि ये भी हैं पूरी तरह से तैयार। 6 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए गौरव वर्मा ने। और अब समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का। सो द अवार्ड गोज टू फ्रॉम द टीम ऑफ चंबल चैलेंजर्स, ही इज अजय मारवी। फटाफट 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 हैशटैग नॉन स्टॉप युवा। क्या शानदार रहा आज का ये पहला दिन, नया एक्सपीरियंस आप सभी के लिए भी। बट हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार से थ्रिल्ड कबड्डी आप सभी तक लगातार पहुंचाया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, बट मिलेंगे आप सभी के साथ, भूलिएगा मत हमारे साथ जुड़ना इन द पोस्ट मैच शोज। अरे अभी चाहिए